additional supplies. It was India which helped fulfill their requirements. And in fact, even in the current context of the crisis in Europe, this Ukraine war, again India has very well tapped the opportunity. But this is what we have traveled journey so far, reaching a level which is quite impressive, quite enough, but not enough yet. Future, as we were discussing a few minutes back, that International Year of Millet that UN has declared on the initiative of India itself, massive level preparations are going on, and I'm sure that 2023, one thing which has not gone well with Indian exports has been the low value addition. In fact, low value added items have been exported, and that is where the developed countries get the advantage, even if they export little, but it is higher value, so their overall share and value of the exports goes up. So now I believe that movement towards from low value export, for example rice, if we calculate, rice is the largest exported commodity. I think some $9 billion have followed by aqua, and then probably meat, buffalo meat. In rice, if you look at, if we calculate the cost of water, that will be higher than the actual value of the rice exported. So which is the story of low value unprocessed products being exported. If the same quantity that India is exporting today, if value addition is done, then probably with the similar quantity, the value will be 3 times more. So I believe slowly that will move up in the value chain as far as the exports, unprocessed to processed part is concerned. Secondly, this International Year of Millets, India I think produces about 40-42% of the world's millet. So probably the largest beneficiary of the global demand arising out of the sensitization that happens millet as the healthy food, India will be the gainer. Most important initiative, one of the very important initiatives that I have been discussing and submitted the proposal also to the Honorable Minister, and is I think everybody need to take it up, is the current mood of the nation where the startups are the talk of the town, or the mood of the nation, that startup will show up the next level of economic growth. And the way last year 36 startups reached the prestige club of being unicorns. Unicorn means reaching $1 billion. 2-3 startups which are on the verge of becoming unicorns, and this year I'm sure they should become. And this year we are looking at some 55 new unicorns coming up from India. There must be about 5 or 6 from agriculture in that list of 55, though it is a small number, but it is a significant movement forward. At least 3 of them we have been quite closely being part of that. I am looking at the next phase of exports will be powered by these startups, and therefore with the agri export startups we can create, and the proposal of creating 1,000 agri export startups that we have submitted to the ministry, and I think someday the work on that has to begin. So both the startups are the highest priority of the current government, and also the agri exports. In fact, the first public statement of the Honorable Prime Minister in his second tenure was at the Niti Aayog, and that was about doubling agri exports. I think 9th of June he made that statement at Niti Aayog full sitting. Thereafter, the ecosystem that when chief executive of the country speaks about, the entire country is sensitized and rises to the occasion, and that has finally resulted into where we are today in a very happy situation. But sustaining that growth momentum will be a very big challenge. Mr. Bajaj may agree with me. The rise that we have seen, partly it has been rise of capitalizing on the crisis, which we should, every country must. But those kind of crises either will continue coming and helping us with bigger opportunities, that is a question mark. So on a normal market conditions, whether we will be able to sustain this growth rate or even maintaining what we have reached will be a challenge. Further growing, of course, will require a lot more innovative thinking and out-of-box thinking, and more preparedness on this count. And one of the very strong things could be that, of course, the new breed of entrepreneurs, because they will be looking at some smaller value, smaller more diverse export basket compared to what the traditional exporters, they look at the bigger
opportunities, bigger market sizes. But the small opportunity areas only the entrepreneurs can look at, where they to big exporters that may not appeal. So probably this new breed of entrepreneurs will have to power the export growth and help country maintain the sustain the momentum of very impressive growth that we have seen in the last couple of years in the export segment. Let me thank my team and colleague for putting together today's conference, and thank all the my co-panelists on the dais and the speakers that have joined us this morning, and all of you. Thank you very much. Lothra, former Agriculture Commissioner, Project Director, DKMIT, to kindly do the honours of saying a few words and addressing the August House present here today. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome. Here. Yes, it's a matter of great pleasure for me to be here with you on this occasion where we are organizing two events simultaneously. One is National Conference of Agriculture Exports and another one relates to India Agriculture Growth Summit 2022. The dignitaries available on the dais. Mr. Tarun, we have worked together, and Dr. Glory Savarupa, Director General MSME, and Khan Sahab, MG Khan Sahab, we have just heard him. The personality who is always behind such celebrations, such organizations, where we all sit together and discuss many issues. And the CEO, Mamtaji. Last month I remember when the news appeared in the newspapers related to that, yes, India has crossed agriculture export 50 billion US dollar. It was the first time that we achieved that target, and we crossed the 50 billion US dollar which we earned through export. It was a really great news for all of us. And it was highest ever mark, where it was 19.92% more growth was achieved in comparison to last year. Last year it was 41 point something. So 9 billion US dollar extra was earned. And I remember when I was Agriculture Commissioner, Horticulture Commissioner also, that charge I was holding at that time, and it was the year 2018 when it was in discussion that government has fixed very ambitious targets, 60 million ton that we need to achieve by the end of 2022. Very ambitious. And even we discussed, in-house discussion took place, 60 billion is really very ambitious, it will be difficult to achieve. But now, by the end of this March 2022, we have now touched 50, and we are hopeful that again in the year, by the time this year ends, this financial year, March 2023, I think definitely we will touch 60 billion, and the target whatsoever we have fixed will definitely achieve this. So here, the present crisis which is now happening related to this war-like situation, which is war, it's a war only, which has offered a great scope and opportunities for capturing this overseas markets to earn the foreign exchange, and also it has enabled many of our producers to earn higher prices for the farm produce. Wheat alone, you take example. So I am not asking and mentioning about other commodities, because other commodities were already traded much, but this wheat was not traded much. So now wheat has come into the picture. So last year I think it was only 2.2 million ton. Now we have reached to 7.8 million ton. So demand is there. Now India is fulfilling, and here
we have now emerged as a major supplier in the world market. Our production has increased. Government of India has started several mission programs in the Ministry of Agriculture Research, because Ministry of Agriculture has its mandate to increase the production and productivity. So our production level has reached to 314 million ton, as just recently 4 days back. Third estimates were released, 314 million ton. It's again a record production continuously from the last years. 5 years we are breaking the records of production. Similarly for horticulture also, 331 million ton is a record production which we have achieved. So Ministry of Agriculture has implemented several mission programs, either it's a National Food Security Mission program, or it's a mission for National Horticulture Mission, then Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, then some mission for use of machinery in the agriculture. So another part is policy support also, because policy support from government was there, and then Ministry of Commerce and Industry, they also introduced a policy related to this national export policy. So these all are the favorable, I should say, decisions, and it has really supported, and further production as well. Production has increased and even export has also increased. But here what we need, that concerted efforts are needed so that we can diversify our export, and new destinations are also required to be targeted, and strategy we need to make accordingly so that we can boost these high value and value added exports, including perishables also, because perishables were not getting much emphasis earlier, but now perishables are in picture. Many fruit crops and vegetable crops, spices, those are now being traded. So agriculture export is also now taking place from the unexplored areas. I remember in the month of October 2021 only, when horticulture cluster development program was implemented. Before that, Tarunji and we all discussed together, and we identified several pockets in the country, and some kind of mapping was done, and now production is now being targeted in those areas where we have a kind of approach, a plan which is implemented, and we are working together. So cluster approach has really yielded the good results, because if cluster approach is followed, then definitely we can implement all our interventions through the various schemes in those areas in a better way, and adoption level will also be more. And there are several examples. Varanasi, as it is the area for fresh vegetables and mango. Similarly, this banana, Anantapur, these are the new areas which are now emerged. So because of the new programs and schemes which were supported through APIDA, so they are now yielding the results, and the recent one is related to that part which they call this brand India. That was the major focus where APIDA focused on that part. And Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing, I must say, they were the nodal center. Ministry of Food Processing, MSME, and then Ministry of Agriculture, we all sat together, and one district, one product program was formulated, and then we identified several products, several areas, and accordingly production is now being pursued, and we have reached to the level that now people are asking for the black rice, red rice. So there are several commodities which are now in demand, but there are some issues related to pesticide, and then some kind of chemical residues. They were really identified as a chief cause of the concern for exports and others. Tricyclazole, then buprofezine, and ETO also came into the picture for spices as well as for sesame. So we discussed in depth. APIDA, I think they hold several discussions. We had a discussion meeting with the European Union also. We had discussed
and those issues were also resolved accordingly. But now holistic approach is needed on this part, and R&D particularly for the suitable varieties, and the Indian Council of Agriculture Research has been given this task, and they have identified several suitable varieties for the different communities. There are about 102 research institutions which are working in the different agroclimatic zones, and the varieties suiting to the particular regions, those have been identified, and the varieties suitable for exportable production, those have been involved, and further some more varieties are also required to be evolved. So it's in our mind, and we have already put into our system for putting more emphasis on new varieties for that purpose. Then it was also suggested by the PIDA that we need to now establish the good standard regime. So I think some good things have happened in that way, and here we are the part of this codex standards now are being pursued. Either it's for fresh fruits and vegetables, or it's for oil seeds, or it's for grains. So those standards have been made. We have our own standard. So we were following this global gap, but now India gap is also available with us. So some kind of benchmarking is in process. So once our India gap is benchmarked, so by global gap, then definitely this India gap will help us for good indigenous production as well as exportable production. So as I have mentioned that these product specific clusters in the different agroclimatic zones, they have been identified, and accordingly these good agriculture practices are required to be put into. And we also discussed about the millets. Millets again in because the year 2023 will be observed, and here an action plan has been formulated. Already core committee has done their job, and they have submitted the final report, and here 18 ministries have been involved into it. So India is going to take lead in guiding the world for observance of this International Year for Millets. Just during tea time we were discussing that nobody was knowing this quinoa. So now everybody knows. So after observance of International Year for Quinoa in the year 2012, so now it has got the importance and everybody knows. And I just mentioned quinoa is not new for us. So it is a bathua only. So bathua species which is seed type. Bathua species which we found growing in our fields. That's a leaf type. So quinoa is not a new to us, but simply the point and the manipulation is that yes, we need to identify the varieties which are good seed type. So now quinoa got the importance. Similarly, millets, they will also get the impetus in Africa and India. These are the two major growing belts, and I got the opportunity to present the first proposal from India side in the FAO Rome, FAO Council on 5th of October 2018, I still remember. So it took 2 years by the United Nations to declare this, and it was accepted in the year 2018 only, and 47 countries and many other unions, European Union, African Union, Russian Federation, they all supported India proposal for observance of International Year for Millets. So definitely it will give a kind of boost. So now the last point, just I would like to place that now India is on the move to prepare Vision 2047. So now we are preparing the Vision 2047 because India is going to now complete 100 years of independence, after independence. So where we will be after 100 years means we want to emerge as a global power. So accordingly this action plan has been made, and one of the action point is that how we can increase our export and how we can appear in the first top 5 of exporters in the world. So thank you so much. We will discuss in the further sessions. I must convey my thanks to the organizers, Mr. M.J. Khan and his team for inviting us. Now, ladies and gentlemen, moving ahead, I have the proud privilege in inviting our distinguished and eminent guest, Dr. Tarun Bajaj, Director of PIDA. Let's put our hands together to welcome Dr. S.K. Malhotra is a known figure in the field of agriculture. Dr. S. Glory Swarupa, Director General, National Institute of MSME.
डॉक्टर एम.जे. खान, कौन नहीं जानता उनको, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड ममता जैन जी, and all the panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen. 50 billion US dollars, $50 अचीव किया हम लोगों ने। होता है ना, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अगर एक माइलस्टोन तक पहुंच जाए तो खुशी होती है, पीछे मुड़कर देखते हैं कि अरे यहां तक पहुंच गए। आप खुश होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, झंडा लगाते हैं, शोर भी मचाते हैं, खुश होते हैं। वही खुशी हमें भी हो रही है, क्योंकि हमने दुनिया में ये कर दिखाया। 50 बिलियन US डॉलर्स। कहने वाले कहेंगे कि इतनी बड़ी हिंदुस्तान है, इतना बड़ा स्ट्रेंथ है, तो 50 बिलियन डॉलर क्या तोप चला दी आपने? तोप है भाई। हम 1.35 बिलियन लोगों का ध्यान रखने के बाद 50 बिलियन कर रहे हैं। एक पूरे कंटिनेंट का ध्यान रखने के बाद 50 बिलियन कर रहे हैं। 2.2% है हमारी दुनिया के ट्रेड में, तो तोप वाली बात तो है। अच्छा, अब यहां पहुंच गए तो किसी एक ने कर लिया? नहीं। आप चढ़ाई भी चढ़ते हैं तो कोई सोचे कि मैं चढ़ गया तो ठीक नहीं होगा, उसको शेरपा भी हेल्प करते हैं। मौसम की भी मदद होती है। मौसम खराब होगा तो कहां से चढ़ जाएगा? उसके पास ऑक्सीजन पूरी है तभी चढ़ पाया वो, और बहुत से फैक्टर चलते हैं तब वो वहां तक पहुंच पाया, और फिर कहता है कि मैं पहुंच गया। हम भी 50 बिलियन पहुंचे तो सब इन फैक्टर्स की मदद से पहुंचे। कोई बोला कि जी अब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, इस वजह से डिमांड आ गया और बढ़ गए, तो साहब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो फरवरी एंड से शुरू हुई। हम तो ग्रोथ पहले से ही लेकर चल रहे थे। हो सकता है उसका कुछ फर्क पड़ा होगा या आने वाले टाइम में पड़ेगा, ये कुछ नेगेटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें तो एक्सपोर्ट पर रोक भी लग गई। कुछ का कहना है कि कोविड से फर्क पड़ गया, तो मैं जैसे कह रहा हूँ ना, चढ़ते चढ़ते मौसम की भी मदद मिलती है। कुछ फर्क पड़ा, कुछ जनरल डिमांड बढ़ी, कुछ सबने मिलकर भी काम किया। और जब मैं कह रहा हूं सबने, तो सबने, किसानों ने, एक्सपोर्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, MSMEs ने, ISFA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने, सब ने मिलकर किया और हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ तक पहुंचने के लिए डिमांड हमें दुनिया में मिली। देयर वाज इंक्रीज इन डिमांड। यस, देयर वाज इंक्रीज इन डिमांड। नहीं होगी तो क्या बेचेंगे हम लोग? देयर वाज इंक्रीज इन डिमांड, एंड then at the same time we also ensured that despite the COVID and other situation, the supply chain is not affected. And for this we must compliment the efforts of the government in this regard. They ensured that the supply chain, because the supply chain was affected because of the lockdowns and other things, lockdown in our country, lockdown in importing countries, but government, with state governments, even with the local governments, we have a ex-DM of Jammu here, he knows it. They ensured that the supply chain is not affected. So supply chain was not affected. Our farmers played the critical role. And all these factors led to, APIDA did a massive promotion. Promotion physical were not possible, virtual were there. Embassies, let me tell you, our missions and embassies, they also played pivotal role in promoting our products. They really helped us. And state governments also came forward for ensuring that we achieve this $50 billion. अब पहुंच तो गए 50 बिलियन। डॉक्टर खान ने अपनी बात में कहा, और बिल्कुल सही कहा, वाजिब बात कही, कि भैया पहुंच तो गए, अब आगे मेंटेन करोगे,
और आगे निकलोगे या पीछे चले जाओगे। पीछे जाने के भी चांसेस हैं। 2013-14 में we achieved targets of 43-44 billion, which was the highest at that time. और पिछले 8 साल तक हम पूरा नहीं कर पाए, 7 साल तक वापिस ही आ गए। कई फैक्टर्स चले। अब we have reached to 50 billion US dollars. So same question comes. We have to maintain, we have to grow. पीछे नहीं आना। But there are challenges. The challenges which are coming are geopolitical reasons and other reasons, which is our own, because we have a first priority of 1.35 billion population. And you see, Dr. Suresh said that we increased wheat, and now we know wheat has been put on ban because we feel our own country's demands is of most priority, and it is obvious. पहले तो अपने लोगों को खिलाना है ना, बट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट किया अगर इस तरीके से बैन हुआ है, एक्सपोर्ट में हुआ, शुगर में कैप लगा दी गई है, पता नहीं आने वाले टाइम में कैसी सिचुएशन होगी, पर ये चैलेंज तो है, एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ने वाला चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास टीबीटीज का है, ट्रेड बैरियर्स। अब कई कंट्रीज जो हमारे बढ़ते हुए, ऐसा होता है ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई नहीं भी खुश होते हैं, तो हैं हमारे कंपटीटर्स में, तो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू पुट रिस्ट्रिक्शंस, और वो भी हमारे लिए चैलेंज है। मार्केट एक्सेस एंड एसपीएस एंड टीबीटी इश्यूज कुछ तो जेन्युइन है और बहुत ज्यादा जबरदस्ती के क्रिएट किए हुए, दे आर टीबीटीज अननेसेसरी क्रिएट किए हुए विद अच्छी इंटेंशन से नहीं, रोकने की इंटेंशन से, वो भी हमारे लिए चैलेंज है। हमें अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखना है, वो भी चैलेंज है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जबरदस्त बढ़ गई है, जबरदस्त लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, डोमेस्टिक कॉस्ट भी और इंटरनेशनली भी। जो कंसाइनमेंट दुबई $500 या $400 में मीट्रिक टन पे जाता था, वो अब 1500, 1400 इस पे जा रहा है। कितना फर्क पड़ गया। डोमेस्टिक आप देखिए, हमारी जो प्राइसेस ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ी हैं, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ गया। तो लॉजिस्टिक्स, दिस इज अनदर चैलेंज विच इज कमिंग अप। सो लाइक दिस देयर आर चैलेंजेस which are there, but despite the challenges, let me tell you, we are committed to grow. We are committed to proceed further. 50 बिलियन पे रुकना नहीं है, और 50 बिलियन से आगे जाना है, कम से कम 50 बिलियन तो मेंटेन रखना ही है। अब क्या करना है उसके लिए? फिर से सबको साथ चलना है, सारे फैक्टर्स को मिलके चलना है। The first and foremost thing is we have to ensure that the quality and traceability, which is demanded by most of the countries, which is need of the hour, we have to focus it. हमारी क्वालिटी है और ट्रेसेबिलिटी है, जो कि डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी, लड़ सकते हैं हम, चाहे कोई भी एंटी हमारे प्रोडक्ट का प्रोपेगेंडा कर ले। क्योंकि प्रोपेगेंडा किस पे बिना पे करेगा? वो इसी बिना पे तो करेगा, और तो उसके पास कोई वजह नहीं होगी ना, कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई चीज़ नुक्स निकाल के लाएगा। और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी ने खराब किया तो वो एक आदमी का नाम नहीं खराब होता, पूरे देश का नाम खराब होता। इंडिया इज बैड, इंडिया हैज सेंड रॉन्ग कंसाइनमेंट, एक आदमी ने कर दिया भाई, 500 में से एक ने कर दिया एक कंसाइनमेंट, उसका एक कंटेनर 22 टन का, उसमें चलो छोटी सी कोई नुक्स निकली, पता नहीं निकली भी कि नहीं निकली, अगर उसको निकल गया तो उसको लेके इंडिया को कर दिया, और जो 500 कंटेनर ठीक ठाक गए वो उसका कुछ नहीं। सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल। Fourth, most important is we have to ensure that the quality and traceability is maintained, and I think on that account no compromise has to be made. I think you all will agree with us. Equally important is that we have to continue to be very aggressive
and addressing market access and TBT issues. अब हम भी एक बहुत अच्छी मार्केट है दुनिया के लिए, उन्हें भी हमारे देश में माल बेचना है। हमारे सुरेश मल्होत्रा जी हमेशा नेगोशिएशंस में, इंटरनेशनल में हमेशा साथ रहते हैं और बहुत अच्छा नेगोशिएटर्स हैं, चाहे वो रोम जाएं चाहे कोडेक्स में जाएं, वेरी गुड नेगोशिएटर्स। भैया आपको भी माल बेचना है ना, तो हमारे माल को भी जगह दो, अननेसेसरी नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, किसी भी तरह से आप मार्केट एक्सेस ऑन मेरिट्स कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और जो आपको चलो प्रोटोकॉल चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आप माल को रोकिए नहीं। तो मार्केट एक्सेस एंड TBT इश्यूज वी हैव टू एड्रेस। अब नए प्रोडक्ट भी लाने पड़ेंगे, कमोडिटीज जा रही हैं। खान साहब ने भी कहा कि वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, अब वाकई ज़रूरत है, और उसकी दो वजह से ज़रूरत है। क्योंकि एक तो हम उसको अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम पे बेच पाएंगे, यहाँ की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट को होगा फ़ायदा, तो और हमारी वेस्टेज बचेगी। और सबसे अच्छी बात आप लोग सब जानते हैं कि वैल्यू एडिशन में हमारे पास जैसे 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी ए तो टेबल वैरायटी निकल गई, कैटेगरी बी भी टेबल वैरायटी निकल गई। सी का क्या करोगे? सी टेबल वैरायटी नहीं जाती, फेंक सकते नहीं क्योंकि एडिबल है, और जब उसका नुकसान हो गया तो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आता है। तो वो भी अगर यूज हो जाएगी, जो कि वैल्यू एडिशन के माध्यम से यूज हो जाएगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना अच्छा है। हमारे बीच सन ड्राइड और दूसरी ड्राइड इंडस्ट्रीज की एक्सपर्ट बैठी हुई है शीतल। आप बेहतर जानती हैं कि कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चले बिक गए, जो अच्छे हैं दिखने में, टेबल वैरायटी बिक गए, जो नहीं है उसको सन ड्राइड करो, इलेक्ट्रिक ड्राइड करो, या जो भी ड्राइड करना है उसको करो, और सुखा के एक तो साल भर तक रख सकते हो, 18 महीने तक रख सकते हो, और फिर बेचो जब दाम अच्छा मिल रहा है बेचो। और आपको उसको कहीं स्टोर में रखने की जरूरत नहीं, वेयर हाउस में रखने की नहीं जरूरत, क्योंकि तो ड्राई होकर छोटा रह गया ना। और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको वापस हम कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेश जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। आपको भी बताया गया इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, तो मिलेट में नए प्रोडक्ट्स आएंगे तो बिकेंगे ना, खाली मिलेट तो कितना बेच लेंगे हम। तो नए प्रोडक्ट आने होंगे। मिलेट में भी हम लोगों को अपनी रोजमर्रा नए प्रोडक्ट में भी 2 टाइप के प्रोडक्ट। एक तो होता मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया और उसको मैं बेचने जा रहा हूँ, नया प्रोडक्ट है, बड़ी मुश्किल है भैया। आसान है क्या बेचना नया प्रोडक्ट? उसके लिए इतनी मार्केटिंग कॉस्ट है, इतनी मार्केटिंग कॉस्ट है कि मेरे पसीने छूट जाएंगे, इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। करना एफर्ट उसमें भी, लेकिन जरूरी क्या है या आसान तरीका क्या है कि जो बिक रहा है, जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, उसी में मैं अपनी एक सेगमेंट ढूंढ सकूं, वो ज़्यादा आसान है। इट इज़ बेटर इजी। तो उसमें मैं मार्केट में एग्जाम्पल देते हैं, नूडल सबको पता है नूडल है। मैं एक नूडल जैसी एक नई चीज़ बना के और मार्केट में बेचूं जिसने कभी सुना भी नहीं पहले, और फिर मैं बताऊं कि ये एक्स चीज़ है और इसका बड़ा फायदा है, आसान नहीं है। लेकिन नूडल पता है सबको। अब मैंने मिलेट के नूडल बना दिए और उसको मैं बेच रहा हूं, तो आसान है बेचना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी ध्यान रखना है कि हमको प्रोडक्ट नए डेवलप चाहिए, मार्केट्स नहीं चाहिए। कब तक डिपेंड रहेंगे? कुछ एक लिमिटेड मार्केट्स पर, जो कि हमारी हेवी डिपेंडेंस है उन पर। नई नई मार्केट्स को ढूंढने की जरूरत है, और उन्हीं मार्केट्स में भी हमें नए नए अपने सेगमेंट्स ढूंढने की जरूरत है। ये बहुत ज़रूरत है और उस तरफ हमें काम करना है। और डॉक्टर खान ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करना है, बहुत ज़रूरी है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जब आई, उससे पहले तक स्टेट गवर्नमेंट्स का एक एटीट्यूड रहता था, मुझे एक्सपोर्ट से क्या लेना देना, मेरा स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। एक्सपोर्ट आपका काम है, मैं तो अपना किसान देखूं, अपने लोग देखूं, उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने उसमें देखूं। एक्सपोर्ट आपका काम है, आप देखो, मुझे उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अब स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से बल्क डिमांड बढ़ती है। जब बल्क डिमांड जाती है तो डाउन द लाइन फार्मर्स को, ग्रोवर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट्स को रियलाइजेशन हो रही है, और अच्छी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अब साथ चल रही हैं।
कुछ आ गई हैं, कुछ अभी नई भी आई हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लेकर चलना सबसे जरूरी है। नहीं तो वो अपनी डपली बजा रहे, हम अपनी डपली बजा रहे, दोनों के सुर ही नहीं मिल रहे, तो संगीत सुनने में कैसा अच्छा लगेगा। तो मिल के सब करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगे लाना है। और जैसे अब मैंने कहा कि डिमांड बढ़ रही है, तो अचानक से हमने देखा है कोविड के बाद हेल्थ फूड्स की और ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड अचानक बहुत बढ़ती जा रही है। हमने अपने ऑर्गेनिक की ग्रोथ में हमने देखा लास्ट 51% का ग्रोथ हो। इस साल थोड़ा सा कम हो गया, उसके हालांकि फैक्टर्स अलग हैं। फिर $1 बिलियन हमने पहली बार क्रॉस किया ऑर्गेनिक में। और डोमेस्टिक में भी आप देखिए, अब आप लोग भी सब कंज्यूमर्स हैं, आपको भी बुरा नहीं लगता अगर आप 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, अगर आपको पता हो कि प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सेफ है। ये जनरल जो है ये कंसेप्ट सबके दिमाग में आ रहा है। तो हेल्थ फूड्स और ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम और उसमें भी कर सकते हैं। हमारे बीच एक और एंटरप्रेन्योर भी बैठे हुए हैं जो इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और नए नए प्रोडक्ट, मुझे भी बताया 300 नए हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं, 20 करोड़ की उनकी टर्नओवर हो गई। तो अच्छा, ऐसी चीज़ें लेकर आए, इनकी भी बहुत ज़रूरत है। अब नई वैरायटी भी लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा जानते हैं, अब अंगूर हम थॉमसन सीडलेस कितना बेच लेंगे भाई, हो गया, उसकी भी हो गई डिमांड, उसकी बहुत हो गई है, सैचुरेशन आ गई है, नया चाहिए वैरायटी। उस नई वैरायटी, एक एग्जांपल दिया मैंने, चाहे पोटैटो है, अब हमें चाहिए नई वैरायटी जो भी मार्केट में बिकती है। मैंने कहा ना, जो बिकता है बेचो ना, नई चीज़ बेचने में मुश्किल हो जाता है। हमने आलू उगा दिया और हम कहें बेच दो, नहीं बिक रहा। वो कहते हैं आपके आलू में प्रोसेसिंग वैरायटी नहीं है, आपका आलू में वो स्प्राउट्स हो जाता है, आपका आलू साइज का नहीं है, आपके आलू में मिठास है, नहीं बिक पा रहा। यहाँ पे हमके आलू बेचो, फिर वो आलू कौन सा बनाए, तो वो जो बिक रहा है उस आलू की सीड ले आए ना, उसकी वैरायटी ले आए, तो हम उसको ग्रो कर दें। तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर तरफ हम लोग काम करें। और स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़रूरी है। ये अब स्टार्टअप कल्चर को जितना इनकरेज करेंगे, हमने सक्सेस देख लिया है, अच्छी बात है, और उनको इनकरेज करना, उनको हैंड होल्डिंग करना उतना ही ज़रूरी है। और अंत में मैं कहूँगा कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारे लिए पेन बन चुका है। मार्केट बेचने में हमें बहुत मुश्किल आ रही है। डेफिनेटली इट हैज बिकम अ real problem for us now. Whether it was earlier, it was only European Union, now we see even the Middle East also countries, GCC countries have also started raising the issue of pesticide residues. This needs to be addressed on a war footing level. We have to ensure that we have the pesticide residues. There are two types. One is pesticide residues which are there fixed only on the technical grounds, level of default, we need to fight it. That is of course from a government level, but then ground level we have to ensure that the indiscriminate use of chemicals and pesticide needs to be addressed. So हमें भी तो माल ठीक खाना है, एक्सपोर्ट में ठीक नहीं बेचना, हम भी माल, हमारी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। जो बाहर बैठे हैं उनकी सेहत उतनी नहीं, हमारी भी सेहत ज़रूरी है, हमें भी माल ठीक खाना है। तो pesticide residue is definitely need of the hour, we need to address this. Thank you very much Dr. Khan, Mamta ji, for giving me this opportunity. हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। Thank you. Dignitaries on the dais to kindly do the honors of releasing the Agri Export Report 2022. And ladies and gentlemen, please put your hands together on the release of the Agri Export Report 2022. Thank you very much indeed. And now, ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting our guest of honor, Dr. S. Glory Swarupa, Director of the National Institute of MSME, to kindly give the inaugural address. Malhotra ji, former Agriculture Commissioner and Project Director, DACMA. Dr. Tarun Bajaj ji, Director, APEDA. Dr. N.J. Khan,
the CEO of Indian Chamber of Food and Agriculture, Ms. Mamta Jain ji, CEO of Agriculture Today, esteemed delegates, scientists, panelists, speakers, entrepreneurs, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you and greetings from National Institute for Micro, Small, Medium Enterprises, Ministry of MSME, Government of India. I'm glad that I have been given an opportunity to be part of this National Summit today, and my compliments to the organizers for conducting this National Summit on Agri Exports. My institute is located at Hyderabad. While the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are celebrating the Diamond Jubilee. We are established in the year 1962 and we have rendered the services for this nation for the growth and promotion of micro, small, medium enterprises. Our contributions are very significant and I'm very happy to share that as very proudly mentioned by Dr. Tarun Bajaj ji, the exports, the targets what we have achieved today. Similarly, in MSME sector, micro, small, medium enterprises sector, so I'm glad to share that the call given by Honorable Prime Minister was $5 trillion. And the promise made by our sector, MSME sector, is $3 trillion. So out of $5 trillion, we have taken the responsibility to contribute $3 trillion. And as rightly mentioned by him, so as a team and many departments and many individuals, many organizations and all the sectors. It is Agri Exports Summit. Today we are all participating. MSME, we don't have any boundaries. We work among all the sectors. Starting from this idea generation to the exports. Under our ministry, we have very important schemes for the exports, and wherever you are, which state you are, you may contact the MSME Development Institute, MSME DI, it is popularly called. Otherwise, if you are at district level, we have District Industry Center. So you can approach this center for the exports. We are largely involved as a national institution in capacity building of the officers, and we have been regularly building the capacity of industry departments, officers and agriculture department, early department officers for the export procedures, export facilitation, export formalities. We have been doing this, and most of our MSME development institutions are the host for export facilitations. So please do approach these institutions and take the advantage, and you should be benefited for the system placed in our country by the government. Many of you might be aware, after agriculture sector, that is primary sector, MSME sector is the most important sector for our economic development. And I can proudly say that 40% we are contributing for the exports directly and 30% to our GDP. And India houses as of today 6.3 crores of micro, small, medium enterprises. And out of this 6.3 crore, 99% are micro enterprises. And after COVID, these enterprises are very much into difficulties, they were into distress, and a lot of revival and rejuvenation is needed, and we are making our best to help and handhold and take these micro entrepreneurs into the next level. Either to diversify with their line of activity, or to scale up their activities, or to get into new line of production, or services, or trading. We are serving the nation. We do a lot of capacity building, and also we do research, we do consultancy, we have short-term education programs, and we do a lot of documentation
for Indian MSMEs and also for the other nations, developing nations in Asia and Africa, and many commodities. I'm happy to announce that we have one good scheme called Spurti, scheme of fund for regeneration of traditional industries. These traditional industries include handlooms, handicrafts, and majorly agro and food processing clusters. Under our ministry, we extend financial assistance up to 5 crore for a group of 200 artisans or farmers or women or handloom weavers, anybody coming together. We are one of the nodal agency for Government of India, being ministry's statutory organization, and we are implementing several clusters, agro and food-based clusters. Just now it is mentioned that next year is the International Year of Millet. I am happy to share that Indian Institute of Millet Research, Hyderabad is one of our technical agency, and we are implementing the millet cluster in Andhra Pradesh, a place called Bapatla. That is the new district in the newly formed state. We are already implementing a millet cluster in Koraput district of Odisha. We are handling honey clusters, honey processing clusters, banana processing clusters, banana product they are exporting, and we are doing with jackfruit clusters, many rice-based clusters we have established, several vegetable and food processing clusters, and we are into bamboo clusters, coir clusters, many agri-based and turmeric clusters. After COVID, the ginger, turmeric has gained a lot of importance to develop the immunity among all of us. So we are into these turmeric clusters also. Any of you are interested, or your beneficiaries, or your stakeholders, you can approach us to develop the cluster. I have been discussing with Ms. Sheetal from Maharashtra. So even they are into onion processing, so if they can form the cluster, we will help them out. So any of you, any agro and rural based or food based and beneficiaries you have, if raw material is available sufficiently with you and already the domain skill is with them to process, either primary processing, secondary or tertiary processing, we will help you to take it as a cluster, create the common facility and facilitate them to go for the exports. From the jackfruit cluster from Karnataka, they are already exporting, and from banana processing cluster also they are exporting the banana value added products. So likewise we have several schemes, subsidies and incentives. You can visit our website, ministry's website, or you can visit our institute's website, nimsma.org, and you can approach us through any platform, through email, social media platform, and reach us for the growth and development of the agri sector and also to enhance the exports. My previous eminent speakers were mentioning about one district, one product. Again, I am very proud to say that this concept, we were the first to start in the year 2018 from Uttar Pradesh. We were given that assignment and we have completed this assignment. Thereon, it went on to many states across the nation. Of course, this we have adopted from China, but it is very important for us to identify which district has the potential for which commodity and where we can increase the value and improve the incentives in terms of rupees or profits, and we can reach more markets or more customers. And the latest concept is, I think from news you might have learnt about one district, one station. One station, railway station. It started with Tirupati, the holy town, the Tirupati Laddu, the Prasad, which it is available only in the temple place, but now it is being placed in Tirupati station.
to make available to all the travelers, all the tourists who are visiting Tirupati town. So please identify your own product and try to place with the help of railway authorities in the station. I am also very happy to share that a place called Sakoli in Maharashtra, where we have our bamboo cluster, we have already completed that cluster. So now that bamboo products are being placed in Sindhudurg railway station. So this is the latest concept and there is a long way to go. So railways is one of the largest system and well connected across India, length and breadth. And we have good railway stations and modernization is taking place and they are coming up with malls and many other amenities and shopping complexes. I think this is one good platform for all of us to showcase our product, whether it is agriculture or any other rural-based or agro-based product in the railway stations. For us to reach this 5 trillion economy, so we all need to work, and whatever the enterprises or the commodities or the institutions we have at hand, that has to be strengthened after COVID, and more people should join this journey, then only we can reach this 5 trillion target. So how more people can be brought into this? I was sharing with you the number of MSMEs in the country, that is 6.3 crores. But out of this, women participation is only 18%. I think even in agriculture also, your cultivation or production or in the processing, I think it is more than 50%. I'm not sure, but most of the operations are carried out by women. But in MSMEs, it is only 18%. 18% of the micro enterprises are owned by women for the sake of getting the subsidies or incentives, but otherwise all is done by their family members. 2 years back, I was being taken as Director General, National Institute for MSME. Last year, the International Women Day went on online because of COVID. This year, we could have many celebrations physically. So most of the people came to me, including Ms. Mamta Jain for a special report, likewise most of the media and of course MSME sector people approached me, to be part of the celebrations, to give some message, to encourage the women entrepreneurs and women section in our society. Then people were asking me how will you going to help this section, and what will be my vision or my endeavor to do that. The call given by Honorable Prime Minister a few years ago, doubling of farmers' income. When I read that report, I was very much impressed. I think that report committee was headed by Dr. Ashok Dalwai. Today we are missing him. Then I started thinking, what can we do? So we have taken a call from our institute to double the women entrepreneurs. How do we make this 18% into at least 25%? So whether it is 2047 or 2035, so we have some targets for 2035 also. Previously our mission was 2020 for most of the achievements, for accomplishments. Now it is 35 and 47. So to make it at least to 25%, so we are striving very hard. We have submitted a report to Government of India, Ministry of MSME, to make it as a strategy or a mission to bring in more and more women entrepreneurs. I'm not biased, but the country's experience say that, our countries say that women are very dedicated, they are very sincere, and they are very hardworking, and always, most importantly, they are never selfish. They always think about the family, community, and society. Our SHG groups, self-help groups, are the great success across the nation, irrespective of the state, irrespective of the commodity or the operations what they are doing. Whether it is papad, or the precision tool, so women are there in all the sectors. So we have taken a call to double the number of women entrepreneurs in the country. Whoever is interested, individuals, organization, you can join this mission with us and let us take it forward.
And as an institution, we have also taken one more very important call to become, to make it as a national mission, one entrepreneur from one village. The number is very, very less. We are yet to reach the potential and show the world that yes, India can do it. Only 3.6 crore MSMEs in India, and last year reports after 2 lockdowns, it says that less than almost 50% of the micro enterprises, they are in the verge of the closure, or they were thinking to close down because of COVID troubles. We have, I think, more than 7 lakh villages in India. So every village there is one businessman, whatever name you call them. So it is a one-stop shop. They start with your agriculture, seed, fertilizer, and pesticides, and also they sell coffee, tea, vegetables, everything. It's a one-stop shop, including the casuals, everything they do. And since 10-15 years, they are also into selling the mobile SIM, mobile chargers, many services also they render. That entrepreneur, that business person, man or woman, if we make them as an entrepreneur, so in 1 year, straight away, we'll achieve the target of at least 7 lakh entrepreneurs in India. So this is the call taken by us. So any individuals, organizations, associations interested, you can join us. That's how we can reach the 5 trillion economy, and we can contribute for the more exports under Atmanirbhar call given by, again, Honorable Prime Minister, import substitution and export acceleration. So we are working very seriously on this. So building the capacity of firstly the officials. So what is this export procedure, documentation, formalities, and how do they help the beneficiaries, our stakeholders, to promote their exports. Once again, I compliment the organizers for conducting this summit, and I also compliment the delegates for taking out their time and attending this conference. And whenever you happen to be in Hyderabad, visit our institute, or you can approach us for any kind of help related to entrepreneurship development, skill development, including your own experts and research, consultancy, education, documentation, dissemination. Thank you very much. My best wishes to the conference, this summit, and my success to all the entrepreneurs present over here. Thank you very much. Thank you, country, and how they are supporting the growth of entrepreneurship in our country in the future years to come. And now, ladies and gentlemen, I would request once again Ms. Mamta Jain, Group Editor and CEO, ADG, to kindly do the honors of presenting a token of gratitude to all our eminent and distinguished guests on the dais with us for the inaugural session. We begin by honoring our guest of honor, Dr. S. Glory Swarup. Thank you once again, ma'am, for sharing the presentation. We present to Dr. Tarun Bajaj, Director of FIDA. Thank you very much indeed, sir. And to Dr. S.K. Malhotra, former Agriculture Commissioner, Project Director, DKN. Thank you very much indeed, sir. Thank you, ma'am, and I would now request Ms. Mamta Jain to kindly do the honors of proposing the vote of thanks. DG ma'am, Tarun sir, and Dr. Malhotra, thank you for joining us today this morning. Your presence here is very encouraging and reinforces our commitment towards agriculture growth and export. And I would like to thank all the panelists who are joining in today, and all the dignitaries, all the delegates. Thank you for joining, and we look forward to an enriching session throughout the day. Thank you so much. Thank you very much indeed. For the session, Dr. Balraj. Over to you, sir. Still it's good morning because it's 11:58. Good morning everybody. So after 2
minutes we'll enter the next session. But anyway, thank you so much for giving me chance to chair this important session. The session relates to the role of the states in powering the export performance. So in the morning hours we have also discussed, and stage has been already set. Many points have been discussed in the morning, and now I could see that brilliant panel is available with us. I could see that Dr. Balraj Singh, who is the convener for this session, he is available with us. Everybody knows him. Dr. Balraj is the project coordinator for the All India Coordinated Improvement Project for bees and pollinators, and he is already providing the leadership in that area. And before that, he was a vice chancellor of one university at Rajasthan, Jodhpur. He was there for a quite long period, and then he came here. So now he is with us today, and he will convene the session, and we have a brilliant panel available with us. Dr. Vijay Sardana ji, and then Dr. A.K. Rajput, Mr. Abdul Hamid, and Dr. Ram Singh. Well, so we discussed in the morning session, inaugural session, that the government fixed the target of $60 billion through agriculture export that was required to be achieved. And we have touched the $50 billion now, 50.12, it's 19% more than the last year. Earlier it was $41 billion, now we have reached to $50 billion, and the year 2018, this figure was 30 billion. And government set the target that in the next 4 years, by 2022, this figure is required to be doubled. So earlier we were 30 billion, so it was required that we need to double it to 60 billion. So we have reached near, and we are left with another 1 year, and by the end of this financial year, definitely we will touch that point. So here, states, they play the critical role, because states are the major agencies who has to implement this export plan, that how we can further increase the export, and they are the only agency where they could augment, and they are augmenting the production and productivity of these crops, which is a raw material for industry, and then again even there are many commodities which are exported as such. So they are complementary to the national agenda. I should say the national agenda is that how we can increase our export and how we can increase the income of the farmer. These are the national agendas, and series of interventions have been identified, and those interventions are now being implemented through the national mission programs which Government of India has started, and Ministry of Agriculture, Ministry of Food and Consumers, as well as Ministry of Commerce and Industry, they have started several programs. And here the points which were identified, that from the production side we have to take care of many points, and for the quality side, if we have to enhance the quality, what kind of intervention should be there, either some kind of infrastructure support that's also needed. Then again, supply side, value chain system, these all are the points which are usually discussed, and better marketing channels also, this is very important from that point of view. And the ultimate objective, as we come from Indian Council of Agriculture side, which is the part of Ministry of Agriculture, where the most important point which we always consider that our stakeholder, he should be benefited. So our stakeholder is farmer, and farmer should get the remunerative price. So that has always been focused. But here state governments, they have been realized, and further they are the very important partner if we have to increase the export, because production is required to be augmented from their side. And new schemes were also started by the Ministry of Commerce and Industry, where traceability, and then further digital farming system, again those points are now also coming into the picture, and how we can enhance the quality, how we can further scale up such initiatives across the states so that we can push the agriculture export. So here drone technology, biostimulants, then again
green chemistries, these all are the areas where we are throwing the light, because time and again pesticide residue issue that has cropped up. So here we are dependent on the states, because state agriculture is the state's subject, and agriculture as well as land, these are the 2 points which are considered as a state subject, and here states are required to be put on board. So their presence is very important, because all these programs are implemented through states only, and the involvement of states, they play the greater role if we have to enhance the production, and exportable production is also already happening. Some kind of cluster approach has been followed, where in the different agroecological regions, production zones have been identified, commodity based production is happening, and agroecological region planning, that is playing the major role into it. And total there are 20 agroecological regions, and for each agroecological region the planning has been done, and accordingly production is also pursued, and good agriculture practices is also in picture. So global gap already we have, which is being followed by our farmers as well as exporters. But further we need to see that now in the gap it has come into the picture, how we can further benchmark. So benchmarking is already in process. Once it is benchmarked, then it will pave the way for further enhancing the export. So without wasting time, let us come to the main business, and let us have the views from our panelists. Today's panel, which we are going to discuss about the role of states in powering the export performance. So moderator Dr. Balraj Singh is with us. So let me start. Something would you like to say, or let me have your opinion first? State we will start. We'll get that. So let me start with Mr. Vijay Sardana ji. Everybody knows him, that he is the person who is the chairman of this working group on agro trade, and he is having a long experience, and he is the person who is well known in the country, because in the media everybody could see him here on the either it is TV or it's media or some kind of media analysis, print media analysis he used to give on the commodities, different agriculture commodities. So he is a renowned figure in the country. So today we are going to listen him, and he is going to make a short presentation where he would like to share some information related to some trade barriers and all other things. These are the points which usually ponder us. So I request Mr. Vijay Sardana to kindly make the presentation, and then please continue. शुक्रिया सर, धन्यवाद। मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट लूँगा इस प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में भी बात हुआ था कि किस तरह से हमारे ट्रेड के ऊपर इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और अक्सर हम लोग बात करके रह जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। कुछ ऑप्शंस सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, आप लोगों को मौका है उनको यूज़ करने का, एंड यू आर अवेलेबल, मीन्स द होल टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, आज सुबह तक पिछले एक साल में 1 जून 2021 से लेकर आज सुबह तक दुनिया में 1732 SPS नोटिफिकेशंस दुनिया भर में इशू हुए। आई एम नॉट सेइंग समथिंग विच इज हाइपोथेटिकल। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज 5 से 6 कानून जो एग्री एक्सपोर्ट ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो बदल रहे हैं या इमर्ज हो रहे हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो हम 20 में कर रहे थे, 18 में कर रहे थे, 19 में कर रहे थे, वही चल रहा है, तो शायद हम गलत फहमी। और जितने हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो सब अपने कानून बदल रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है पिछले साल आपने एक्सपोर्ट किया हो, अगर आप उसी सोच से इस साल एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपको एक्सपोर्ट रिजेक्शन फेस करना पड़े। सो इट इज अ डायनेमिक वर्ड, इट इज नॉट ए स्टैटिक वर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये सिर्फ रिजेक्शंस का मैंने चार्ट आपके सामने रखा है, ओनली बाय वन कंट्री, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। हर महीने दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट अगर कहीं पे कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे किसी कंट्री के, नेक्स्ट टू चाइना इज इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ एंड ऑफ कहीं किसी ने कर दिया या कुछ कर दिया, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो वो रिस्पेक्टेड कंपनीज भी हैं, वो मल्टीनेशनल्स भी हैं, वो ब्रांड्स भी हैं जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कानून बदल रहे हैं और मल्टीनेशनल्स के भी प्रोडक्ट अगर रिजेक्ट हो रहे हैं, और ये प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के रिजेक्शन नहीं है, ये वो रिजेक्शंस हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए और अमेरिकन बॉर्डर्स में जिनको रिजेक्ट किया गया। तो ये लिस्ट मंथ वाइज मैंने आपके सामने रखी है अप टू अप्रैल। अभी मई का डेटा आज अपडेट हो जाएगा, तो शायद अगले हफ्ते में आपको मई का डेटा दे दें। नेक्स्ट प्लीज। रीजन क्या रहे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स के रिजेक्शंस के लिए? पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एंटीबायोटिक रेजिड्यू, अफ्लाटॉक्सिन, ईटीओ, एथिलीन डाइऑक्साइड। हम लोग बहुत सारा अपना पूरा 60,000 करोड़ का स्पाइस इंडस्ट्री स्टेरिलाइजेशन के लिए दे यूज एथिलीन ऑक्साइड व्हिच इज बैंड आइटम, but people are using it and facing rejection. Pathogens, even filth in processed food, in some of the famous brands in India which we are consuming. If you go and see that why they were rejected, the reason for rejection was carrying filth, and it is of MNC product. So what we are eating in India is a separate issue. Even in export consignment there is a filth. So what they are supplying to us, this itself is a matter of investigation. Another set of arguments which people don't update their database emerges due to legal gaps. उन्होंने अपनी लेबलिंग रिक्वायरमेंट बदल दी, लेकिन आप लोगों ने अपने लेबल्स को नहीं अपडेट किया, पुराना लेबल चल रहा। वहां पे उन्होंने कोई एडिटिव्स को बैन किया, हम अभी भी यूज कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं कि ये भी मुश्किल है कि हर किसान, हर एक्सपोर्टर बैठ के सारा डेटाबेस अपडेट करे। इसके लिए भारत सरकार को एवरी वीक किस देश ने क्या क्या चेंजेस किए जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर सकता है, मैं वीकली रिपोर्ट भारत सरकार को भेजता हूं। अब वो आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है मेरे को नहीं पता। यू कैन डिमांड फ्रॉम अपीडा एंड ईआईसी द वीकली रिपोर्ट्स व्हिच आई एम सेंडिंग टू देम। नेक्स्ट प्लीज। सेक्टर्स, अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका आंसर क्या है। मैं सिर्फ ब्रीफली जा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, टाइम कम है, लेकिन आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं, कम एंड सी हाउ दिस टेक्नोलॉजीज वर्क, एंड इट इज इन दिल्ली 20 मिनट्स फ्रॉम हियर। ऑयल सीड्स में अफ्लाटॉक्सिन, हाउ टू एड्रेस इट, वी हैव डिजाइन्ड अ टेक्नोलॉजी श्रीराम इंस्टीट्यूट, यू कैन यूज दैट ऑप्शन। स्पाइसेस, ईटीओ का अल्टरनेट क्या हो सकता है ताकि आपका एक्सपोर्ट रिजेक्शन नहीं हो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। स्नैक फूड्स में पैथोजेंस मिनिमाइजेशन कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। राइस में पेस्टिसाइड रेजिड्यू, अभी पीएचडी चैम्बर के साथ मिलके हमने एक पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रीडिजाइन किया है विद एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स। नो न्यू पेटेंट इज रिक्वायर्ड, नो एक्सपेंसिव ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स में सिर्फ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बदलना है। ये पूरी रिपोर्ट हमने अपीडा चेयरमैन को दी है। जो किसान भाई आज पंजाब हरियाणा में बासमती उगा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, they simply adopt that and it is vetted by all the scientists. You can adopt that and use it. हनी में एंटीबायोटिक्स का इशू है, that can be addressed. Processed food में filth and unsafe, it is a matter of education and training, that also can be done. Next please. अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, नई टेक्नोलॉजीज कहाँ इशू हो रहा है। एक सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट्स में, व्हाई दिस हाई लेवल ऑफ रिजेक्शंस, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं इंक्लूडिंग सम एनएबीएल सर्टिफाइड लैब्स जो बगैर सैंपल खोले जैसे एक्सपोर्टर कहता है वैसा रिपोर्ट कार्ड बना के दे देते। उस समय तो आपकी गाड़ी निकल जाती, लेकिन आपका कंसाइनमेंट को आपने अमेरिकन गवर्नमेंट को तो ब्राइब नहीं किया ना, वो तो रिजेक्ट करेंगे। आप हिंदुस्तान में रिश्वत देकर थोड़ा टाइम के लिए कंफर्ट ले सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट आपके लिए बहुत भारी पड़ता है, आपके बायर्स के लिए बहुत भारी पड़ता है। तो ये शॉर्टकट के रास्ते से अगर निकले, जब हम बात कर रहे हैं 50 बिलियन के हम आगे कैसे जाएंगे, उसका एक ही तरीका है कि हमें एथिक्स इन बिजनेस को प्रमोट भी करना पड़ेगा। विदाउट एथिक्स बियॉन्ड अ लिमिट यू कांट ग्रो बिजनेस। शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, यू कैन डू इट वेदर इट इज अ फ्रेश और प्रोसेस। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसकी शेल्फ लाइफ 7 दिन है, 15 दिन है, आप उसको
1 महीना करना चाहते हैं, 2 महीना करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने आपको कहा, ईटीओ यूज कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट क्या होगा, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंडिया इज वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल फूड्स। हर स्टेट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमने कभी उसके एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया, लेकिन अगर किया भी है तो हमने उस तरह से उन प्रोडक्ट्स को अपग्रेड नहीं किया, डिजाइन नहीं किया, लेबल नहीं किया, पैकिंग डेवलप नहीं करी जो वर्ल्ड मार्केट में चले। आज आप चाइनीज फूड इंडिया में खा सकते हैं, थाई फूड इंडिया में खा सकते हैं, हिंदुस्तान से कचौड़ी समोसा क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकता, ढोकला क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकता। हम जो कर रहे हैं वो एक आधा कंटेनर इंडियंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम इसको वर्ल्ड मार्केट बना सकते हैं, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स आर फार बेटर न्यूट्रिशियस देन एनी जंक फूड व्हिच यू आर ईटिंग इन मेनी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। So we have to think that we have a better product, they are good for good taste, good health, good nutrition, but we are not working on that. We are still trying to recopy the western foods and trying to export. हम इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो जब हम रोल ऑफ स्टेट आता है तो हर स्टेट और हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने स्टेट का तो प्रोडक्ट फोकस करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सम ऑफ द एग्जांपल्स, मैं इसलिए आपको जस्ट दिखा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम नहीं है, बट यू ऑल आर इनवाइटेड टू विजिट श्रीराम इंस्टीट्यूट एंड सी योरसेल्फ कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। किस तरह से आप अफ्लाटॉक्सिन को ग्राउंडनट से हटा सकते हैं, वर्चुअली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आज मेजर कंसर्न है ग्राउंडनट एक्सपोर्ट्स में, एंड दिस कैन बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट प्लीज। Same thing, ethylene dioxide, you can remove this. Next please. Antibiotic issues, how you can increase the shelf life without using of antibiotics, क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर में antibiotics are wrongly sold as a growth promoter, and it should be declared as crime when anybody calls antibiotic as a growth promoter. It is a mis-selling and it should be a criminal offense. Next please. And then pesticide residue in basmati, इसका नया पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पूरा रिवाइज करके पीड़ा को दे दिया गया। Those who are interested can take from them or I can share. So my next please. So my request is please use all options available. जब हम रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्टेट का कह रहे हैं, we are there. My humble request to all of you, किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, please walk in with your problem to Shriram Institute. We are there to help you. Thank you. Thank you so much, Vijay Sadanaji, for your remarks which you have given. Really, it's very important to know because this is an alarming situation for all of us, and he has very clearly mentioned that if we have a kind of rejection system available with us, then we need to have a kind of response mechanism which is required to be put in place. So he raised several important issues related to this rice, and then also related to ETO. I remember because these two issues I handled, and rice again are already some kind of package of practices and some kind of schedule has been worked out, and where it has been clearly mentioned that it is a particular stage. After this stage, this tricyclazole, bupropion, these all things are not required to be applied on the plants. Second, ETO issue also I handled, and ETO again I would like to mention. I remember when I attended that meeting with our embassy at Brussels, because they were dealing with the European Union at the Brussels headquarters. So then they asked me, because being a chairperson of the registration committee of the Central Insecticide Board, I was put up this question that do you recommend the use of this ETO? Then I clearly mentioned that ETO is not a recommended practice in our country. And ethylene oxide, this is substance which is used for treatment of these all medical equipments. So this is a substance, this is a chemical which is used for treating medical equipments. And now here traders might be using, I did not mention that they are using, they might be using for treatment of sesame seeds, spices seeds, so that they can make the produce antimicrobial. So microbial free, I should use the word. So microbial free, if they want to make, they were doing treatment with ETO. So ETO is not a recommended practice, ETO is not in the schedule. And then they asked for the options that what it should be. Then I mentioned only 2 points. One, either we should put it in the insecticide schedule, 1 point. Second, our research sector, they should conduct the trials and they should tell us the appropriate dose for use
use of ETO for post-harvest treatment of the produce. And if they tell us the appropriate dose, then they will establish the MRL value also. So these are all points were discussed, and then we had a discussion with industry also. So consignments whatsoever were rejected on the basis of ETO, it was further mentioned that traders, they were not using it. So during the transaction, it might have entered from some other place or somewhere during the transaction period. So this was also mentioned. Then I suggested APIDA that what they need to do, randomly they should take some samples from the products which are now in the pipeline for export. And then later on, if any of the sample is rejected later on, then we need to further compare that whether there was some intention from the accepting country to finding the faults in our products, or in real sense it was having some fault. So some kind of comparison will come. So this was suggested. So these are the few points. Thank you so much for enlightening us. And really we need to be careful on all these areas. And we need to understand that whenever there is any legal gap, we need to keep ourselves updated. Either it's unapproved additives or it's some kind of wrong classification sometimes they do, and labeling is also not done properly. So we need to keep ourselves updated on many such issues. Thank you so much that you have a weekly report which you release. I think we need to share that link with everybody so that they can see. If it is APIDA's property, you can ask them because we give them a weekly. Okay. Well, so thank you for the good point. So I'll just come back to you again. So now I'll invite Dr. A.K. Rajput, Executive Director, All India Poultry Breeders Association. Thank you, sir. So Dr. Rajput is available with us. He is the Executive Director, and poultry again, I know it's most dearest area of Mr. Saldana. But anyway, Mr. Rajput, you may please throw light on, give your remarks related to the export of these poultry related products, because you have a greater experience in this area, and this is one of the area which has been already identified for export purpose, either egg or some other processable products from this poultry industry. Please. Thank you, Dr. Malhotra. You see, poultry, I represent, so in poultry there is a huge scope for export because we are not doing an export. There is no export happening. No means very, very negligible. Whereas we are the third largest producer of the table eggs in the world and fourth largest producer of the chickens in the world. Whatever we are producing, we are consuming within India. Why we are not exporting? There were basically so many reasons, but so far, when there is no need, it was not discovered. So there is huge chances for export of poultry products in the world market. Even the small countries like Turkey, Thailand, they have more than 5 to 6% world market share. So they are exporting across the world. And we have very small exports of some table eggs and some egg products, which is in Russia, Japan, or some Middle East countries. So only these countries are there. What are the biggest challenges in this type of poultry, why we are not able to export, is that that there are so many, number one, I talk to the government side. There is not much incentive or not much encouragement for export of poultry products, whether it is state government or whether it is central government. In the state government, absolutely they don't bother for poultry export. And in central government, we are lacking behind because we do a lot of free trade agreements with many countries. In so many countries, when we export our products they are taxed 8 to 22% duty, irrespective where the products from the other countries in that country. I'm giving an example of Japan. We are exporting egg powder to Japan. We have world-class processing facilities for egg powder, but our products is taxed 18 to 22%.
to the people. Whereas all the exporters which are coming from US, coming from Mexico, coming from EU, coming from Australia, they are having zero duty. So our government should also negotiate the equal level playing field for export, because export market is highly competitive. Even if you are 0 cents costlier, people reject. We have, our plants are all approved by EU, Japan, so there is no problem of quality. Only problem is, we are not, our agents are not happy with this because you are not competitive. So I request to this forum, government should look into these facts. Secondly, we export table eggs to Dubai, Oman. So they have put so many strict conditions for us. For Dubai, they can only buy from table eggs from a farm which is compartmentalized as per OI norms. So compartmentalization of a farm as per OI norms, it requires a lot of money a farmer has to spend to maintain that farm. So either it should be subsidized or supported by the government, state government there, or there should be some scheme from government of India. There is nothing. So he has to spend. Then why he should export when the same eggs which other countries are exporting from normal farms, they are fetching the same price as it is from India, whereas he is spending more. Third thing, in India, our feed cost is 30% more than other countries. You see, in India, we are using non-GMO feed, that is soya and maize. Whereas other countries, they are using GM soya and GM maize. The GM soya and GM maize, internationally, always they are 20 to 25% cheaper than non-GMO. So in India, our cost of production goes high. So that again adds to our cost. So I think this government should also, I suggest, they should also encourage import of GM seeds, at least for those farms who are exporting. Only on the undertaking we can import GM so that we are 25 cheaper and become more competitive in the international market. So this is another factor. One more factor, for example, we are exporting table eggs to Oman. Government of India is certifying those eggs, health quality, all quality parameters. But still, Oman governments, they are not releasing those eggs in the market. They are again taking samples and they are again testing. With this, almost 15 to 20 days are wasted. So our products remains in the, storeroom or cold store, whatever it is. So it is discouraging for next lot. So I think government of India should negotiate with them. They should say that when we are certifying, then why you are again certifying? Because till date they have never found that government of India certificated any doubt in this. But still they are doing. So with this, whatever, if we can export 30-40%, we cannot increase that export. So these are the impediments where government of India should have. Another point, you see, India is a very big country geographically. I am giving you, this is one, everybody knows that bird flu. If country become positive for bird flu, in small part of Kerala or in small part of Northeast, all India is banned from export as per OI norms. So government of India, they also should step in and they should tell OI that it should be 500 kilometer radius or it should be 1000 kilometer radius. Why to ban all India? I'm giving an example of this Europe. Every country is about 150 kilometers away from each other. But if it is bird flu is in Denmark, nearby country is not bad. Bird flu is in Netherlands, Germany is not bad. Whereas hardly a distance of 200 kilometers. So when they are not banned, because virus doesn't travel with the political boundary. So virus needs to spread, there should be distance enough. So but technically they are allowed to. But in India, if any problem comes in one place, total India is banned. So we need government support, government hand-holding in exports. But I tell you, we have huge scope for export. Our products are world class. We have never faced any problem of rejections in export, whatever we are doing, as I told you. Facilities are excellent. We have very good plants, chicken processing plants, egg processing plants. They are all international standards. So I think government should look into all these facts. There is a huge scope. And even if we increase export by 5%, I think our total
employment, total business in rural India will almost, go 50% more. And you see how much scope we have in rural India. So I think with these words, I hand over to Mr. Malhotra. Well, thank you so much, Mr. Rajput. Yes, you have very clearly mentioned that yes, opportunities are there, but we need to see that how we can make export market in conducive for our purpose, because it's highly competitive. We need to look into. And yes, I also agree with you. Standards are stringent, but how we can meet those standards, it's really a matter we need to look into. And further, government plans are there, schemes are there, infrastructure development, etc. is also now taking place with the help of Ministry of Commerce and Industry. But we need to take benefit of all these schemes. But yes, I agree with you that if in any corner of the country, if any kind of restriction is there or some kind of abnormality is noticed, then full country is banned. I think we need to look into. We also discussed this point at one platform, that if we take example of Europe is having 26 countries, but here we have 28 states in the country, where we are larger than the Europe, if we say in that context. So we should be considered from that point of view. If in a particular state it is there, that state should only be banned for that purpose. I think that's again a point to have a debate on this. So now the next, yeah, FTA. Okay. Well, so now we have the next panelist in line, Mr. Abdul Hamid from All Seasons Farm Fresh Company Agri Export. So they are dealing with the agri export. We would like to listen from him, because there are several commodities which are perishable in nature, either it's fruits, vegetables, spices. So here we would like to hear from him, because I remember it was the year 2019-20 when we exported these fresh fruits, vegetables and other related products to the tune of 14,500 crore. And this year, by the end of March 2022, this figure has reached to 21,900 crores. So this is a kind of enhancement which has taken place. So further we would like to listen from Mr. Abdul Hamid for his remarks. Yes, that's it. Please. सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान है और मैं झारखंड से हूँ। और मैं सबसे पहले इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को थैंक्स बोलता हूँ, जिन्होंने झारखंड से एक एक्सपोर्टर को इनवाइट किया और उसे एक मंच दिया। और सभी मंचासीन लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। मुझे सबसे अच्छा लगा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब मुझे इन्विटेशन आया कि रोल्स ऑफ स्टेट इन एक्सपोर्ट, जो एक स्टेट का रोल होता है एक्सपोर्ट पे। जैसे आपको मालूम है कि हमने $50 बिलियन का जो अचीवमेंट कर लिया है, अब हमको उसके ऊपर जाना है। तो मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे सर ने बात किया, खान साहब ने, कि 6 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया झारखंड के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी, कि आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा कानून पास हुआ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, जो एक ऐसा कानून था जो एग्रीकल्चर पे फोकस करने का था। और उसमें खास करके जो स्टेट जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस कानून की सबसे अच्छी बात थी ऐसे स्टेट को आगे बढ़ाया जाए जहाँ से अभी तक अनटैप पोटेंशियल को खोजा नहीं गया। इस कानून की सबसे अच्छी ये बात थी कि इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को रखा गया। अगर मैं आपको झारखंड के संदर्भ में बताया जाऊँ तो झारखंड का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर तरह की सब्जियाँ होती है, मगर उस तरीके का एक्सपोर्ट झारखंड से स्टार्ट नहीं हुआ। मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, हिंदुस्तान के भी दूसरे शहरों में ट्रैवल करता हूँ, मगर जब झारखंड के संदर्भ में बात होगी, क्योंकि स्टेट का रोल एक इम्पॉर्टेंट है, हमको 50 बिलियन के ऊपर जाना है, तो हमको एक सस्टेनेबल भी चाहिए कि हम सस्टेन करें उससे आगे और नए पार्टनर स्टेक होल्डर ऐड हो। हम तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक ये तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, मगर आप एक्सपोर्ट के संदर्भ में जाएंगे, एग्री स्टार्टअप आ रहे।
मैडम ने बात की एग्री स्टार्टअप के बारे में, बहुत से एग्री स्टार्टअप आ रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। यहाँ पे एपेडा का भी रोल है। एपेडा जो हमारी संस्था है जो एक्सपोर्ट को मॉनिटर करती है, यहाँ से स्टेट वाइज भी मॉनिटर करती है। तो जब मैंने झारखंड के बारे में जब ये पॉलिसी आई तो इसमें सबसे अच्छी ये चीज़ थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं झारखंड के बारे में बताऊं तो हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 APMC है और उसके अलावा 164 से ज़्यादा छोटे APMC हैं जहाँ पे हम काम करते थे। मगर एक्सपोर्ट का सब्जेक्ट किसी को नहीं मालूम था, एक्सपोर्ट होता क्या है। सब्जियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मेरे को लगता है कि 30 लाख से भी ज़्यादा सरप्लस वेजिटेबल्स है। 2018 में एक ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट भी हुआ था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग आए थे और झारखंड से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम हुआ। बट स्टिल वो उस तरीके से शूट अप नहीं हो पाया क्योंकि जो स्टेट का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर जब ये एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी आई तो अब वो स्टेट को भी हम पुश करते हैं कि सर आप एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी आ गई है, आप भी अपनी स्टेट एग्री पॉलिसी बनाए। जो तेलंगाना के साथ प्रॉब्लम है वो झारखंड के साथ प्रॉब्लम नहीं है। झारखंड का प्रॉब्लम अलग है क्योंकि झारखंड एक लैंड ऑफ लॉक स्टेट है। वहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है जहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में माल जाता नहीं है। वहाँ पे PQ ऑफिस नहीं है। जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं, जब हम प्लांट क्वारंटाइन के लिए जाते हैं तो हमारे स्टेट में PQ ऑफिस नहीं है। पैथोसैनिटरी के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट का एक पूरा ट्रांजेक्शन कैसे वैल्यू चेन में एंड टू एंड होता है जब आपकी फार्मर से। मगर ये स्टेट इफेक्ट था। मगर ये एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी आने के बाद और जब केंद्र सरकार द्वारा और भी इम्प्लीमेंटेशन आने के बाद, एपेडा एक्टिव होने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और झारखंड, आप लोग यहाँ बहुत से इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। आपको वहाँ पे हर चीज़ करने के मौका मिले। जो स्टार्टअप है उनके लिए भी है, जो कंपनीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है कि वो झारखंड में आए और झारखंड में काम करें। क्योंकि जो झारखंड के फार्मर हैं फार्मिंग बहुत अच्छे से करते हैं। मगर वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें। एक स्टार्टअप है, अगर आप उससे पूछो कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, जैसे सर ने बोला कि हर महीने हर दिन नए रूल्स आते हैं। किस प्रोडक्ट, अगर मैं एक भिंडी को अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कौन सा लेना है। मैंने लास्ट ईयर अगर एक मैंगो एक्सपोर्ट किया तो MRL का अलग क्राइटेरिया था, इस बार अलग क्राइटेरिया आ गया कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए तभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मिडिल ईस्ट हम टारगेट इस इनिशियल इसलिए करते हैं कि मिडिल ईस्ट का नॉर्म्स जो होता है कंपेयर टू जो यूरोपियन कंट्री होता है उनके नॉर्म से थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। बट स्टिल आपको पैथोसैनिटरी और जितनी भी सर्टिफिकेशन होती है वो चाहिए होगा। तो जब यहाँ जो स्टार्टअप होंगे उनके भी माइंड में अगर हम स्टार्टअप है और हमको एक्सपोर्टर बनना है तो सबसे पहले आपको, अगर आप जिस भी स्टेट से हो, क्योंकि स्टेट अफेयर्स है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि आपको प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट निकालोगे कहाँ से। चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना होगा, उसी के साथ आपको बायर, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, सऊदी अरेबिया जाता हूँ, मान जाता हूँ, मस्कत जाता हूँ, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है। सर ने, मल्होत्रा सर ने पहले बताया कि जो एक कम्पिटेटिव मार्केट होता है कि प्राइसिंग कैसे करोगे। फिर लॉजिस्टिक्स है कि जब आप एक माल रांची से लेके कोलकाता जाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपका पैकिंग कॉस्ट, फिर आप जब उसको कस्टम में देते हो उसके बाद वो जो उसका लैंडिंग कॉस्ट होता है दुबई में वो कॉस्ट, और फिर वो जब मार्केट में जाता है उसका कॉस्ट। तो आपको थ्रू आउट द जो एक एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है आपको सब मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो वहाँ पे एक्सेप्ट हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस प्राइस में वहाँ पे सेल कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जो मेजर है अभी तक डिस्कस नहीं हो, वो होता है जो एक्सपोर्टर होते हैं, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं उनको पैसा भी वापस लेके आना पड़ता है। नहीं तो आपको RBI नॉक करते रहती है कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया। जो मेजर इशू है, एपेडा के पास बहुत से कंप्लेन होंगे एक्सपोर्टर के कि मैंने एक्सपोर्ट किया यूरोप में, मैंने एक्सपोर्ट किया जर्मनी में, मैंने एक्सपोर्ट किया दुबई में, मगर एक्सपोर्टर को अभी तक पैसा नहीं मिला। तो जो फॉल्स बायर है वो भी आपको मैं इस मंच पे नहीं डिस्कस हुआ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़ा मेजर इशू है। आप एक्सपोर्ट कर देते हो, एक नया एक्सपोर्टर है उसने उठाया, वो आपका पैसा काट लेते हैं कि आपका पैसा इतना, मगर जो बिल आपने इनवॉइस किया DGFT की साइट में, जो बिल इनवॉइस किया आपने, वही बिल आपका शो करता है, वो पैसा आपको आना चाहिए। तो जो नए एक्सपोर्टर है, वो जो नए स्टार्टअप है, उनके लिए एक नया है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो सबसे पहले बायर को करें कि ऑथेंटिक बायर है कि नहीं है। नहीं तो ऐसा आपका पैसा अटक जाएगा और फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा।
तो ये भी मेजर इशू एपेडा के बहुत से, मैं कोलकाता एपेडा ऑफिस में देखता हूँ बहुत से कंप्लेन है जो एक्सपोर्टर आते हैं कि सर मैंने यहाँ एक्सपोर्ट किया मगर वो दूसरी कंट्री का था, उसने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया और मुझे नोटिस आ रही है। तो जो भी नया एक्सपोर्ट प्लस उसी तरह आपको कंट्री वाइज है। तो जब मैं झारखंड के संदर्भ में फिर आता हूँ तो मैं झारखंड से स्टार्ट किया कि चलो हम कुछ प्रोडक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने चालू किया। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ ST/SC पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अच्छा कर रही है, राज्य सरकार भी अच्छा कर रही है, और एपेडा द्वारा बहुत से रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जो फार्मर लोगों को इंकरेजमेंट किया जाता है कि आप आओ और एक्सपोर्ट करो। ये प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात थी, ये मंच पे मैं इसलिए आया, मैं सर से चाहता हूँ कि मैंने गुवाहाटी में, अंडमान निकोबार में, हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड मैंने बायर एंड सेलर मीट किया है। तो एक ऐसा बायर एंड सेलर मीट झारखंड में भी होना चाहिए। जब आप बायर एंड सेलर मीट होते हैं, मैंने एपेडा को भी दिखा है, चेयरमैन को भी मैंने पहले बोला है, और जब भी मुझे होता है तो मैं जाता हूँ सबके पास और उनसे ये बात कर, एक बायर एंड सेलर मीट एक रिक्वायर्ड है झारखंड के लिए। उसका फायदा ये होगा कि जो नए, मेरे जैसा एक्सपोर्टर है जो सब जगह चल जाता है, जो रांची से दिल्ली आ सकता है हर कोई नहीं आ सकते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, जो एक पैसा लेके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक बायर सेलर मीट आप झारखंड में करो, जहाँ पे आप किसी भी कंट्री से बायर्स लाए और यहाँ के जो वहाँ के जो फार्मर है, उसके बाद सरकार FPO को प्रमोट करी। बहुत से FPO FPC है जो काम करते हैं, मेरे पास है कि सर हम तो फार्मिंग कर ले रहे हैं मगर एक्सपोर्ट कैसे करें। तो जो FPO के पे इतना गवर्नमेंट की तरफ से कि आप FPO बनाओ, FPO पे काम करो, तो FPO भी अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेगी। पहला सवाल है कि मार्केट, जो सबसे बड़ा, मैं मार्केट, अगर मैं एक मेरी कंपनी जो ऑल सीजन फार्म सोल्यूशन में किसानों से आज बहुत सालों से जुड़ा हूँ, तो मुझे एक लगता है कि जो मिसिंग लिंक है वो मार्केट का है। फार्मर, हिंदुस्तान के फार्मर बहुत मेहनती है, कुछ भी उगा सकते हैं, मगर सबसे पार्ट है मार्केटिंग। तो हम लोगों को सबसे पहले मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा और प्रोडक्ट, तो जो FPO के साथ हो या फार्मर के साथ हो या एग्रीकल्चर के दूसरे ग्रुप्स के साथ है, तो मार्केट लिंकेज कराना है। तो जो एपेडा द्वारा जो और दूसरी संस्था द्वारा जो बायर सेलर मीट होता है, ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसी तरह FPO के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके उनका प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर चाहे तो वो ट्राइबल्स एरिया में आके ट्रेनिंग करा सकते हैं। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि लोगों को आप जब उनको एक्सपोर्ट बोलोगे वो आपको देखेंगे। मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, जब आप बोलोगे कि एक झारखंड के गढ़वा का प्रोडक्ट अगर दुबई जाएगा तो सोचते हैं अरे सर कैसे जाएगा, मुझे तो वहाँ की मार्केट में लेके जाने के लिए मुश्किल होता है, तो ये आप प्रोडक्ट कैसे भेजोगे। मगर अगर आप इस जो सरकार इतना पैसा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा लगा रही है, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ कि जो ज़मीन पे हो रहा है, जिस पे हमको इम्प्रूव करना है। मैं अनोखो सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ, बहुत दूर दूर तक देख चुका हूँ, मगर मेरा हमेशा ये रहता है कि हम उस लेवल पे काम करें जहाँ पे हमको रिजल्ट ओरिएंटेड हो, हम 50 बिलियन से 100 बिलियन हो और नए स्टेट ऐड हो। वही पुराने स्टेट से अगर आप काम करें, क्योंकि पूरे भारत के जितने स्टेट है सब एक है और सबको मिलकर एक साथ काम करें तो हम डबल नहीं, हम 3 गुना हो जाए। किसान की आय भी दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, चौगनी भी हो सकती है। मगर उसके लिए हमको जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे चोट करना होगा, वहाँ पे काम करना होगा। हमको सबसे पहले फार्मर को उस लेवल का नॉलेज देना होगा, सबसे पहले FPO से काम करना होगा। मिसिंग लिंक जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रेडिंग सेंटर, शॉर्टिंग सेंटर, जो प्रोडक्ट आते हैं उनके ग्रेडिंग शॉर्टिंग सेंटर नहीं है। अगर आप उस स्टेट से करना चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, आप डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाके सेलेक्ट करिए। अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो पॉलिसी उस स्टेट की, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट टमाटो है, मगर वो डिस्ट्रिक्ट में अगर टमाटो नहीं होता आप डालोगे तो डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जितने लोग यहाँ इंजीनियर बैठे हैं, सर मल्होत्रा सर तो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, सर को भी बहुत अच्छा है, बजाज सर ने भी बताया। तो आपको जब जिस तरीके से भी एक्सपोर्ट का जो एक पूरा टर्मिनोलॉजी है, उसी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम नए स्टार्टअप जोड़ सकते हैं, नए फार्मर्स लेके आ सकते हैं, नए स्टेट आप उसमें जुड़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार द्वारा बहुत काम हो रहा है। मैं गुवाहाटी भी सेमिनार में गया था 2019 में, वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट से मैंने स्ट्रॉबेरी का फार्म भी विजिट किया। मैं सरकार की तरफ से अंडमान निकोबार भी गया था, जहाँ पे अंडमान निकोबार के प्रोडक्ट्स को भी
एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान हो रही थी, तो मगर सबका ये था कि सर यहाँ ट्रेनिंग हो, यहाँ तक लोग आए, हमको प्रोडक्ट की नॉलेज हो, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि किस तरीके का प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, शॉर्टिंग कैसी होगी, उसकी ग्रेडिंग कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, और जो नए एक्सपोर्टर है वो किस तरीके से। Well, Mr. Abdul, you have given very interesting points, but I think audience would like to ask some questions. Yeah. We have kept space for Yeah. for discussion, and some questions will be like, and then you can give some reply to this. Okay, sir. So thank you so much for sharing the Okay, sir. experience Thank with you us very much, sir. related to Jharkhand. So FPO really, that's a good concept which you have mentioned. FPO now, about more than 30 FPOs have been already established in Jharkhand state only, I am Yes. telling you. So here grading sorting unit there is a provision under the National Horticulture Mission program, and integrated cold chain is now being promoted. So my request is that through your association or members you need to send this message that they should take benefit of that scheme, and this the budget whatsoever is allocated for Jharkhand, it remains unutilized every year. So kindly take up this issue with your association. Yes, sir, I am doing the same. So this infrastructure build up that is very important. Please, thank you. Thank you very much. So now we have the next panelist available with us. I request Vijay Satanaji to share his views. I would like to flag few questions because this is a matter which relates to the states in empowering the export performance. So would like to know from you that here how we can increase the greater involvement of the states in augmenting exportable production, and then further what kind of impediments are there which are occurring, and why this scheme is not being clicking in few of the states which APIDA has started, and further we would like to know that how we can attract this private investment in export-oriented activities, and then single supply chain, how we can maintain. These all are the interrelated questions we would like to have answer from you. Thank you, sir. जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम बना देते। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इज नॉट समथिंग कि आपने सोचा और हो गया। एक्सपोर्ट में सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग ये है, जैसे आपको घर से यहाँ आना था तो आपको पता था कि जाना कहाँ है, और फिर आपको पता था कि साधन से जाना है, और फिर आपको ये पता था कि यहाँ पहुँचने के रास्ते में रूल कहाँ क्या क्या है, कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, कहाँ गाड़ी को रोकना है, कहाँ स्पीड ब्रेक करें तो स्पीड को कंट्रोल करना है, अगर आपको सेफली यहाँ पहुँचना है। नहीं तो अगर आप बगैर सोचे समझे चलते तो मुश्किल हो जाए। और जो लोग बाहर से आए हैं उनके पास भी साधन था कि आपको अगर खुद समझ नहीं थी तो आपका जीपीएस ऑप्शन, आप एयरपोर्ट से उतरे और यहाँ का जीपीएस डालें, आपको टेक्नोलॉजी साथ दे सकती है कि कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, और आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बिजनेस भी वही, आप अगर ये सोचें कि मैं झारखंड में हूँ, राजस्थान में हूँ, गुजरात में हूँ, पंजाब में एक्सपोर्ट करूंगा जी, भैया दिल्ली तक तो बेच लो पहले। हमने कभी दिल्ली में नहीं बेचा, अमृतसर में नहीं बेचा, पटियाला में नहीं बेचा, हम सीधा एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आजकल फैशन है। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि बाजार को समझिए। अगर हम दिल्ली बॉम्बे के सुपरमार्केट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ की ना आपको भाषा समझ है, ना आपको वहाँ का टेस्ट पता है, ना आपको वहाँ का रास्ता पता है, लेकिन वहीं जाएंगे। तो टूरिज्म के लिए जरूर जाइए, लेकिन व्यापार को टूरिज्म मत बनाइए, नुकसान आप ही का होगा। तो पहला स्टेप मेरा आप सबसे ये है, और स्टेट गवर्नमेंट से भी यही है कि एक्सपोर्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी को भी दिखाना पड़ता है हमने जी एक्सपोर्ट कर दिया। मेरा ये कहना है कि क्या जो हरियाणा से ग्रेप, महाराष्ट्र से ग्रेप आ रहा है या प्याज आ रहा है और जो बाकी जगह से आ रहा है, कैन यू कॉम्पीट इन दिल्ली? पहले उसको समझो तो सही। आपको दिल्ली के सुपरमार्केट ही बता देंगे, रिलायंस वाले और बाकी सुपरमार्केट समझा देंगे कि आपकी कमियां कहाँ है। स्टेप 1 पहले उसको तो सीख लो।
उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आपने रिलायंस में अपने ब्रांड में माल बेचना शुरू कर दिया तो अब आप आगे की सोचिएगा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम सीधी लंबी छलांग लगाएंगे और फिर कहेंगे साहब हम डूब गए कि सरकार की गलती। तो फर्स्ट स्टेप इज, जिसको हम लाइफ में कहते हैं, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएशन। आप जब कॉलेज में आते हैं, फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो पहले आपको 10वीं पढ़ाई जाती है, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट। सीधा पीएचडी नहीं देते ना। आपको जब मेरे को तो अंग्रेजी पढ़नी आती है, पीएचडी दे दो, उसमें तो पढ़ना ही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएशन। आप वक्त के साथ गलतियों के साथ सीखते हैं, लेकिन हम लोग गलतियां करने से डरते हैं और सीखना तो चाहते हैं। तो जो भी आदमी एक्सपोर्ट करना चाहता है, पहले मेरा उनसे निवेदन ये है कि आप इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, पैसा आपके पास फालतू है, आपको हिंदुस्तान पसंद ही नहीं है, डॉलर में ही कमाना है, रुपए में कमाना ही नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, मैं उसमें मना नहीं करता। या आपका कोई बाहर विदेश में हो, कहते तू भेज दे, मैं देख लूंगा सब कुछ, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला स्टेप है सीखने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा कि दुनिया सिर्फ एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप हिंदुस्तान के 30 देश में, 30 राज्यों में नहीं बेच पा रहे, तो दुनिया के 180 देशों में कहां बेचना है, पहले वो डेस्टिनेशन तो ढूंढो, फिर वहां पूछो तो सही कि उसको क्या चाहिए। हमें लगता है अल्फांसो बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा आम अल्फांसो है। कोई नहीं खाता, इतना मीठा है, वो मैक्सिकन आम खाते हैं। तो कहने का मतलब है हर एक का टेस्ट अलग है। दुनिया जो खाती है शायद आपको पसंद नहीं आए, आपका टेस्ट अलग है। आप यहाँ बहुत मिर्ची खाते हैं, दुनिया नहीं खाती। आप यहाँ फ्राइड आइटम खाते हैं, वो उबले हुए खाते हैं। आप उनकी नीड समझिए। आप कहते नहीं हम आम बेचेंगे। मेरे को ये बताइए, पूरी दुनिया में कितने समाज में लोग आम चूस के खाते हैं? वहां हर आदमी फ्रूट खाता है जो छुरे काटी से खाया जाता है। आम छील के दिखा दो छुरे काटी से। इसीलिए वो खाते हैं केला, वो खाते हैं अंगूर, क्योंकि उसको आप फोर्क से खा सकते हो, नाइफ से काट सकते हो। आम कैसे खाओ? ईटिंग हैबिट्स भी सीखनी पड़ेगी। सो ये एक्सपोर्ट सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आपको बाजार में उतरना है तो एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है कि कंटेनर भरा और निकल गया। दैट्स नॉट एक्सपोर्ट। वो एक वंस इन अ व्हाइल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। जब तक आप वहां के कानून नहीं समझोगे तो आपको पहले तो बॉर्डर पे रोक देगा। बॉर्डर पे निकल गया, मान लीजिए कानून भी ठीक थे, वहां का टेस्ट नहीं आपको समझ में आता, शेल्फ लाइफ पड़ा रहेगा, माल शेल्फ पे बिकेगा नहीं, फिर वो स्क्रैप पे जाएगा, अगली बार से ऑर्डर नहीं आएगा। तो जो आपने पूरी मेहनत करी, अपीडा ने सपोर्ट भी कर दिया, भारत सरकार ने सब कुछ भी कर दिया, दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा। फिर आप कहोगे हम क्या करें, मार्केट खराब है। हमारे एक बहुत अच्छा तरीका है कि मेरे को आज तक कोई एंटरप्रेन्योर नहीं मिला कि आई स्क्रूड अप माय बिजनेस। कानून खराब, सरकार खराब, वियतनाम वॉर हो रहा है, यूक्रेन वॉर हो रहा है, कोरोना हो रहा है, सब कुछ खराब है मेरे अलावा। मैं भगवान हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन का माइंडसेट ये, सब मेरी क्या गलती, सरकार को करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत आसानी से अपनी गलतियों को दूसरे पे डाल देते। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने सब कुछ कर दिया, वहां भी हमारे जैसे लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मरे स्वर्ग तो मिलेगा नहीं। जब एक्सपोर्ट करना है तो पहले उस बाजार को सीखो, वहां के कंज्यूमर्स को सीखो, वहां की मजबूरियां सीखो, उन मार्केट में किस किस तरह से प्रोजेक्ट रिजेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ये इंटरनेट पे दिया हुआ है। हिंदुस्तान में मैंने आपको लिस्ट दिखाई कि 200, 300, 400, 500 कंसाइनमेंट रोज रिजेक्ट हो रहे हैं। कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद भी हम नहीं सीखे। इंफॉर्मेशन इज नॉट इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन हम कहते हैं मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सरकारी अधिकारी पढ़े और मुझे आके पढ़ाए, ट्यूशन दे, और उसके बाद मैं कहूं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे गांव में घर में आके पढ़ाओ। अरे भाई अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप लोग तैयार हो, मैं ऑनलाइन वीकली प्रोग्राम करता हूँ, देखता हूँ कितने लोग ज्वाइन करते हैं कि क्या क्या कानून बदल रहा है। मैं खान साहब कहता हूँ लेट्स क्रिएट ए फोरम ऑनलाइन, हम वीकली प्रोग्राम करेंगे, आप में से कितने ज्वाइन करें। तो कहने का मतलब है, और मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आप घर से चल के आओ, आप पेड़ के नीचे बैठ के मोबाइल में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं।
कहने का मेरा मतलब ये है कि सीखे बगैर गुजारा नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग पढ़ना भी और कैपेसिटी बिल्डिंग भी, जहां भी दिक्कत आ रही है, लर्निंग इज द स्टेप फॉरवर्ड फॉर योर एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपको लगता है लर्निंग इज बहुत मुश्किल है, ट्राई इग्नोरेंस, उससे काम चलता हो। अगर मूर्खता से एक्सपोर्ट हो सकता है वो भी कोशिश कर लो, सीखने एक्सपोर्ट हो सकता है वो भी कोशिश कर लो, आपको समझ में आ जाएगा फायदा क्या। तो मुश्किल नहीं है, लाइफ इज ऑन कॉमन सेंस बेसिस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जो आप करना चाहते हैं बस उसको ईमानदारी से सीखना शुरू कर दो। बहुत लंबी छलांग मत लगाओ, पहले दिल्ली को कैप्चर करो, बॉम्बे कैप्चर करो, फिर बांग्लादेश करो, आसपास के देश करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो ताकि आपका नुकसान नहीं हो, आप हाथ पैर ना चलाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से दुनिया में पैसा कमाया जाता है और बर्बाद करना बहुत आसान है। धन्यवाद। सर, because laws are not favoring the farmer and farming. एक मिनट, देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी बहस का मुद्दा भी नहीं है, हम अलग से इस पे चर्चा कर सकते हैं, इस पे पूरा डिस्कशन हो सकता है कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाए। दुनिया इज ए ट्रेसेबिलिटी, कंज्यूमर एजुकेशन भी हमारी जिम्मेवारी है। आज हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम जब बाजार में जाते हैं माई प्रोडक्ट इज बेटर देन माई कॉम्पिटिटर, तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि जो हम अपने प्रोडक्ट का लेबल बनाते हैं, जो हमारा कंज्यूमर उसको एजुकेट करें कि जिसको आप कह रहे हो ऑर्गेनिक, और वो फैक्ट्री ऑर्गेनिक है या हाइड्रोपोनिक है या जो भी है, दोनों का अधिकार है अपनी बात कम्युनिकेट करने का। कैसे करना है, क्या रास्ते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आई हैंड ओवर। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, इट बीन आंसर्ड डिफरेंटली। हाँ, मैं ऐसा लेट्स फ्लो विद द प्रोग्राम, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज फार्मर इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट इट, उसकी टोटल ट्रेसेबिलिटी, टोटल ट्रांसपेरेंसी है नहीं, और ये एब्सोल्युटली फ्रॉड चल रहा है, इसको कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहता। ये फार्मर के बारे में सारा हो रहा प्रोग्राम, फार्मर का कहीं नामो निशान भी नहीं है, एंड ही इज नॉट बेनिफिटेड इवन 1%। चल ठीक है, आपने जो फैक्ट है बताने की कोशिश की है, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू आंसर इट, और let us know the exact problem for this. Let us finish this session and we'll talk again. So now, thank you so much, Vijay ji, for throwing light on this part, and you have mentioned many practical points, and everything is possible. Nothing is impossible in this earth, but we need to follow the regulations. The most important thing is that what kind of regulations, law of the country. So that's really required to be pursued into it. So in this next series, we have Mr. Ganesh with us. So he is from Shloka's Agro Private Limited, Pune. Yeah, there are several commodities which are related to plantation crops, and country has its strength for growing several plantation crops, either it's a coconut or oil palm or areca nut. Many things are there, and even nursery activities are also pursued for multiplication of the good plants, and those good plants should reach to the farmers or to the grower. So I think Shlokas is having a strength of such kind of things. So we would like to hear from him, and time available with us is for just 2 to 3 minutes for each speaker now, because we have some limitation. We have already crossed the time limit which was allotted to us. Yes. Hi, good afternoon everyone. I am Mr. Ganesh Babar from Maharashtra, and Shloka's Agro is my company. फर्स्ट मैं ICAP का थैंक्स हो, खान सर का भी आभारी हूँ, उन्होंने मुझे ये मंच पे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली हम अभी एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, इंडिया में इतना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, पहला उसका सोचना चाहिए। इंडिया में क्या नहीं बिक सकता है, पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया को दिख रहा है मार्केटिंग के लिए, पर हम अभी एक्सपोर्ट का बाहर का सोच रहे हैं। तो एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री को ही माल सप्लाई करना, ये एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट मतलब हमको बेचने का है, तुम डोमेस्टिक में बेचो, तुम बाहर बेचो, ये इम्पोर्टेंट है। अभी एक्सपोर्ट में इंडिया में एग्रीकल्चर में इतना अपॉर्चुनिटी है। अभी नींबू जो है, लेमन जो है, 150 करोड़ लोग हैं, 1 वीक में एक नींबू भी सब लोगों ने खाया, तो 150 करोड़
नींबू की रिक्वायरमेंट इंडिया में, हम पोटेंशियल देखते नहीं। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और सेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का, हम वो देखते नहीं। गवर्नमेंट में भी पॉलिसी ऐसे नहीं है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना बिक रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक्सपोर्ट में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज है, उसके ऊपर हम ध्यान फोकस करेंगे। अभी पुराने सब हो गया, बहुत अल्पांसो है, लेकिन अल्पांसो को हेडलाइन को हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो नए अपॉर्चुनिटीज में कोको शुगर है। ये कोको शुगर क्या है, कोको शुगर है ये कोकोनट का साग है, और ये फ्रेश फ्लावर से साग निकलता है, और वो साग को वाटर उसमें से इवेपोरेट करके उससे शुगर बनता है, इससे कोको शुगर बनता है। तो कोको शुगर जो है ये वर्ल्ड में अभी बहुत बड़ा मार्केट है। यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में अभी $2 बिलियन का कोको शुगर का मार्केट है, लेकिन इंडिया अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये छोटे छोटे देश का इसमें 90% योगदान है, ये यूरोप को सप्लाई कर रहे। तो हम क्यों नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। इंडिया में कोकोनट बहुत अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है। अभी साउथ में तो पूरा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, कोकोनट का बहुत बड़ा ग्रोइंग है। तो प्रोसेसिंग के ऊपर हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है नेचुरल स्वीटनर को देख रहा है, नेचुरल प्रोटीन से, नेचुरल स्वीटनर से, ऑयल है, अल्टरनेट ऑयल से, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब दुनिया नेचुरल स्वीटनर के ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर जो है वो लो जीआई है उसका, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स है उसका, तो उसकी वजह से 80 के बाद में ब्लड शुगर नहीं ग्रो होता है। तो नेचुरल स्वीटनर में अभी स्टीविया है और ये हनी है, लेकिन कोको शुगर जो है ये सबसे आगे है। तो कोको शुगर में 80% अपॉर्चुनिटी ये नेचुरल स्वीटनर का कोको शुगर में है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोको शुगर जो है उसका एक ही प्लांट अभी इंडिया में नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट में थोड़ा फोकस करके अभी कुछ तमिलनाडु में, केरला में कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ने ध्यान देके उसको थोड़ा बेस पे चालू किया है, लेकिन उसको प्रोफेशनल लेवल से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइप की पॉलिसी बनना चाहिए, और फार्मर में भी सोचना चाहिए फार्मर लोगों ने कि हम नया क्या कर सकते हैं और पोटेंशियल किस में ज़्यादा है। ये पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर लोग सोचते नहीं है। अपने बाजू वालों ने लगा दिया तो हम लगाते हैं, किसी ने पेपर में किसी ने छाप दिया ड्रैगन फ्रूट से 35 लाख रुपए 1 एकड़ से मिल गए तो हम ड्रैगन फ्रूट लगा देते हैं। लेकिन पोटेंशियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें बिक कितना जा रहा है। और समझो 1 लाख लोगों ने लगा दिया तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा क्या, 3 साल के बाद क्या पोजीशन होगा, 5 इयर्स के बाद क्या पोजीशन होगा, 10 इयर्स के बाद क्या पोजीशन होगा। तो ये सबसे सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कोको शुगर जो है ये एक अच्छा नया क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उसके ऊपर हम बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। दूसरा जो है अवेकाडो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी मैक्सिको जो कंट्री है वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा मैक्सिको सप्लाई कर रहा है। अभी यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, ये भी प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान दे रही है, न्यूट्रिशंस के ऊपर ध्यान दे। अभी कोरोना के बाद में न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा डिमांड मिल रहा है, तो एवोकाडो में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन डिमांड है। लेकिन आपको एक सुन के हैरानी हो गई कि एवोकाडो जो है उसको टेस्टलेस है, तो टेस्टलेस है फिर भी इतना प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, ये फ्रूट इतना क्यों लोग खा रहे हैं। जो टेस्टलेस है यही उसका पावर पॉइंट है कि उसका टेस्टलेस है, इसलिए उसमें कोई भी टेस्ट ऐड हो जाता है, तो वो तीखा बन जाता है, तो स्वीट बन जाता है। उसका मिल्कशेक करने का है, शुगर डाल दिए तो स्वीट बन जाता है। तो ये एवोकाडो में बहुत अच्छा प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है कि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। एवोकाडो का जो सीड है वो सीड से ऑयल आता है, उससे बनाते हैं। ऑयल को भी बहुत उसका ग्लोबल मार्केट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ऑयल में। तो एवोकाडो एक बहुत अच्छे पोटेंशियल क्रॉप है जो इंडिया के लिए हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। और वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको ग्रो कर रहा है तो इंडिया में ग्रो होगा क्या। तो मैक्सिको का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो इंडिया के 80% एरिया में एवोकाडो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, हो सकता है। और
मॉडरेट ग्रोइंग में भी ग्रो होने वाली वैरायटीज बहुत अच्छे डेवलप की है। तो एवोकाडो को फार्मर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एवोकाडो में हम फोकस कर सकते हैं। तीसरा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, एक टकीला बोल के एक प्लांट है जो मैक्सिको में ग्रो होता है, उसको इंडिया में आगेव बोलते हैं। तो ये आगेव जो है, ये आगेव भी नेचुरल स्वीटनर में हम यूज कर सकते हैं कि उससे शुगर बनाते हैं। तो मैक्सिको में बहुत इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। और ये आगेव जो है एकदम स्टर्डी क्रॉपिंग पैटर्न है। हम बाउंड्री पे लगा दिए, उसमें बैरन लैंड में लगा दिए जिधर बारिश अच्छा 5-6 मंथ ग्रो हो रहा है, तो उधर ही आगेव ग्रो होता है और 4th ईयर के बाद में उससे हम शुगर निकाल सकते हैं। दूसरा है ऑलिव है। ये ऑलिव भी बहुत अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको फोकस किया है ऑलिव को, और ऑलिव ऑयल जो है ये वर्ल्ड ग्रोइंग डिमांड है ऑलिव ऑयल का। और क्लाइमेट जो है करीबन 30-40% इंडिया का जो एरिया है वो क्लाइमेट इसके लिए ऑलिव के लिए सुटेबल है। डेट पाम एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डेट पाम में भी अभी गुजरात जो है, गुजरात में बहुत अच्छा डेट पाम का प्रोडक्शन हो रहा है। उसमें नई नई वैरायटीज की जरूरत है। उसमें बाहरी बोल के एक वैरायटी डेट पाम में, वो अभी फ्रेश डेट के लिए यूज हो रही है और वो बहुत अच्छा फ्रेश के लिए लोग यूज कर रहे हैं। तो नए नए प्रोडक्ट में फोकस करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट में भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि नए प्रोडक्ट को हम कैसे फोकस कर सकते हैं। दूसरा है, अभी मेरा कंपनी अभी इंपोर्ट कर रही है एवोकाडो का प्लांट मैक्सिको, लेकिन फार्मर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं बनती, बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। तो फार्मर्स को ग्रो करने का है तो फार्मर्स के लिए पॉलिसीज ऐसा बनना चाहिए कि इजी उसको समझना चाहिए क्या कर सकते। अभी कोई प्लांट गवर्नमेंट बोल रही है प्रमोट करो, नए वैरायटीज लाओ इंडिया में, लेकिन वो नए वैरायटीज लाने में इतनी परेशानी है, मैं 1 साल से 100 डॉक्यूमेंट उसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है। तो पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए कि इजी पॉलिसीज हो और वो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सब फार्मर्स को और सबको एक ही कहने का है कि एक्सपोर्ट के लिए नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Ganesh. You have mentioned about the quantity of this avocado, date palm, and then tequila also you mentioned about this tequila. In fact, it's a agave plant. Agave plant. Tequila wine is also prepared out of it, and it's these all are the products, but these are new to us. So here first we need to focus more on our strength and where we can promote our Make in India. But on another side, we can also have a kind of strategy where government is also thinking that how we can reduce the import. So these are the new products. It could be a future plan, but already some plan is in place, which we call it niche area of excellence, where such products are now being promoted. But there is a shortage of planting material. Really, we are looking into it, and we are promoting import of such plants through our, we have a system in the ministry where we have export-import committee for planting material, where the permission is given for this. So we'll really speed it up for the new crops which we want to do. Thank you so much for your points. So now I'll request Mr. Raja Ram Tripathi, who is the chairman of Central Herbal Agro Marketing Federation of India. Yes, there are several products because this association also deals with the organic farming as well as herbal farming. So this is a kind of concept. The representative from this association, and this association is dealing with this organic farming and herbal farming. And what kind of approach is being followed by you, we would like to learn, and what kind of strategies further we need to adopt. Definitely we would like to see your plan. Thank you, Mr. Saab. कितने समय में मुझे खत्म करना है? 2 से 3 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट तो सतारा साहब की क्लास ने ले लिया, तो नेचुरली किसान को 3 मिनट मिलेगा ही। इनफैक्ट सतारा साहब ने जो बताया उनसे अप्रिशिएट करूँगा, मजाक की बात कर रहा हूँ। जो लाखों रुपए के जो परफेक्ट फैसिलिटी जो बताई जाती है वो चीज़ उन्होंने बताया, वास्तव में मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन साथ में भी कहना चाहूँगा कि सर जो छत्तीसगढ़ से जैसे मैं आया हूँ,
ग्रेवाल साहब कृषि पंजाब से आ रहे हैं, हमीद आए झारखंड से। ये लोगों को जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो यहाँ इसलिए आते हैं, लेके अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि शायद यहाँ कोई उसका हल मिले। इतने हाई अथॉरिटीज एग्रीकल्चर के आप लोग होते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो आप लोग का उत्तर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोटी कोई मांगे तो फ्रांस की रानी तो ने कहा था कि अरे रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते, ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिए वहाँ। आगे मैं अपनी दिल की भावना है मेरे बताता हूँ। अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर का एक किसान हूँ। 1967 में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती शुरू की, 2000 में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया और बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड बस्तर दफलाइट क्षेत्र से होने के बाद हासिल किया। ये नहीं कि मैंने अरबों खरबों का एक्सपोर्ट किया। अमेरिका का जो क्वालिटी नाम से इतना स्ट्रिक्ट था, बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, हमने लगातार 3 साल तक एक्सपोर्ट करके हमने हासिल किया उनका जो उनका वेंडर का दर्जा है। तो हमने ये सिद्ध किया कि अगर हम किसान भी चाहें तो क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई चेन, ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, लेवलिंग सब हम कर सकते हैं मिलकर। ये कोई इतना कठिन नहीं है जैसा कि सौदाना जी ने देखा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस सदन को मेरे अनुभव से काम आई। अगर कहेंगे तो हो सकता है 10-15 सेकंड ज़्यादा खर्चा हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। सर, दिक्कत ये है कि सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसीजर में इस फॉर्मेट में भारत का किसान नहीं फिट हो रहा है। जो फॉरेन की कंपनियां आई हैं और बड़े बड़े किसानों के लिए तो ये है, हम जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है। यही कारण है कि मूंगफली, सरदार साहब जानते हैं, मूंगफली एक बार हमारी रिजेक्ट हुई, हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा था, बड़ी मुश्किल से हम ब्लैक लिस्टेड हुए, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने लॉबिंग करके 3 साल बाद फिर कोशिश की कि हमें एक्सपोर्ट करने का मौका था। 3 साल बाद जब हमारा कंसाइनमेंट दोबारा गया, दैट वाज अगेन रिजेक्टेड, फिर रिजेक्ट हो गया। आप जानते हैं यही कपास के साथ हुआ। हम कोई बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में नहीं जाने जाते विदेश, मैं भले छोटा सा रहा, लेकिन हमारी छवि बहुत ही खराब है। क्वालिटी और कमिटमेंट बड़ा मसला है। 60 मीट्रिक टन मोरिंगा पाउडर का एक आर्डर आता है, वो जितने इंडिया के एपीडा की लिस्ट में हर एक को भेजता है कि हमें 60 मीट्रिक टन चाहिए, आपके पास कितना है। यहाँ से जवाब जाते हैं मेरे पास 200 मीट्रिक टन है, मेरे पास 150 मीट्रिक टन है। सरदाना साहब, आप यकीन करोगे हमने 6000 मीट्रिक टन में हमारा प्रोडक्शन है ये चाहिए। वहाँ लगता है कि यहाँ तो भरा पड़ा है, रेट डाउन हो गया, ये बड़ा दिक्कत। और हर कोई कहता है हम वहाँ 15 दिन में दे देंगे, उसके बाद सोचता है मैं रिसोर्स करूँ और पैसे बना लूँ। क्वालिटी का तो इशू ही नहीं आ रहा है। क्वालिटी साहब जैसा आप चाहो तो वैसा हम देंगे, नहीं यहाँ पर अगर हमें यहाँ एक्सपोर्ट को कहीं लेके जाना है तो इन चीज़ों पे तो देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रेट बड़ा इशू है सर। काल में एंडोग्राफिक फेनिकुलाटा बहुत डिमांड है, कोरोना के बाद तो इसकी और डिमांड बढ़ी है। अब एंडोग्राफिक फेनिकुलाटा का इंडिया का जो रेट है 35 रुपया से 50 रुपये किलो देना चाहते हैं सूखा, और 1 किलो सूखा तैयार करने के लिए 12 किलो पत्ते को सुखाना होता है। 12 किलो पत्तियों तोड़ने का सुखाने का कॉस्ट लगभग 200 रुपया 150 रुपया पड़ेगा। 500-600 रुपया में एक्सपोर्ट होता है किलो में, और किसान के लिए कोई भी बंदा 50 रुपया से ऊपर देने तैयार नहीं, भले और राजा राम त्रिपाठी को 50 रुपये। 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हो या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, अगर जो प्रोड्यूसर है आपका जो उगा रहा है उसको भी अगर हम इस प्रीमियम का थोड़ा सा हिस्सा नहीं देंगे, इस केक का थोड़ा सा हिस्सा नहीं देंगे, तो प्रोडक्शन आपका सप्लाई चेन मजबूत नहीं होगी। क्वालिटी की बात आप करते रहिए, क्वालिटी मुंह से बोलने से नहीं आता, क्वालिटी अपने आप होती है अगर होती है तो। एनीवे बहुत सारी बातें थी, अब 3 मिनट में तो केवल आप मेरा चेहरा देख लो, यही हो सकता है। मैंने बड़ी तैयारी की थी, एक PowerPoint प्रेजेंटेशन भी लाया था आप लोगों के लिए हफ्तों मेहनत करके। मैंने ट्रेड शीट एक्सपोर्ट किया था जारी करके। मिस्टर राजाराम जी, आप बिल्कुल नाराज मत होइए, और आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, और आपका स्वागत है। दूसरा क्या है कि आपको बस इतना जरूर बता दूंगा कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर्स ने बनाया एक पैनल डिस्कशन के हिसाब से बनाया, और उस पैनल डिस्कशन के हिसाब से
हम आपके जो व्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और हमने आपके सुने भी हैं, हमने नोट भी किया सभी पॉइंट का। तो वो अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मल्होत्रा साहब, आपकी दयालुता और सज्जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असल में 1.25 घंटे के कार्यक्रम में 5 लोगों को बोलने का था, तो मैंने सोचा 15 मिनट का टाइम था, इस हिसाब से तैयारी किया था। कोई बात नहीं, मैं आपकी सबकी कीमत समझता हूँ, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। इस चीज़ पे मैं जरूर थोड़ा सा ले आऊँगा कि RBI की जो गाइडलाइंस है उनमें जैसे सज्जन ने कहा कि अगर आपका एक्सपोर्ट हो गया, पैसा नहीं होता, तो हमारी स्थिति थोड़ी उल्टी है। इसमें कई लोगों के काम आए, शायद मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ सर। तो मैंने फ्रेश लीफ, हर्बल लीफ का एक्सपोर्ट किया US, और वो अमेरिका भेजने के लिए जब रायपुर एयरपोर्ट भेजता था तो फ्रेश बढ़िया पैकेज करके सब भेजता था और पूरा कोल्ड चेन में लेके आते थे, लेकिन वहाँ से एयरपोर्ट में 2 घंटे पहले लेते थे और बाहर रख देते थे, तो वहाँ भी खराब हो जाता था। तो 2-4 बार रिजेक्ट हो गया मेरा माल, इंडिया से बाहर ही नहीं गया क्योंकि पहले ही मुझा गया। तो रायपुर में दिल्ली में इंस्पेक्शन कराया हमने और विड्रा कर दिया, सो दैट वहाँ जाके ना हो। लेकिन हमने पेमेंट टर्म्स ये रखा था कि अगर रायपुर उनको रखा था कि क्योंकि हमारी मोनोपोली की शर्त में कि अगर रायपुर से दिल्ली पहुंचने के बाद वो जाने के काबिल नहीं है, हम फुल एडवांस पेमेंट लेके ही देंगे और पेरिशेबल आइटम है, अगर आप इसे तैयार है, आपका आदमी रायपुर में आएगा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद खराब होगा, मेरी गलती नहीं। तो साहब मैंने पहले पेमेंट ले ली उनकी। अब यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, मतलब हमने नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया कि अगर मुरझा गया है तो फ्रेश जो एक्सट्रैक्ट निकालना है हम नहीं निकाल पाएंगे, स्पेशल टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं फ्रेश का, तो अब नहीं निकाल पाएंगे तो और हम उसका भाड़ा क्यों बेयर करें, तो बेटर ये है इसको यहीं स्टार्ट करें। तो मुझे तो पैसे मिल गए था, लेकिन उसके बाद RBI की बार क्वेरीज आने लगी कि भैया आपको पैसे मिल गए, वो बिल कहाँ, आपने अमेरिका को भेजा, उस ट्रांसपोर्ट का बिल, ये सारा कहाँ है, आपके पास पैसे क्यों है। हालांकि मैंने फिर दिखाया कि साहब ये टर्म्स थे, हमने एडवांस पेमेंट इस बेस पे लिया और ये होली का त्यौहार पड़ गया, इसलिए बीटा वाले या इंस्पेक्शन 2 दिन नहीं हो पाया, इसलिए 2 बार खराब हो गया, लेकिन हमने पेमेंट नहीं की। इस तरह की जो छोटी टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे दूर होंगे वो आप लोग देखेंगे। अब इतनी बड़ी अथॉरिटीज हैं और बस चूँकि मैं चाहता हूँ समाप्त करूँ, मैंने ख्याल से 3.5 मिनट ले लिए। धन्यवाद। शुरू में आपकी रिजेक्ट भी हुई, उसके बाद फिर एक तरह से अपने एक्सपीरियंस से ही एक लर्निंग थी जिसको कि आगे आप बढ़ा पाए, और गोरिंगा के बारे में बताया, कालमेघ और इन सब चीज़ों के बारे में आपने जिक्र किया और अपने एक्सपीरियंस को हम सब लोगों के साथ साझा किया। थैंक यू सो मच। आई रिमेंबर व्हेन इन ईयर 2013 एक ब्लू प्रिंट बनाया गया था छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर और बागवानी के विकास के लिए, और जिसमें जितने भी हर्बल प्लांट्स हैं उनको बड़ा महत्व दिया गया था, तो उसको रखा गया था। और उस टाइम में चरण दास मान साहब जो है यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर होते थे, और मुझे वो मौका मिला, वो ब्लू प्रिंट प्लान गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी किया था। और मुझे खुशी है कि स्टेट जो है हर्बल एरियाज में काफ़ी उसमें काम कर रही है और एक्सपोर्ट की तरफ भी आप जैसे लोग आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड पॉइंट्स विच यू हैव गिवन। नाउ इन दिस सीरीज we have Devopam Datta, Senior Deputy General Manager, AGI Milk Factories with us. So I would like to ask him to share his views as a panelist. Yeah, you can. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, thanks to the organizers of this lovely summit for having such an august congregation here. Some very senior people from the Government of India, some very senior people from the advisory boards, all the panelists sitting here, ladies and gentlemen, good afternoon. I am Devopam Datta. I head India business with the organization called AGI Milk. It's a $3 billion organization headquartered in Winnipeg, Canada, and in India we are based out of Bangalore. I'm a panel member of
the topic that was to be discussed is quality production, key to sustaining high export growth. The products that the organization that I represent manufactures are more used in the post-harvest on the grains side. We are into rice milling solutions, pulses milling solutions, maize milling solutions, wheat production solutions. There's a lot of discussion that has already been happening on a country level, on state levels, based on different products and the value chain to bring these from the farm to the fork. I've heard Sadhana Sahab speak a lot on various other forums also, and we've kind of shared stages together in other forums also, where these points have been kind of discussed quite a lot. Some numbers which are available on the public domain is from the farm to the fork. What comes up to the fork from what is produced in the farms. There's quite a lot of wastages that happen, intentionally, unintentionally, either due to the type of the grains or the way they are handled. There is quite a scope in terms of adding value here, in terms of storage, in terms of efficient processing, and that's the need of the hour, I feel, that this country can look at. The rice milling industry per se has adopted to technology production about a decade ago, and the way we are looking at rice being produced efficiently here in India is also seeing us being able to export rice for other conditions also, but definitely because of the technology that has been implemented. Flour, wheat, yes, now with the conditions available around, wheat is also an opportunity where exports have happened, but you still see a lot of news items that coming in terms of Turkey not being very happy with the latest consignment of wheat that has gone in, etc. There definitely is a scope for technology to bring in respectability to the Indian exports, as one of our panel members had already spoken of. I think AGI as an organization is making its humble contribution as far as bringing in technology in post-harvest is concerned. And I really hope that processors, the dal millers, the flour millers, and organizations which are into primary and secondary processing adopt technology so that that respectability comes in to the country when it comes to exports. I personally have been involved in projects where APIDA as an organization, as a nodal body, has been very helpful in introducing technology or encouraging processors to bring in technology into their manufacturing processes, and I really appreciate them. One of the points that has been discussed earlier is millets. We've been doing our humble contribution in producing good quality millets, exportable millets in the millet form, in the grain form itself. And I'm very happy to say that quite a lot of organizations that have utilized Miltech solutions are respectable exporters as far as millets is concerned. So the points that were discussed earlier were pretty relevant, and I think technology organizations are available in India to be able to give good solutions, technology solutions as far as grains are concerned. I'd like to keep it crisp that way. Thank you so much, Mr. Devam Dattaji, for your good points which you have mentioned. For many of the crops, you mentioned about the rice. Yes, rice bran is also prepared out of it, and rice bran has its further scope for extracting the oil out of it, and it has its demand in the edible oil category. Then wheat flour, yes, this is the
issue. Wheat flour we already exporting, but these all are the value-added products because it's a value addition which you are doing and providing some technical solutions into it. And already it is in the, I should say, the major objectives which has been already enlisted by the APIDA that we need to promote this value-added agriculture exports, including this focus on the perishable is there. So it's a good point that your organization, your company, they are providing these solutions they are providing for this purpose. Thank you so much for sharing your views to us. So now we are left with the last panelist to hear from him. Mr. Pradeep Trivedi, he is the Managing Director of Neutralis. थैंक यू। यहाँ पे सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है एक मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। मैं 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ टॉपिक रखा गया है कि एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट्स को सक्सेस करने के लिए जो महत्वपूर्ण है। जैसा कि विजय सरदाना जी ने अभी बात कही थी कि हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि प्रोडक्ट और उसका स्कोप। तो मैं 2 बातें बोलूँगा यहाँ पे कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इस पे हमें सबसे ज़्यादा जो है पहले फोकस करना चाहिए। देन वी विल गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। तो पहले इंटरनल हमें जो है ये सारी चीज़ों पे जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो है क्वालिटी में नॉर्म्स हैं और हम कैसे उसको इम्प्रूव करें, प्रोडक्शन कास्ट कैसे कम करें और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैल्यू एडिशन कैसे करें, जिससे कि आज जो हमारा फिगर 50 है वो आगे जा सके। तो इन हाउस जो भी चीज़ें हैं उनको हमें कंपाइल करके आगे बढ़ने के लिए जो है उसकी DNA एनालिसिस तक हमें जाना पड़ेगा। देन वी कैन मेक इट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैल्यू एडिशन एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग की कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे मैं अभी करीब 60,000 फार्मर के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर से। तो मैंने ये जो मेरी जर्नी तो उसमें मैंने यही देखा कि हम उन किसानों को वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ अवेलेबल करवाए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाए जो उसी रिसोर्सेज में वो बना करके यूटिलाइज करके आगे हम तक ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। सेकंड, एक मेरा पॉइंट था, सर ने जैसे बोला कि मुझे एक मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कि जापान से मुझे अभी फ्रेश वेजिटेबल का जो है एक ऑर्डर मिला। अब मुझे ये नहीं पता, एज ए लेमैन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि आप स्टीम स्टेलाइजेशन नहीं कर सकते, आप इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन कुछ सिस्टम होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो वो गाइडलाइन हम अवेयर नहीं है, हमें कहीं से पता नहीं चलती है और हम इधर उधर जो है सर्च मारते रहते हैं। तो राइट अप्रोच क्या है, कौन सी ऐसी संस्था है या कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हमें पता चले और हम उस काम को आगे ले जा सके राइट पर्सन तक, उस प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को परचेज ऑर्डर को कंप्लीट कर सके विद फॉलोइंग नॉर्म्स। सेकेंड क्या है कि जैसे मैं US एक्सपोर्ट करता हूँ, जापान एक्सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि मेरा जापान में रिजेक्ट हो जाता है और US में मेरा माल एक्सेप्ट हो जाता है। उसके रीजन क्या है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स हैं। अब जापान में 179 कुछ उन्होंने हैवी मेटल पेस्टिसाइड की लिस्ट दे दी जो कि लैब से मैं करवा के दिया, उनमें से कोई एक फेल हो गया तो वापस आ गया। तो क्या ये सारे कंट्री या सारे ग्लोबल नॉर्म्स एक नॉर्म्स बन सकता है जो कि सबके पास हो और उसको फॉलो करे, जिससे कि आगे हमें ये चैलेंज जो है फेस करने में प्रॉब्लम ना। थर्ड, अभी विजय सरदाना सर ने अपने लेक्चर में बोला था कि उसके नॉर्म्स हैं, टेस्टिंग है वगैरह वगैरह। तो अभी जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं, जितने यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट और वो बंदा या वो कंपनी वाला उतने टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या यहाँ पर बैठे लोग जो गवर्नमेंट के लोग हैं, क्या मैं उनसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि कुछ ऐसी एक लैबोरेटरी या कुछ ऐसी एक संस्था नोडल सेंटर पे बनाने की कोशिश करें मिनिमम कास्ट पे, जिससे कि हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके और राइट अप्रोच राइट टाइम पे राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। इसी बात के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। Thank you so much, Pradeep ji. So we have noted your point. So now we have come to the end of the first round which we have discussed. So but we are not left with much time, but would like to open it for any question to any of our panelists. ऑर्गेनिक के
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल ट्रेसेबिलिटी इज नॉट फॉलोड, इसलिए सारा फेल है और किसी भी किसान को कोई बेनिफिट आज तक मिला नहीं है, आगे मिलने की उम्मीद नहीं है जब तक टोटल ट्रांसपेरेंसी और टोटल ट्रेसेबिलिटी नहीं आती। एक नया अक्षर इसमें जोड़ दिया गया है नेचुरल, उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर वक्त कुछ न कुछ नया है जिसका पीछे आगा कुछ नहीं है। और ऑर्गेनिक को कितने लोग समझते हैं मैं नहीं जानता, और पीपल हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि सारे का सारा ऑर्गेनिक उठा के लेबोरेटरी में घुसा दिया गया। दैट्स नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल, दैट कुड बी नेचुरल if the terminology is proper terminology is given, but organic has a protocol which is not being followed and law is defective and farmers are suffering. No farm, इसी मार्केट में से लेके और सीधा एक्सपोर्ट किया जा रहा है टेस्ट करके, इट इज नॉट ऑर्गेनिक। इसके इसीलिए बीटा की एक्रेडिटेशन कैंसिल हुई है, उस पर डिस्कशन करना जरूरी है। किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज गिव अस टाइम, प्लीज गिव अस हियरिंग। आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और जहाँ तक बात है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल की, देखिए सर, इसमें मेरा निवेदन है आपसे और मंत्रालय से कि दुनिया में जब भी किसी भी तरह की टर्मिनोलॉजी ट्रेड में इंट्रोड्यूस की जाती है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नोट होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे फूड में हम लोग लिख देते हैं रिच इन कैल्शियम, लो इन फाइबर, लो इन शुगर। एज ए मार्केटिंग क्लेम हम कुछ भी लिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इन चीज़ों के डेफिनेशन की, टर्म्स की डेफिनेशन नहीं है। अराउंड द वर्ल्ड हर फूड लॉज के अंदर आप किस चीज़ को बोलेंगे, लो इन शुगर, रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते अनलेस देयर आर क्राइटेरिया, इट मीट्स दैट क्राइटेरिया। तो यही बात यहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक में है कि हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग एंड ऑल दैट, बट दीज आर नॉट लीगली डिफाइंड टर्म्स। और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि इट हैज बिकम ए मिसनॉमर एंड इट इज एक्चुअली लीडिंग टू फ्रॉड इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आइदर द कस्टमर और द फार्मर। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग रीजन और पॉलिटिकल रीजन और लीगल रीजन, दे मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड, अदरवाइज इट विल क्रिएट मोर मेस इंस्टेड ऑफ द। सर आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, बाहर किसी भी ऑर्गेनिक शॉप में जाओ तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक नेचुरल और एक ऑर्गेनिक। नेचुरल की अभी तक वहाँ भी परिभाषा नहीं है एंड इट कीप्स ऑन रिजेक्टिंग, और हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को इवन बीटा को भी नहीं पता ऑर्गेनिक क्या होता है। आई चैलेंज सर, मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, मेरी बेनती सुन लीजिए, इसको प्लीज समझ लीजिए इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं सर से इसलिए कह रहा हूँ कि सर वाज आल्सो हैंडलिंग हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर कमिश्नर रहे हैं सर, टॉप पॉलिसी पे रहे फ्रॉम ए टेक्निकल साइड, नॉट ए ब्यूरोक्रेटिक साइड, फ्रॉम टेक्निकल साइड। तो मुझे लगता है कि एक विद इन ICR सिस्टम इस पर एक सीरियस डिबेट करवाना चाहिए, क्योंकि मैं जब USA में भी जाता हूँ, साइंटिस्टों से बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी एक एम्बिग्विटी है। देखिए ऐसे है कि नेचुरल उसकी होनी, सुन लीजिए प्लीज, आपको समझ आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक के लिए बोलिए, आपको सब वो नेचुरल कह रहे हैं पर उसकी कोई परिभाषा, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया उनको। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट गॉन देयर एंड सीन इट एंड इट हैज हैड नो इफेक्ट ऑन देम। और उसका और ऑर्गेनिक का 30% का डिफरेंस है and that particular natural is already 50% or 40% higher than the open market over there. And who suffers? Ultimately, all these flaws are affecting the farmers only. They are not affecting the traders. None of them is an organic farmer. I challenge. Here I challenge because I've suffered 30 years. सब traders हैं. सर एक थोड़ा सा PGS सब traders हैं. सर्टिफाइड का भी थोड़ा सा farmer का कोई रोल ही नहीं है. सर एक PGS सर्टिफिकेशन और एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का भी जो है, आई थिंक देयर शुड बी डिमार्केशन, क्योंकि सिंह साहब भी हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम देखते हैं तो दैट इज PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की हम बात करते हैं। तो सर उसमें एम्बिग्विटी क्या है कि दोनों की मोडस ऑपरेंडी एज डिफाइंड बाय बीटा, डॉक्टर यादव थे वहाँ पे,
तो दैट इज एंटायरली द सेम, बट सिर्फ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। एंड सर ये बात हमने अपीडा चेयरमैन के साथ भी डिस्कस करी थी कि सर अपीडा के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक 28 या 30 सर्टिफिकेशन बॉडीज जो हैं लिस्टेड हैं। उसमें सर क्या है कि ईच एंड एवरी सर्टिफिकेशन बॉडी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉस्टिंग फॉर द एक्सपोर्टर which is or the domestic company which is dealing into organic products, and what they have done is everybody has a different set of pricing and it is adding a huge cost on the product. तो सर उससे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक एक सर्टेन लेवल पे अगर हम देखते हैं एनपीओ की सर्टिफिकेशन, तो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तो कहते हैं चलो मेरे को यूएसडीए चाहिए, या जैसे आपके न्यूट्रल लिस्ट में बोल रहे हैं कि मेरे को जापान का जैज एंज होता है वो चाहिए। तो हर किसी की कॉस्टिंग डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, and that is adding a huge cost. So usko I think through an agency like APIDA the cost should be controlled at a certain level, there should be an equilibrium. And then मेरा second point perishable से related है, I think अपने हमीद साहब ने एक valid point raise करा था, जो हम लोग perishable exports की बात कर रहे हैं, we have been into the domain. सर इसमें हमें दो चीज़ों का बहुत फोकस रखना है, it is basically a question cum suggestion, कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारा पेरिशेबल जो है वो कंसाइनमेंट बेसिस पे बिकता है जाके, और आज हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो हमें पहले उनसे प्राइस फिक्स करके मटेरियल मंगवाना पड़ता है। सो देयर इज अ ह्यूज गैप विद रिस्पेक्ट टू इंडियन प्रोडक्ट्स कि हम लोग ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और क्वालिटी की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं दे पाते। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इससे हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो फ्लोरा हॉलैंड में सर हम लोग ने देखा है कि सैंपल पे सारे मटेरियल उनके बिक जाते हैं, जो सैंपल दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो निकलेगा। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टिंग एंटिटी वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर द प्रॉपर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग of the product with respect to the quality as per the norms defined by the importing country, और वो तो हर कंट्री का सेपरेट रहने वाला है। देखिए बहुत ऑर्डर करने कोई जरूरी नहीं कि वही मिले। सर एयरवे शिपिंग बिल के ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट्स उनको कर रहे हैं, एयरवे बिल पे लिखा हुआ है, कोई गारंटी नहीं है। मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, टू ऑन योर बिहाफ आई एम रिक्वेस्टिंग अथॉरिटीज इन इंडिया, जो भी रिजेक्शन होता है जिस भी कारण से होता है, देयर हैज टू बी अ रूट कॉज एनालिसिस, ताकि हमें पता रहे कि ये अगर किसान से माल सही लिया गया था और बाद में व्यापारी ने आजादपुर मंडी से आपने दे दिया 18 टन, उसको 20 टन का कंटेनर भरना था, आजादपुर गया 2 टन और उठाया, चिपका के डाल दिया। तो अनलेस देयर इज ए रूट कॉज एनालिसिस ऑफ रिजेक्शन, तब तक हम लोग ये जो ब्लैक शीप्स हैं इनको एलिमिनेट नहीं कर पाए। और जब उनको ये डर रहेगा कि अगर रिजेक्शन हो गया, उन जैसा होता है तहकीकात पूरी होगी तो सारी फाइलें खुलेंगी, तब तक ये 2 नंबर के काम रुकेंगे नहीं। यू हैव टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्मर्स ऑल्सो, एज एसोसिएशंस ऑल्सो, कि एवरी रिजेक्टेड, क्योंकि सुबह ये बोला गया था कि अगर रिजेक्शन होता है, जो डॉक्टर तरुण बजाज बोल रहे थे कि इंडिया का नाम खराब होता है कि इंडियन कंसाइनमेंट रिजेक्टेड, जो भी हम टर्की का इशू देते हैं, तो इंडियन वीट रिजेक्टेड, कोई नहीं कह रहा कि आईटीसी का या किसी और का वीट। इसीलिए जब तक आप रूट कॉज एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक एक्सपोर्टर्स को ये थ्रेट नहीं होगा कि सबस्टैंडर्ड माल और किसान से आपके लिए आधा आधा उठाए मंडी से और आपने बेचना शुरू कर देते हैं किसान करा दो, ये नहीं चल सकता। तो ये जब तक हम लोग डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं करेंगे, वॉलंटरीली दुनिया में कुछ नहीं होता है, जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, और उसका एक ही तरीका है, गो फॉर रूट कॉज एनालिसिस। Sir, यूनिफॉर्म कोड नहीं है, strong regulatory framework around it. There is a before they are exported. There is no shortage of regulations in India. But the framework doesn't. Anybody is exporting anything, labeling, on packaging. वही कह रहा हूँ, देखिए, one way traffic. So there are not regular audits of those. They are not penalized for wrong reports. मैंने क्या बोला? जब तक आप रूट कॉज पे नहीं जाएंगे कि ये रिजेक्टेड कंसाइनमेंट बाहर गया कैसे, अगर उस एजेंसी ने फर्जी दिया, उस लैब के ऊपर जब तक ताला नहीं लगेगा तो बाकी लैब नहीं सुधरेगा। Exactly. Then there has to be यूनिफॉर्म strong कोड नहीं laws. है लैब्स का यूनिफॉर्म कोड ऑफ टेस्टिंग नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ है, उसी को रिजेक्ट कर देते हैं, उसी को पास कर देते हैं। चोर सामने आएंगे ना, जब रूट कॉज एनालिसिस करोगे तो फॉल्ट एरिया सामने आएंगे। सर जी बहुत देर होगी सामने आते आते, पता नहीं क्या होगा। कहीं तो शुरू करोगे, कहीं शुरू कब करोगे, कहीं का सवाल नहीं, कब करोगे इसका सवाल। So I think there are problems, there are solutions, but the problem is literacy and awareness, which is a strong gap that has to be built. Correct. So thank you so much. Yes, अभी जो क्वेश्चंस निकल करके आए सामने, इसमें दो बातें निकल के आई हैं। अभी हम लोग इसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे, फिर खाने के टाइम में, उस टाइम में we will discuss that point. अभी इसमें जो बात निकल के आई किस लेवल,
जब भी कोई ऑर्गेनिक की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं जब हाँ मिस लेबलिंग है, अगर वो मिस लेबलिंग कोई कर रहा है तो इस तरह से देखा जाए तो वो एक प्रकार का क्राइम है, वो पुनिशेबल है। तो रेगुलेटरी सिस्टम को और भी रोबस्ट बनाने की जरूरत है, वही एग्री विद यू। नाउ सेकंड पॉइंट व्हिच वाज रेज्ड हियर, TGS and then NPOP. Yes, this is a kind of certification system which is available, which is done by the impaneled agencies. तो देश में ऑर्गेनिक सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, सर्टिफिकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिजिनस उसके लिए PGS इसलिए शुरू किया कि कम से कम लोग शुरुआत तो करें। अगर शुरुआत होगा तो कम से कम उसके बाद से वो शिफ्ट ओवर हो जाएगा, एक तरह की लर्निंग होगी। तो उसको हम लोग उस ढंग से ना कंपेयर करें, कभी कभी हम लोग PGS और NPOP को कंपेयर करने लगते हैं। NPOP इज मोस्टली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, वी आर फॉलोइंग इट, पर PGS से कोई एंट्री लेगा तो कम से कम उसके बाद से वो then he will adopt the NPOP, but certification system is required to be adopted. लेकिन जो certification system में भी कमी है, right from growing till consumption, that certification is made required to be made. You have very rightly mentioned that this audit and inspection system that is also required to be made more strong. Thank you so much for your input and points Excuse me, sir, you have raised. But at least you are ensuring that it does not happen. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि उसमें रेजिड्यू नहीं है और उसका जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, so you can promote your product telling that yes, this is the approximate analysis, we have already done it. If this much quantity is consumed, this much benefit it is going to give. No, that we are doing, but organic certified is better or 100% toxin free is better? I'm just asking the 100% toxin for a health impact, which is better? Organic produce, जो भी organic is better, I'll say. Why I'll say this one? It will be automatically pesticide free or toxin free. Organics are all are toxin free. You should also see if there are issues with buyers also. Don't assume that all the buyers are fully educated. So when there is a confusion like this, you can always engage with them. Are you interested only in certificate or you are looking for actually a safe product? I may not have certificate, but I can give you a safe product. But all depends upon what is their application. If they are selling in retail market with a claim that it is organic, then 100% toxin free is difficult because then it is a violation of the claim. But if it is used for processing or something where they want to have a safe product and don't want to claim as organic, then your product is valid. So this depends upon the buyer's marketing strategy also. That's why you should engage with him more. इसको नेचुरल की संज्ञा दे दो ना। Sorry to buyer के ऊपर है ना कि क्या बोला, जो पैसे दे रहा है उसकी सुननी पड़ेगी ना, आपकी मेरी थोड़ी सुनेगा। सर वहाँ नेचुरल चल रहा है इसलिए बोला मैं। मैडम का बायर डिसाइड Really sorry to interrupt you, sir. So we really need to close the session now. Once again, ladies and gentlemen, the topic for this session is the infrastructure and value chain development for export, and the time duration for this session is approximately 50 minutes, 50 minutes. I would now request our distinguished moderator to take over the proceedings of this session, and may I once again request you, sir, to kindly wind up in 50 minutes. Thank you, sir. Over to you, sir. Everybody is happy and they're sleepy as well, so you can get away by saying anything. And also, I have a big challenge because we have to make this session as interactive and as lively as before. तो थोड़ा झगड़ा करना पड़ेगा आस पास.
But before I start, सबसे पहले why we are sitting here in this room in the capital city on talking on the issue of agriculture is why. I mean, there are so many other things we can do that, right? But why we are doing it is basically there are two reasons. One is on a personal level, this is business of agriculture keeps you rooted. No other business does that. So this keeps you rooted. And secondly, when in a country when you have more than 7 out of 10 people involved in agriculture, and that contributes to not more than 20% of GDP, then definitely we need to think about it. Because if 7 people, or say 7 of your brothers and sisters, are involved in an activity, an economic activity, which is generating only 20% of your 100% budget, this situation is unsustainable. And because of this problem, the food has become a socio-economic, political commodity in this country. So unless you find a systemic and basic solution to this problem, we'll keep having these kind of seminars and not find solutions. So with this introduction, our focus is very clear, is that we have this particular session will focus on the value addition and supply chain efficiencies and how we can improve those with the overall game of improving India's place in global agri export. But having said this, I must say that we should keep our, not the focus, but we should keep our area of attention definitely in about $100 billion scope, because India is not only exporting $50 billion, but also importing a sizable portion of food and agri. So there is enough to export and play. It's just about $90 to $100 billion ecosystem in which we can operate. There could be many import substitution. There can be many things which we might be producing inefficiently, which need to be replaced with those things which we can produce, and export with a higher value realization rather than staples. So I must say I have a very, very enlightened and very expert panel with me. And I will start, so how I will do it, I will start introducing my fellow panelists one by one. So I'll introduce one person and then they will be able to make their inaugural comments, some questions, and then I'll move on to the next one, so that you can always keep the introduction in sync. And I'll start with the lady on my right. Doctor is missing. In fact, she's a doctor. Dr. Sheetal Somani. She is the co-founder. Please correct me if I'm wrong. She's the co-founder and the CEO of S4S group of companies, which is not only, I think it's an embodiment of Farmers Connect outreach. I mean, she's connecting to almost 400, probably more, farmers at their doorstep level. She's involved in primary processing of whatever they produce, and then she's doing secondary processing, and she's selling her produce to domestic and international audience. And she's not, she's a real doctor. By real doctor, I mean she's a doctor of medicine. And I don't know if she's practicing or not, but she's a dentist. So it is as good as it gets. So with that, I'll let you make some inaugural comments, and then I'll have some couple of questions. Over to you. Thank you so much. Thank you, Sudhakar, for the nice introduction. As Sudhakar already said, I'm one of the co-founders at Exports Technologies, and yes, I am a dentist. Afterwards, I have done business management, and the basic motivation, just curating the smile or bringing the smile on the faces. So I choose bringing the smile on the faces. And we, the college friends, we started this startup during our final year of education. We initially developed the technology for the dehydration of vegetables and the spices, and the main purpose was to increase the shelf life, to reduce the post-harvest losses at the farm gate. And afterwards we realized we need to give the buyback linkages for these dehydrated products to the farmers. So right now we are working in 300 villages in Maharashtra. We are working more than 5,000 farmers, mainly the women farmers who are developing the women entrepreneurs. We are providing them the technology and buying back the dehydrated products from them.
Our products are dehydrated onion, ginger, garlic, turmeric, and certain commodities also we are doing. These are the maize and soya bean. I guess that's enough of my introduction. Thank you. So my one basic question, because I think we have come here not only to debate and understand the policy, but also to get some takeaway message from a conference like this, to learn something, to understand what is new happening, and also learn from others' experiences. Dr. Shikal, tell me something from your experience of interacting with, say, 4,000 farmers, sorry, I mistook it for 400. Or say to organizations which employ or which are involved with 4,000 farmers. इस पूरी यात्रा में आपको कहाँ से क्या-क्या चीज़ ऐसी लगी which you could have done better, and अगर कोई और budding entrepreneur है यहाँ पे, I'm sure there are many, तो क्या-क्या उनके लिए आप नसीहत देना चाहते हैं, say 2 or 3 things? जैसे गांव में जाके किसानों के साथ काम करना पहले तो आसान नहीं था, बिकॉज हम बहुत ही स्टार्टअप छोटी कंपनी थे, एंड टू लेट देम नो अबाउट द टेक्नोलॉजी कि हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कुछ हो सकता है। यहाँ पे हमारा लर्निंग ये था कि हर एक जगह पे एक इनोवेटिव फार्मर होता है, अगर वो एक फार्मर आगे आके कुछ करता है तो पूरे अदर फार्मर जो है, वो जो किसान है वो गाँव के, वो उसे फॉलो करते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट द सक्सेस स्टोरीज इन एवरी विलेज एंड देन दीज आर followed by the other farmers. Second thing is the value chain partners. We need to understand if we are working in the food value chain, which are the partners, and यहाँ पे win-win situation हम कैसे create कर सकते हैं. So ये win-win situation farmer हम हमेशा से बोलते हैं farmer को, लेकिन उसके बीच में कितने value chain partners आते हैं, और हर एक जगह पे with the technological intervention और decentralized processing हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम ये situation सबके लिए फायदेमंद कैसे बना सके. That is the second learning. उसके बाद में सब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर आप 4 गांव में काम कर रहे हो, then it is very easy to replicate in the 40 villages. वो जो 0 to 1 का जर्नी होता है, that is something which is. So the key is to find that one particular change agent in each domain you're working, and then hopefully replicating that model, and also being true to the value addition. Like whosoever you meet, you have to create some value in their business proposition and their lives. Thank you very much. Really appreciate those wise words from very young shoulders. On my left is another very enigmatic personality, Mr. Deepak Parekh. I have known him for many years, but this is the first time I am seeing in person. He's more than 20 years experience in agri ecosystem, in agri entrepreneurship, as a business person. But more than that, he's probably the only agri personality I know who's the most awarded nationally, internationally. So you're sitting in a very, august, proven, verified presence. I mean, you don't get award for nothing. Sometimes you do, but mostly don't. And one more thing, interesting thing about him is that he is the only agri-business person or agri entrepreneur who has close encounters with, because he's a wildlife enthusiast, so he had close encounters with python and rhino and a lion. So there are not many people in the audience who have met these 3 animals in a close proximity. But probably that is easier than handling any situation many times, especially navigating the regulatory environment. So my basic question to you is, having worked in agribusiness right from the India to internationally, and now also in the startup space where you fund startups in the food ecosystem, some inaugural comments, and where do you think 3 or 4 things where we can really put India into, say, not $100, but say $200 billion bracket? Because if we're talking about $5 trillion economy, there is no way that you can leave 7 out of 10 people just waiting for them to just vote and not contribute otherwise. Please. Thanks a lot, Sudhakar ji, and very interesting introduction. And coming from you, humble, totally humble, because I think when this session started, nobody introduced him. So he also is having a huge body of work behind him, being in agriculture, international trade, operating out of UAE and India. He has done a lot of excellent things, and honored to be sitting next to you, sir, and being on this panel. Now coming to what needs to be done in India.
So थोड़ा मोदी जी से कुछ थोड़ा सा ज्ञान चुरा लेते हैं. He believes in lot of number with alphabets. So 3F. What are those 3F? Farm, folk and foreign. Today we want to talk about exports. We need to also see which countries have really done well in export and why they have done well in exports. US, $230 billion of GPA from agriculture, exporting $160 billion. Netherlands, again $100 billion club. 30% of that is in technology export, agri-technology exports. Germany, France, China. We have $400 billion worth of our agri-business, and we export only for 48 point something, and this year, because of various reasons, it has just crossed 50, which we are celebrating. 50.21 if I'm not wrong. Now, are we becoming as good as those countries? The answer is firmly no. And I'll tell you the reason why no. I love my country, but at the end of the day, हम सब घर के हैं, so we can discuss some challenges and questions. If I would have been talking in Davos, then I would have said that yes, wow, 51, right? Our export numbers are directly correlated with FAO's inflationary numbers. The global inflation goes up, our export goes up. There is no rocket science. If you see data from 2010 onwards, जब उनका फूड इंडेक्स नंबर ऊपर जाता है, हमारा एक्सपोर्ट ऊपर जाता है. जब वो गिरता है, हमारा भी गिरता है. Only there was year 2012, 13 and 16, 17 where we were able to achieve increase in export and decrease in import because global commodity prices were not on the boil, and we did really well to export more commodities, right commodities. Now this is the problem statement. How do India become America? How do India become Germany? How do India become France? We cannot compete them in the commodities we are trying to export. Wheat, rice, cotton. They would love us to send all these commodities to them because actually these are water guzzling crops. So eventually we are exporting water, right? But as a nation, do we want that situation that actually our water is just getting exported at throwaway price? In US you get a bottle of water for roughly $1, right? It takes 3,000 to 5,000 liters of water to just produce 1 kg of rice. What are we exporting? But in case we don't export rice and wheat or cotton, then what? India is such a beautiful place with 127 agroclimatical zones. We can produce 700 different commodities. We are not seeing a very important data that food and vegetables, they have doubled in past 17 years, while when we go to grains, they have just increased by 30%. कितनी मेहनत करके ऊपर लेके आओगे? नहीं बन रहा yield, नहीं आ रहा productivity. Still we are like so infatuated with productivity of grains that we totally ignore creating value system, value chain for our fruit and vegetable. We say that we are second largest producer of F&B in the world. You will be surprised to know that actually we are less than 2% of global trade in fruits and vegetables. A gentleman very recently in one of the panel was saying that avocado उगाते हैं यहाँ पे. Why do we need to do that? Again, 7 years, 8 years of a curve. What has happened to dragon fruits? सबने सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी ड्रैगन फ्रूट. When we compete to Indonesia, right, we are nowhere. So do we want to still grow inferior product to Mexico? Do we want to still grow inferior product to Kenya? Kenya भी उगाने लग गया अभी. The important thing is that we are having a lot of commodities, right, especially in fruit and vegetable and MAP, medicinal aromatic plants. And I have presented to Niti Aayog that if we just concentrate on 3 commodities or 3 segments of commodities, F&B, MAP and millets, these 3 commodities itself in next 6 to 7 years can create $100 billion worth of market.
The total market for superfoods is $216 billion, quinoa and all sort of shit, right? Our pearl millet, right, is such a beautiful food, raki. We position it as a super foods, and believe me, like this itself, this segment which is $28 million currently, the current market, can leapfrog to 10 times, 15 times in next 3 to 4 years. Only thing is that we need to have the right value chains, right infrastructure, and my only request would be in fruit and vegetable sector, we need to move our processing closer to farms rather than the centralized food parks. India, we love everything regarding, right? Food park. सब अपना फसल वहाँ पे लेके आएंगे और वहाँ पे काटेंगे. भाई, थाईलैंड को देखो. When you are closer to farms, you reduce the logistic cost, you reduce the waste, and you also employ those farmers who are not doing anything in the lean period. So I believe that's my initial comments. Thank you. I thought I have taken a little bit long. I'm sorry for that. Well, we try to do some kind of fight between auction system, bidding system, who wants to buy how much time. Thank you very much. Deepak, very, very interesting points that we should be mindful of what we focus on. Economically, socially, environmentally, and also move processing closer to the point where it makes commercial sense. Moving on to, I would like to introduce my next panelist, Mr. Anand Chandra. He is the Executive Director and the Co-Promoter of Arya Collateral Warehousing Services Limited. Anand ji is from a famous city. He did plant sciences from a famous city called Allahabad, which has also given us 3 or 4 prime ministers, if we consider proxy prime ministers. And he's a very seasoned professional of almost many years of experience. And now he's spearheading Arya Collateral, which is a very interesting ecosystem which facilitates a platform of more than 5,500 crore of commodities passing through it. So it's a very important, many of us, I didn't know many years ago that collateral management is a very important function in the agri supply chain. There has to be a trustworthy mechanism between the producer who can get paid and the financier who's paying the money. So that kind of ecosystem in India needs to be really developed in a very advanced way if the financing of working capital problem has to be sorted. So he's playing on a very important aspect of the food supply chain. And he's a man of action. I told him what is the worst punishment for you. He said, if somebody appoints me the chairman and locks me in an office, I'll not survive for a very long time. So I hope he never gets promoted and he always remains in the warehouse. And Anandji, with these comments, I would like you to say, of course, give your inaugural comments, but at the same time also put a little bit focus how infrastructure in the rural areas can do 2 things, can improve export linkages for the producers, and also how can it reduce the food losses, which is a big problem in India. Please. Thank you, Mr. Tomo. Thank you, Mr. Tomo, for the lovely introduction. I am an Agri graduate with a post-graduation in Agri Business Management, and all throughout for 2 decades been working in Agri sector only. So, as he mentioned, warehousing or supply chain management still remains a sector which needs a lot of attention. And since I started my career, the forums I have attended, we have been always talking about building up cold chain, building up infrastructure, and unfortunately nothing has happened in the last 20 years which I have seen across, barring few states which have done well in terms of creation of infrastructure. One interesting topic which was mentioned in the last panel discussion was a root cause analysis for why it is not happening. See, for me, the biggest challenge why infrastructure or these cold chains are not getting created is there's no money involved. There's no return on asset. If you turn around, you will not see players getting into, large corporates getting into creation of infrastructure, because the capital it guzzles is too much for somebody to invest and then get a return. End of the day, we may have an holier than thou attitude towards farmers, agriculture, but I know it all boils down to money.
People are doing business to make money, including me. Let us be honest about it. We are not social entrepreneurs. So infrastructure can only be created if there is return. Now government came up with subsidy through the NABARD subsidy scheme, rural go down scheme, but it did well in some states. Some other states like Bihar, Orissa, they have still not done well. So similarly for cold chains also, there is need for creation of infrastructure. One thing which we as a country should be cognizant of the fact that we will never be able to compete or match USA, Germany or whatever. What we should be cognizant is that we are India and we have to live with it. There is a stark difference in where these Western and the European countries are and where we are. The reason why the infrastructure is not developed because people are not willing to pay you more for a good quality food. Your population is so high that whatever you produce gets consumed. Today you go to a market, you have demand for broken rice more than a basmati rice. Because the poor cannot afford a basmati rice, they are happy to get broken rice. So there is no incentive for the people in the sector or the people involved in the value chain to add more value. They are happy to go with whatever is getting produced because there are consumers around. With the 130 crore population, you are able to sell whatever you want. So in case if you want to get into creation of infrastructure, we will have to look at the way the industry is or the way I would say the scope is in the country. Our land holdings have been fragmented since in freedom, independence from grandfather, it got divided between the son, now between the grandson. So land holding is becoming fragmented day by day. So we don't need large infrastructures like US, Europe. We need small infrastructures. For example, which we as a company has done is hermetic storage structures. Now these are 200 tons, 100 ton storage structures which can be taken to a production center as close to the farm gate. This type of technologies on a small scale which are economically feasible. I again add economically feasible because as a country we have too much of technology but they station themselves in the lab and become a stereotype and nothing happens, or I would say a prototype which are well positioned in the labs and not being able to scale up because they are not feasible. So any tech thing which we discuss has to be economically viable for people to afford. Now there is a lot of work. Fortunately, as Mr. Deepak mentioned that we have so many different agroclimatic zones, we can produce anything and everything. We don't need to copy. The problem in the country has been we have never focused on agri as an industry. And I can beg pardon from the government machinery over here that we have never gone beyond agriculture as a vote bank. The moment we start looking at agriculture as an industry, it will automatically start flourishing. I'm not saying that we should not look at the farmer welfare. The industry needs subsidies, the industry needs support, but we should separate welfare with business. As country we don't interfere in metals, the country should not interfere with prices of commodities. Welfare has to be given to farmers because that's a hard work which they are putting in to produce for livelihood. That has to be handled separately, not by mixing it with the price. The moment you mix commodities prices, say for example sugar sector. Now you tell me as an industry, my raw material prices are decided by government, my end produced prices is decided by the international market. What will happen? We will always keep on blaming the company has not given the dues to the farmer. But from where will the company get the dues? The company's dues will come from the sale price or the sugar which is driven by international market. So it's a very difficult circumstances under which our agri sector has been involved. Infrastructure needs a push, but again we have to look at smaller infrastructure and more sustainable rather than copying what is happening in West. Because West, if you see the land holdings are huge. They are into hundreds or thousands of acres for a farm size, whereas here the land holding size is less than 3 acres for majority of the population. So we have to look at it differently. There is nothing for which we need to copy. I've been into the banking sector. I can tell you the Grameen Bank in Bangladesh, which was a success, that model did not work in India, across the border. Pakistan produces great fast bowlers. Fortunately, now India has been able to produce fast bowlers, or you are not able to. So there is no formula which is working in one country. We are unique. We have to focus on what we have rather than copying. We have a fragmented land holding size. We have to live with it. And we have to work around creating infrastructures
of smaller and tenable sizes so that we can take them along. And hopefully, I would say last 1.5 to 2 years has been good for the agri sector with a lot of investment coming in for the tech companies, and there are new technologies which are getting adopted which will help in creation of these infrastructures which will increase our productivity as well as improve the entire value chain. Thank you, Anandji. I completely disagree with you on certain point. I'll praise you before I criticize you. India has been producing fastest vegetarian dollars for a very long time. So I disagree on that point, but I definitely like your catchword that welfare has to be separate from business. So you say that government has no business to be in the business of food. Tough words, but I didn't say this, you said. So I have no regrets being honest. no, of course, but it has to be said. But I agree with you that there are better ways to help people rather than to get involved in the business where we don't really know. So that's absolutely point taken. I'll move on to the gentleman sitting next to Anandji, Mr. Ritesh Jain. I did not get much chance to interact with him, but I know that he's more than 12 years of experience in food supply chain, and he has worked in BSP and BFC and finance sector. He is associated as a deputy vice president of MX1 exchange. More about the exchange he'll tell while he's making his comments. And when I asked him, I said, because it's always good to know speakers as also a person. I said, what do you like? He says, I have a very good hobby, which I like to interact with people. So I said, absolutely right, because you can never be alone then. So please, over to Ritesh ji, enlighten us. Thank you, Thomas sir. Thank you very much for introduction, and thank you ICFA for giving us opportunity to present our views. So I'm Ritesh. I'm supply chain finance professional for last 12 years. Worked with many banks. Currently with presenting M1 exchange. So so my topic is more on would be on the finance side. I will share my little experience with the Agri that have supported the export, which is the topic today. So first I would love to tell you about the M1 exchange, what exactly we're doing. So M1 exchange is a Reserve Bank of India regulated fintech portal. It's an exchange only, and it is designed by MSME Ministry. So it is into existence since 2017. So this platform is only and only for the MSMEs, for the benefit of them, and it is a payment. It is for the payments to them. So we'll briefly let you know. In a layman terms, we can understand as it's a marketplace where MSME can get their receivables from their suppliers to the organized sector. Okay, and the funding which is available over there is done by various banks. Around 45 banks and we have factoring license companies are there with us. So they buy that their receivables, and on due date they collect the money. The financiers collect the money from the buyers. Buyers are generally large corporates, organized sector. Okay, so there are two ways where they can get this facility. One is factoring and one is reverse factoring. So factoring is one where supplier have supplied the material to the organized sector buyer. Okay, and within say tenor of around 60 days, he want the early payment. Then he can request the buyer to release the early payment. Okay, और वो हमारा platform use करके he can release the payment to him at a very competitive price. And all the funding which is available on the platform is at very cheaper cost, and this is 100% collateral free anywhere to any of the party. And the second part is the corporates are not interested in this product because ultimately they have negotiated for the 60 days of payment, and they said I have to pay the payment in the 60 days only. Why should I take the pain to get into all these operational things? So the second very important facility which is allowed on our platform is reverse factoring buyer bearing interest. So what the government is saying, if you buy from MSME, then I will allow you to
extend your credit tenor that you have negotiated, say 60 days, to another 90 days, and you bear the interest but make the payment to the MSME on a day which is you negotiated. So means a corporate can avail discounting from 60 days to 150 days. So he'll be bearing the cost, and very good part is that all this working capital which he is extending is 100% collateral free for him, and the banks are interested because this facility is a part of priority sector lending for them. Okay, so banks are also very interested. So all the parties on this platform are very interested. They have their own reasons for getting to this. So I will be sharing two of my experiences which is related to the agri businesses, and how does it support to the support to the exports of agri products. So one is, if we talk about one of the major points that I could read in last Monday or today, that is to develop all this thing, to develop agri process units, to develop the rural development. The one most important thing is road infrastructure development, electric power infrastructure development. So I will talk about very little about this particular part. So how we played a role to develop this particular thing, which is indirectly helping the agri sector. So we have seen that in India there is always delays in the execution of many road infra projects, many power and electricity transmission projects. The reason being the tenders have been taken by the contractors, and definitely contractors are very good people, very good organized sector. But generally their receivables are comes in a tranche of say 1 year, 6 months, kind of that, when they execute this much of work, and with the limited working capital, which is always an issue in India. So how we play over there. So what happened actually in between the project, so the contractor will stop the project because they fall short of money. So how do we help, and what actually happens? So we provide collateral free solution to the contractor. Okay, if he is buying the material from the MSME, then he will get additional funds. Suppose the contractor is having 50 crores of line from its banker, so we arrange around 50 to 100 crores more if he is buying from MSME. So he is extending, his purchasing power gets increased, so projects gets continued. Okay, so the thing is, this applied to many infrastructure companies, and last 2 years, 3 years down the line, we've seen that companies have grew exponentially. Around 50%, 60% of top line achievement was there, and their credit rating being approved after joining to us. So indirectly that have not only helped that contractors, they have done the things on time, that is ultimately helping the rural India in infrastructure and power. Ritesh, I'll stop you for a second. This is very good for the benefit of delegates. Could you quickly tell what is the interest rate with which you are doing discounting and the reverse discounting, just for them to have an idea through your platform? Yeah. So the interest rates are ranging from 4.20% to 10% per annum. That's very competitive, I must say. And I'm sure the second other points we'll discuss when we are encouraging all of you to ask specific questions which can benefit you and the agri ecosystem. Now moving on to the gentleman sitting on my extreme right, Saurabh Pandey. Please do not get fooled by his young appearance. He's a very seasoned person. He is a co-founder and director of a business school, Imperial Business School, which is producing agri-business graduates. And I'll not make his introduction long because he will introduce himself also and tell us a little bit about his institute, how does institute, what kind of graduates or the candidates they're producing. But he is very spiritually inclined, spiritually in terms of books, not the spirits. And his favorite book is Karma by
the most famous marketing guru I call Sadhguru. I like him very much, but he's also the best marketing person, and in a good way which India has produced. So yeah, over to you, sir. Please enlighten us. Thank you very much, sir. Nice introduction, and I'm really blessed and grateful to share this panel. बहुत बहुत आभार सभी का, यहाँ पे जितने भी गणमान्य जन हैं. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो सभी अटेंटिव है. इफ़ यू हैव रियलाइज दिस, अगर कोई हिंदी बोलना शुरू करे तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपके दिल के करीब. इट फील्स लाइक. नहीं, मैं दोनों सेंस में बात करूँगा. इट इज़ what is required in the market, when we say speak in English as well, but it is also necessary. When you are in the natural state, आप automatically अपनी रीजनल भाषा बोलना शुरू करता है. तो बुकर प्राइस मिल गया तो बोलना चाहिए. Right, that is true. Very nicely anecdote that you added right here. So it is also important for the positioning. मैं यही point, I'll start with a story. मैं एक छोटी सी story start कर रहा हूँ. I was participating in my institute's interviews. Students those who are applying for the next year. एक बच्चा था from Andhra Pradesh. I simply asked one question. My always first question is, what does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? He simply mentioned he's an exporter. So I had attended almost 50+ interviews. So far I used to listen. मेरे father farmer है. My father is farmer, but he mentioned that my father is exporter, and so I thought that let me explore more. What does he do? Then he said, sir, he grows chili and turmeric, and then he give it to the exporter. He seems a farmer. He's not an exporter. Bola nahi sir. He is an exporter only because he is working with exporter. Why I am sharing this thing? That is more sellable. You please understand. The moment you say exporter, सामने वाले का perception change हो जाता है. They see you very differently. Being instead you say my father is a farmer, वो मेरे लिए natural था. ठीक है, अच्छा हाँ farmer है, खेती करते हो. The moment he says exporter, though he is doing farming and then connecting with the exporter, वो पूरा perception change हो गया. So the market works on वो जो दिखता है, वो बिकता है on that concept. That matters a lot. Please understand what we are discussing here. And that was a great learning from my side as a director of the institution. It was a great insight and learning that what kind of positioning we want to do ourselves. As you mentioned now, Booker Prize being got by a Hindi writer. So now we will start reading Munshi Premchandra and then Sumitra Nandan Pant and all those old writers. Now we are forgetting slowly. Now the memory is like fading out. But still, those are good writers. Right? जब भी कोई बहुत इस तरीके की पोएम और कविताएं कहने की बात आती है तो बहुत सारे हमारे ऐसे हिंदी राइटर्स हैं जिनको हम याद किया करते थे. Now we are now following the trend of what world has designed. तो एक बहुत बड़ा ये ओवरऑल मार्केटिंग और ब्रांडिंग which is happening across the world. ये चीज़ों को समझना जरूरी है. ये ऑब्वियस नहीं हो रहा है. This is happening with a purpose. एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ. When you talk about the business, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कौन सी वेशभूषा आती है? When you are talking about the business, दिमाग में कौन सी वेशभूषा आती है? कौन सी ड्रेस आती है? Suit. No, when you see one formal, तब भी सूट ही आएगा. Why it is happening? Have you realized why it is happening? ये consciously नहीं हो रहा है. This has been drenched in your subconscious mind with the world agencies. कैसे हुआ है ये हमारा? सूट क्यों आ रहा है? Why it is coming? Why not धोती कुर्ता? Can anybody answer? That's the perception people are carrying because how it has been created? Indoctrination through the society. And where you live. So value placed with the English dress or the global dress, that's what the fashion is all around. Where you have seen it? That's what I'm asking. Colonial past. See, colonial past. The entire, yes, that is also the thing. Entire thing we consider media television as the benchmark. Whatever we see in the media television, that we follow. I'll take the example of avocado and kiwi. We were talking about let us grow avocado and kiwi. You may have seen an English movie where they are using kiwi or avocado in their salad. आपने उनकी सैलेड में avocado kiwi देखा. They have positioned it intentionally. उनकी मीडिया इंडस्ट्री भी उनकी इंडस्ट्री कंट्री को सपोर्ट करने के लिए they are helping.
आप उनके ब्रेकफास्ट में कॉर्न्स देखते हैं, कॉर्नफ्लेक्स देखते हैं, ब्रेड देखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेलिंग. आप पराठा और दही और लस्सी नहीं देखते मॉर्निंग. आप प्लीज अंडरस्टैंड, you are already aware of which is what is healthy for you, but still we demand cornflakes, choco cornflakes, all those things because you have seen in the movie. आप वहां से रेफरेंस लेके आओ. So जो परसेप्शन का गेम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, this we need to understand and this we need to share with our grower farmers. अब मैं फार्मर नहीं कहूँगा, now I will say grower, producer or export. Simply. Agri entrepreneur. Agri entrepreneur. That's a more polished. Because an average farmer is the most risk-taking businessman in India. In his productive life, he gets only 35 trade transactions, and half of those transactions don't work. So we, as a consciously, I think somebody said that this whole conference is not about farmers. I disagree. Everything's around farmer. It should be about the farmer because farmer is the most powerful and the strongest. It might appear as weekend, but it's the most strongest link in our supply chain. Sorry, I didn't mean to. No, you're adding the valuable contribution. Thank you very much for supporting. But I think shall we switch off the TVs? You said shouldn't believe televisions. So no, we need to share our story on TVs. We need to compete with the market. Boss, I'll use this dress and I'll call myself as a businessman. Why not? I'll wear dhoti kurta tomorrow. I'll call myself as a businessman. Why not? So see, that's why I'm very, very smart. See, I'm wearing shirt which is Western and this is Indian, so you get most best of both worlds. Very smart. Inside, if there is genuine as well, that will work. Nobody is even watching, but what I'm saying. So I think you are understanding. आप समझने की वो चीज का समझने की कोशिश कर रहे हैं. कहने का ध्येय क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है कि जिस चीज की पोजीशनिंग करते हैं वो बिक रहा है, चाहे वो एवोकाडो हो, कीवी हो, आपको अच्छा लगता है, मुझे एवोकाडो कीवी चाहिए, you will pay 25-30 rupees per single kiwi, right? So these things are happening. Same the story with the organic, same the story with the natural, same the story with the toxic free. So maybe I have more point to discuss, but over the period of time and as we move on, I try to share more learnings which I have collected over the period of time. Thank you very much for giving me the stage. Thank you, sir. Thank you, sir. Very perceptive, very interesting ideas. So we are good on time. I think we can take some questions. If you have any questions, sir, yeah, please. बोलिए. आप यहाँ पे सुन सकते हैं आपको. ऐसे है कि मेरा क्वेश्चन है अपना आनंद जी से. थर्मल कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपने कोल्ड चेन के बारे में सुना आपने? सर कोल्ड चेन में अभी तक हमने काम नहीं किया ज़्यादा. काम नहीं. See, my question is different. Answer is very different. No, no. Let's not change the context. You let allow me to complete. I said सुना है. I didn't say किया है. Sir, you let allow me to complete. सर एक मिनट निकल गया उसमें. आप सवाल पूछें जवाब दीजिए. देखिए मैंने आपके ये पूछा कि थर्मल जो कोल्ड स्टोरेज है उसके बारे में आपने सुना है? सर मैंने वही बोल रहा था कि मैंने कोल्ड स्टोरेज में काम नहीं करते, इसलिए मेरे को कोल्ड स्टोरेज की ज़्यादा जानकारी नहीं है. देखिए यही बोल रहा था. देखिए ऐसे है कि स्टोरेज के बारे में बात चल रही है, तो फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं. श्योर. तो उसके लिए भी have worked on it, and one of the 10 programs recommended by PMO, one of them is ours, with biomass through pyrolysis process. We have the heat energy, we have the cold energy as well through thermal cold storage. So anybody wants to know about it, I'm available. Thank you, Singh sir. Any other question to any of the panelists? हेलो सर. Yeah, please. उसको तो हमको प्रोडक्ट चाहिए, उसको तो प्रमोशन करना ही, लेकिन मार्केट में एवोकाडो चाहिए तो वो तो करना ही पड़ेगा सर. अभी दुबई देखो, दुबई में इंडिया से डेली 50 कंटेनर्स टमाटो जा रहा है, तो उन्होंने खुद को चेंज कर दिया. अभी उन्होंने कंट्रोल पॉलीहाउस करके उसमें टमाटो ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम हमारा डेटी खाली तैयार करेंगे. नहीं एक्चुअली थोड़ा सा टेंजेंशियल हो गया. लेट मी बी वेरी ब्लंट ऑन फेस ऑन. अभी मैं है ना हर 15 दिन एमिरेट्स राइट, वर्टिकल फार्म राइट, सारे फार्म मैंने देखे हैं राइट. वेजिटेक करता है राइट, उनका प्रोडक्शन इज 0.1% ऑफ द नीड ऑफ यूए. It's a hobby they are having. Let them have their hobby. Right? Now coming to avocado, right? Agronomy, if not applied, cannot lead to good exports.
खेती का पहला असूल है एग्रोनॉमी, राइट? आपका अगर एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल टू ग्रो एवोकाडो, राइट, वी विल बी सिटिंग एंड रिसर्चिंग फॉर नेक्स्ट 7 years 10 years एंड कमिंग आउट एंड सेइंग दैट बॉस हमारा प्रोडक्ट इंफीरियर है. आपको I'll give you some commodities. Let me complete brother. Let me complete. अरे let me complete brother. किसको सूट करता है? अरे let me complete ना brother. Agroclimatical zone and environment both are different. From seed to right sort of planting material to understanding of the practices, right? Agriculture is वहाँ पे बात होता मेरा बात होता मेरा उग जाएगा. It doesn't work that way. Now again coming back to, I'm saying that avocado growing in India, right? We are having previous examples where we have tried to experiment with के market में दिखता है तो मैं बनाता है, right? So in fact like you know petrochemical company वो बोलेगा कि मार्केट के अंदर स्टील चल रहा है तो स्टील बनाता है. You will have to have your business, you have to have a vision what you are good in. As a nation what we are good in? We are good in map. हमारे पास ऐसे products हैं which are sold for 25,000 rupees a kg, 50,000 rupees a kg, but still we want to go that Mexico में क्या हो रहा है मैं वो उगा लेता हूँ जाके, क्योंकि there is a demand for Mexico. और Mexico, अरे let me complete a brother. We are not getting into debate, right? We can do that offline. बाद में बात करते हैं, अभी पैनल डिस्कशन चल रहा है ना, हाँ, so we can get into debate. Now coming to very important point, right? Please look at avocado deeply. What has happened to Mexico? It is known as curse in Mexico. There is a documentary on Netflix on that. Exactly. So what I'm saying is that just copying pasting कहीं पे अगर demand है, see cocaine का सबसे बड़ा demand है world में. Should India start growing cocaine? Must not grow cocaine. No drugs, please. I don't want any message to go from this. I have a question. Yeah, please. Food security is the biggest goal for any economy. In such a scenario, we can never say that food business is not the business of any economy. So this is also one of the questions everyone has to contemplate on. Sri Lanka, from being a self-reliant food company in rice, started importing rice because government did not timely take care of the fact that everybody was hoarding rice so that they can export at better prices because international prices were up. Similarly, wheat ban recently has been implemented because a lot of hoarding activities were happening. So how government can stay, apart from the fact that because food is the very important part for any economy from security perspective. I mean, regulation will always be there, but how that risk can be managed for companies which are very compliant? They're not into hoarding, but still they face these risks of regulation by the government again and again. So, ma'am, I did not get your question right. You're saying if the food. I just said food and welfare should be different. While I understand for the welfare, subsidies and everything, everything can be done for the welfare of the farmers. But coming again and again and putting quotas or regulating prices, MSPs and all, these are important. But I mean, again, it's a question of debate. Sure. So I'll Anand, you can address that, and then I'll give you some international perspective. Please. It's a very delicate issue, but I did not wanted to touch. But since you have already touched, I will give my opinions, and these are purely my opinions. There is a way to handle the thing. Like wheat export, people say it is bad, people say it is good. If you ask me, for farmers in the last 20 years, this is the first time the prices of commodities are up during the harvest season. I have never seen prices of commodities up during the harvest season where the farmer is actually getting better prices. And when the prices are beyond MSP right now, you see the procurement at the MSP centers is very, very low. The warehouses are vacant. So we as a country need to decide what we want to do. The problem is we want the farmers to get better price, but we are not willing to pay higher price for commodities. Then how on earth will they get money? So one thing which I support, Anand, and also support your idea is that as consumers, we must be ready to pay a good and reasonable price to the farmer. If we can go to the cinema and watch in Platinum 1800 rupees movie and eat 400 rupees popcorn, I don't think we should not be able to spend 200 rupees or 300 rupees for that. So that also mindset we have to change. And it is also government's responsibility
to make affordable and nutritious food to all its citizens. So they do have a regulatory obligation to say, but at the same time without stifling the agribusiness ecosystem differently. So on this note, sir, I will just come to you if you allow. See, countries should go for food security, have a buffer stock, not buy and store and let the food be rotten. If you want to go take these numbers and verify, as a country we spend almost 30,000 crore for FCI procurement administrative cost on it. What stops us to stop the PDS and give direct money, DBT into the account of the individual so that they can buy rice or wheat at MRP or the market price? You're spending 30,000 crore that will straight away stay as an exchequer. So the point is, there are ways where government need to get involved. There's no denying that, because food security is must. But the moment you cross the line and get into business that I'm going to buy at this rate, this is getting involved into business. See, if you say declare MSP at 25 rupees for a wheat where the international prices are 20, you are disrupting the trade. Export bans, these are part and parcel of a life for any commodity where government will take a call and nobody can stop them because they have to look at the situation domestically also. So these will continue coming. Looking at the food security, there were estimates which I have no authority to comment what went wrong, what made government to take an abrupt, stopping on the wheat. But what is a delicate balance? Your forex have gone down. Your wheat export was helping you to earn forex. Now, how will you decide? Difficult questions, which I am sure over a time people will become correct, they will understand more, and that's why they allowed some bit of export to go on. More may follow. so the PDS may price story has 2 points. Just one second, sir. price should be on the basis of food value of the product. It's not, if it is that way, then it makes it very easy for the farmer. Of course, of course. जब मार्केट में आता है तो वहाँ जाकर रिजेक्ट हो रहा है कि आपकी प्रोटीन कम है. So that one, the government is purchasing. Why should it be decided at that time? Absolutely, because the wheat has come up, and wheat has come up. So I would also like Deepak to take on that point. So whether the government should allow exports, and both sides have very valid concerns. So Deepak, maybe you want to say something on the wheat side, because I think you guys will add something. Yes, sure. फूड लॉ के बारे में कोई नहीं बोला, वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ. सर मैं आपके साथ बैठ के 2 घंटे डिस्कशन करूंगा, आप जो भी बताइएगा फूड लॉ का. बट यहाँ पे हमारा टाइम लिमिटेड है. Wheat actually export ban is a very interesting phenomena, and actually because we collect a lot of data on agriculture, commodities, and we have our parallel data sets in the government. So हम भी कितना yield है, कितना production है, कितना sowing है, we also do it pan India. Now the challenge with wheat was that I strongly believe that the government had no option. Right? We can always blame that, and Ravil Singh ji हैं बैठे हैं यहाँ पे. I am sorry sir, किसान को नुकसान हुआ होगा उससे, and I am very sorry for that. लेकिन challenge was that we said हम इतना सारा wheat market में रखेंगे. So हमने cap कर दिया था हम कितना income कर सकते हैं उसमें. Because the world knew कि हम 11 million metric ton wheat लेंगे. हम धीरे-धीरे अगर उसको liquidate करते तो we could have get a better price. But once हमने कह दिया है कि हम तो डेलीगेशन भेजेंगे 9 आदमी 10 आदमी की पूरी दुनिया में वीट भेजेंगे, we have already position ourselves कि maximum price क्या हो सकती है. But at the same time, our own buffer stocks were less. Whether government wanted to believe or not, our yields were historically low because of the severe heat wave which was in the Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. So 97 lakh metric ton का अगर production जो government was expecting 111 to 117, 10 to 15% वहाँ पे reduction था. हमारे stocks were all time low. In that scenario, we would have ended up after 8 months or 9 months importing wheat at a higher price. So I strongly believe that government had no option but to stop export. And sorry to say that has impacted farmers negatively, and they should have been compensated. And my personal opinion was that the government should have given more bonus to the farmer, तो उनके जो गोडाउन से fill हो जाते हैं, and that would have worked better. Thank you, Deepak, and I must say we have exhausted our time, but I must thank my very enlightened and very expert panelists, and I hope you had some takeaway. And as I promised that we end up having some difference of opinion and fight, so I was not very successful, but to somewhat I was okay. And all their mistakes are mine, my moderating, and I'm very happy to be interacting with you. And thank you, ICAP, for this opportunity. And gentlemen, continue rest of the sessions and we'll interact more. Thank you very much. Thank you.
M.J. Saxena, Advisor, Dabur Ayurved, to kindly do the honors of presenting one to our eminent moderator for this session. Dr. Saxena to present one to Mr. Sudhakar. Thank you. Ladies and gentlemen, I would request everybody to kindly remain seated. We are straight away moving to the next session. Kindly give us few minutes while we arrange the top table for the next session. Requesting everyone to kindly remain seated. Dabur Ayurved, our distinguished moderator, to kindly moderate this session. Chair and moderate this session. Let's put our hands together to welcome him. I also invite our eminent speakers, Mr. Shubham G. Tangarwal, co-founder G Fresh Agrotech. May I invite you, sir? Mr. Shubham G. Tangarwal. I invite Mr. Puneet Singh King, Director, Northern Farmers Mega FPO. I invite Dr. Ankita Pandey, CEO, Exports MP. I invite Shri Yudhveer Singh, National General Secretary, Bharatiya Kisan Union. I invite Mr. Kamal Singh Chauhan, Progressive Farmer, Mushroom Farming. I invite Dr. Sudhir Kochar, former ADG IPR, National Coordinator, NAIP ICAR. I invite Professor M. Moni, Chairman ICFA Working Group on ICT and former DG NIC. I invite Dr. Anup Kalra, Executive Director Ayurved. I invite Dr. R.V. Ramakrishna, General Manager Delhi NABARD. Once again, I would invite all our eminent speakers for this session. Dr. M.J. Saxena, Advisor, Dabur Ayurved, is chairing and moderating this session. Our eminent speakers are Mr. Shubham G. Tangarwal, co-founder G Fresh Agrotech, Mr. Puneet Singh Thin, Director, Northern Farmers Mega FPO, Dr. Ankita Pandey, CEO, Exports MV, Shri Yudhveer Singh, National General Secretary, Bharatiya Kisan Union, Mr. Kamal Singh Chauhan, Progressive Farmer, Mushroom Farming, Dr. Sudhir Kochar, former ADG IPR and National Coordinator NIP ICAR, Professor M. Moni, Chairman ICFA Working Group on ICT and former DG NIC, Dr. Anup Kalra, Director Ayurved, and Mr. R.V. Ramakrishna, General Manager Delhi NABARD. So ladies and gentlemen, I now hand over to our distinguished chair and moderator of this session, Dr. M.J. Saxena, Advisor, Dabur Ayurved. And I'm sure he's well known in the agriculture sector, needs no introduction. And sir, the time duration for the session would be approximately 1 hour 50 minutes. Over to you, sir. 1 hour 30 minutes, sir. Over to you, sir. Thank you, Sapna. Thank you. And once again, good afternoon. आप सभी लोगों को बहुत ही आनंदपूर्वक प्रणाम और मेरे साथ में लेफ्ट और राइट दोनों ही बहुत ही इमिनेंट स्पीकर्स पर्सनैलिटी एंड पीपल हु नीड्स virtually no introduction and of the dais also इतने ज्ञानी लोग हैं कि आज जो हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं जिसमें आपने सुना होगा कि फ्लाइट जो है वो क्लब कर दी जाती है, एक फ्लाइट लेट होती है, एक थोड़ा जल्दी, वैसे ये 2 सेशन भी क्लब कर दिए गए हैं। उद्देश्य जैसा कि डॉक्टर खान ने एक बीड़ा उठाया है कि निर्यात तुल्य उत्पाद प्रोड्यूस ऑफ एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, कैसे हमारे किसान उसका उत्पादन करें और फिर उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए जिससे भारत का निर्यात बढ़ सके। अगर
यहाँ बैठे हैं वो लोग भी किसी आशा से आए हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उनकी कुछ प्रश्न हैं, कुछ उनकी चिंताएं हैं, कुछ उनके बहुत सारे तजुर्बे हो सकते हैं। और यहाँ पे भी जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहे। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना ये चाहता हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि बाहर मौसम अच्छा हो, सुहानी हवा चल रही हो, बंद कमरे में एसी चला के बैठना ये बुद्धिमानी नहीं कहलाती है, उसका आनंद लेना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ लेके जाना चाहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए कि निर्यात तुल्य उत्पाद कैसे किया जाए। समस्याएं बहुत हैं, अगर समस्याओं पर चर्चा करेंगे तो शायद बहुत लंबा समय निकल जाएगा, क्योंकि समस्याएं तो हम लोग लगभग पिछले 40-50 सालों से, जब शिप टू माउथ थे और जब सरप्लस है, सब कुछ देखते आए हैं। मेरा ये अनुरोध है, अगर आप सब लोगों की रजामंदी हो तो आप लोगों के जो सवाल हो, अगर कि मैं ये उत्पाद करना चाहता हूँ, मेरी ये परेशानी है, इसका समाधान क्या होगा, और ये जो पैनल एक्सपर्ट का है यदि उसके बारे में आपके उत्तर दे सकता है तो वो बताएगा। और जब आपके सवाल खत्म हो जाएंगे तो एक राह दिखाने के लिए जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जिन्होंने भारत सरकार की नीति में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, या जो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ एक है कि जो कल बीत गया उससे केवल हम सबक ले सकते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें मैं बस एक छोटा सा जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि जब हमारी कंपनी वेटनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है या जब करती, उसके लिए हम जाते थे और लोगों को बोलते थे कि दिस इज ए एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, वो हमारे को ऐसी नजरों से देखता था, बड़ी गिरी हुई, कि जैसे हमने बड़ी खराब बात करी। तो एक बार उसने कहा, डॉक्टर सक्सेना, कैन आई आस्क यू वन थिंग? मैंने कहा यस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट? मैंने कहा द क्वालिटी इज वेरी गुड, इट इज ऑल टेस्टेड, सर्टिफाइड। He said, do you know what we mean by export quality product? What our people cannot consume, it is unfit for our consumption, we export it to India and third world countries. So never say in your public address to the farmer that your products are export quality product. That was an eye opener for me कि हम भारत में रह के जिस दिन अपने स्वयं की इज्जत करना सीख जाएंगे तो पूरा विश्व भी फिर हमारी इज्जत करना सीख जाएगा। आज हम खुद अपने दाग खोल के दिखाते हैं कि देखो यहाँ से भी फटी है बनियान, यहाँ से भी फटी है, वहां से। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए जिन लोगों की 5, 7, 10 सवाल जिनसे ये एक्सपोर्ट की समस्या और किसानों को निर्यात तुल्य उत्पाद बनाने के लिए, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, क्रॉप हो, और आज जो किसान की वो जो बदली है पहचान कि वो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है,
जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो एनर्जी क्रॉप भी कर रहा है और किसानों के पास, जिनके पास मवेशी हैं, उससे वो बायोगैस भी बन रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस बन रही है और फर्टिलाइजर भी बन रहा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री को ये एश्योरेंस दिया है कि यदि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दो तो जितना भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है इसको जो है इंपोर्ट बंद हो जाएगा और आपको गांव-गांव में फर्टिलाइजर प्लांट और पावर प्लांट लगे हुए दिखेंगे। हिंगोनिया गौशाला है जहाँ पे 3 टन का सीएनजी बनाने का प्लांट लगा है 31 करोड़ की लागत से। प्रधानमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 23 करोड़ की लागत से 6 टन सीएनजी बनाने का बायोगैस का सीएनजी प्लांट लगा है। ये तब संभव हुआ है जब सारे लोग कहते थे कि बायोगैस तो फेल्ड टेक्नोलॉजी है जी, इसको तो सब्सिडी लेके खाने की टेक्नोलॉजी। ये कल तक की बात थी। अब जो समय है सकारात्मक सोच का है और आगे बढ़ने का है कि जो भारत का लक्ष्य है, जो हमारी क्षमता है, उसका कैसे विकास हो जिससे किसान भी संपन्न हो, जिले भी संपन्न हो और वैल्यू क्रिएशन हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो। हम लोगों को याद रखना है कि वी आर वर्किंग इन ए बाउंड्री लेस वर्ल्ड। ह्यूमैनिटेरियन फूड एड प्रोग्राम के लिए विश्व का दबाव है कि आप गेहूं इससे ज्यादा अगर स्टोर करेंगे तो ये अमानवीय कृत्य होगा, तो फिर आपके ऊपर कुछ और भी दबाव आएंगे क्योंकि वर्ल्ड इज बाउंड्री लेस, सबके लिए फूड है। तो इसके साथ अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों के जो भी प्रश्न हो अपना नाम बताएं और आपका क्या प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट पैनल्स में से लोग आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। सर मैं विपिन कुमार। जी जी मैं विपिन कुमार सर, मोदीनगर गाजियाबाद से। और मैंने सर अपना छोटा सा स्टार्टअप चालू किया था आंवले में वैल्यू एडिशन। तो कोशिश यही रहती है सर कि हम अपने इंडिया मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चर करें, बट कुछ उम्मीद होती है, काफ़ी लोगों ने भी कहा हमारे कि यार साथ के तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने साथ के तो कर रहे हैं, बट अपने लोगों की अभी क्या स्थिति है उससे भी देखना पड़ेगा ना सर। तो उसमें हमने तो थोड़ा वर्क किया तो पाया कि सर अभी एक गल्फ फूड एक्सपोर्ट लगा था दुबई में। तो वहाँ पे क्या हुआ सर कि राजस्थान का किसी ने गुलकंद बनाया और उस फार्मर से वो लेके गया, उसने एग्जिबिट किया उस प्रोडक्ट को, गुलकंद को, और शायद वो बता रहे थे कि उन्होंने दुबई में वो टॉप 5 में आया सर गुलकंद। तो वो जो एग्जिबिट कर रहा है तो उसका प्रमोशन हुआ, उसका नाम हुआ, पर जो किसान ने बनाया था उसका कोई नाम नहीं हुआ, तो उसका कोई पैसा नहीं बना। तो सर कुछ ऐसा हो सकता है हम जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए या स्टार्टअप के लिए कि अंडर वन रूफ कुछ व्यवस्था बन जाए कि ताकि हमारे जो एपीडा और भी कई चीज़ें हैं ना सर वो हमारे को सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। आप लोगों में सरकार ने इस तरह की कई योजनाएं बनाई हैं। एक उसमें से ऐसी योजना है जो मुझे लगता है FPOs की योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। शायद आप इससे भली भांति परिचित होंगे या आप जिन किसानों के साथ काम कर रहे हैं इस योजना का मुझे लगता है उद्देश्य यही है कि किसान खुद प्रोड्यूस करे, कलेक्टिवली उसको प्रोसेस करे और उसको फिर एकत्र होकर उसकी मार्केटिंग करे। हम लोग ऐसे ही कुछ समूहों के साथ काम कर रही है। हमारा जो संस्थान है आयुर्वेद या आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन, और उसमें जैसे आपने अभी जिक्र किया ऐसे ही हमारे कुछ किसान भाई हैं जो गुलाब पैदा करते हैं और गुलाब की प्रोसेसिंग भी करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से इस और कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही जो है जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी बात कहने की, अपनी प्रोडक्ट से वैल्यू क्रिएट करने की और अपने FPOs को सस्टेनेबल बनाने। मेरा ये सुझाव है जी। वो तो सब ठीक है, बट मेरा जो एक मेन उद्देश्य पूछने का ये था कि जैसे एक अंडर वन रूफ क्या हमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती है, जैसे अपीडा वहाँ नोडल एजेंसी बैठी है, वहाँ पे FSI है,
वहाँ पे और भी जो हमसे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम आती है कि इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, मुझे लग रहा था कि आप अपना जो प्रश्न पूरा करेंगे कि आंवले का, उसमें क्वालिटी का इशू आएगा कि भाई हमने पहली बार एक्सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा लगा बायर को, दोबारा किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, और फिर हम कहाँ जाएं कि जो हमारा सर्टिफिकेशन है फिट फॉर एक्सपोर्ट ये एजेंसी दे, जिससे कि माल वापस लौट के आने की संभावना ना रहे। तो आप निश्चित रूप से इन संस्थानों से जुड़ें, और यहाँ पे भी आप जब आए हैं तो एक तरीके से आप जोड़ दीजिए कि इतने सारे एक्सपर्ट यहाँ पे और वहाँ जो बैठे हैं वो आपके समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास भी करेंगे। So, if I can say something, sir. Yeah. So, my name is Ramakrishna. I am in India for promoting farmer producer organizations across the country. So, as Kalraji was saying, one of the options is to work through farmer producer companies, where a lot of training and capacity building inputs plus a lot of capacity development inputs are being provided to the FPOs, where this can also be some such inputs. In addition, NABARD has supported 7 Agri incubation centers. These are Agri incubation centers are located in agricultural universities. They are exclusively meant for supporting such issues with startups, because startups, when they set up shop, they have various issues starting from the product development or the product testing or proof of concept, or the domain expertise, sometimes support from the research community, sometimes commercial aspects of organizations. So you can please look on the NABARD website to see if there is an Agri incubation center to the place where you are located. Please try to go to the Agri incubation center, which is normally located in agricultural universities. I think we have one in UP. I don't exactly know the location now, but you can search for it in the website. And like for example, yesterday I had 3 startups having a small short meeting with me, precisely coming with such issues. One person was producing, it's called Attaware. He was producing with jaggery as a primary input, plus with grains, he was producing what you call as this eco-friendly cups, which can be, you can drink tea or coffee with that, and if you want, you can consume the cup yourself because it's made of jaggery, or it can be thrown as food for the animals. Animals can consume it. So it is not going to destroy the environment by use of plastic. So he was asking me, now this is a product which I manufactured. Do I require any certification for this? Yeah. So, and this is the precise reason, because I am not in a position to answer, and satisfy everyone's request for such inputs. We have worked with this Agri incubation centers in agricultural universities, who will have domain experts from various fields, who will try and address your problem. In case they don't have an immediate solution, they will find a solution for this. So try to locate the nearest Agri incubation center and approach them. Plus you also have the NABARD DTM in case he is around in the district you are located. You can also approach him for networking and connecting you to relevant people. Thank you. District level committees are working throughout the UP. So their main objective is to promote agriculture, export. So they will help him connect with the whatever problem he is facing with the relevant authority. If he wants to know, he can contact me after the later on. As well as heat energy, thermal energy, as well as you see syngas, and so many things are coming out of it. We have the technology. How can see, biomass is a problem now. Yeah. But we say it's a boon. It's not a problem. So recently, projects, one of the 10 projects recommended by PMO, one of them is ours. And we have the machine,
It's a pyrolysis process machine which does burn the biomass in absence of oxygen, partial basically, and it produces heat energy, it produces biochar, it produces bio oil, and it produces syngas as well, which can be converted into enriched hydrogen gas fuel, and then the nitrogen, which is an inert gas as well as carbon dioxide, can be used for storing the grains, which is a basic problem. So with the thermal energy we produce, we have already tied up with the company. We can set up our own storage. टेक्नोलॉजी सपोर्ट का कोई we can give about 1 billion tons of biomass available. But I was wrong when I went to Lucknow ICFA meeting, and over there I talked to the sugarcane department of UP, and I was astonished. Only the biomass trash as well as bagasse, 800 million tons available only in UP. So my estimation, when you can see the entire India has at least 5 billion tons of biomass we have. And we can have enriched hydrogen only. There are different products, about 28% of it. Plus, you see inert gas, which is nitrogen as well as carbon dioxide, you can store, as well as you can use it for promoting the. ग्रेवाल साहब एक्चुअली क्या है कि सवाल कोई जो टेक्नोलॉजी से what kind of help we can get from the टेक्नोलॉजी सपोर्ट का futuristic technology for agriculture in order to increase the soil humus, वो बेसिकली किया है. तो क्या नाबार्ड उसमें किसानों के समूह को उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए योगदान देगा या कोई योजना है ऐसी? I think this is what is his question. So, let me rephrase what I understood from you. You say you have the technology and you want to further it. Fine. Fine. NABARD credibly works with lots of small farmers, where I think the scale which you are talking of, the huge amount of biomass you require for that processing that using the technology is going to be huge. So what I would suggest is, because this is also a very important aspect of the way we deal with climate issues. NABARD, we have exclusive climate cell in NABARD, which tries to work with various state governments in solving issues of climate change, whether adaptation or mitigation. I am very sure that the technology which you are promoting with biomass can be a very good project under the National Adaptation Fund for Climate Change, or the Adaptation Fund Board, which we are about to get about $10 million from UNFCCC. We can definitely conceive a project along with you and the UP state government, where we can work on that. Excellent. Just to add another thing, it's we have a zero carbon footprint, as well as we sequester the carbon from the atmosphere, and for which we are claimant of carbon credits. So I would suggest ग्रेवाल साहब एक इसका आप पेपर बना के जरूर दें, and probably अभी के लिए we will have to restrict our discussion, otherwise जैसे ही climate change involved होता है तो discussion आपके थ्रू दे दूंगा मैं, क्योंकि herbal production is also part of it. Yeah, absolutely. So appreciate and it will be great. Any question or anybody who has to share about सर जो क्रॉप्स की बढ़ानी है, चाहे वो आपकी डेलिकेट क्रॉप है, शेल्फ लाइफ जिसकी लो है, उसका क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लाते हैं, उससे वेजिटेबल्स किसान जो है आपके साथ जुड़े उनको कितना फायदा हो पा रहा है, और क्या वो एक्चुअल में कारगर है या सिर्फ पेपर्स पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि ये चीज हो रही है, वो हो रही है, वो सच में हो रही है? प्रोबेबली आप एक सही व्यू दे पाए उसका. Thank you. Thanks for raising a very valid question. अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आई एम प्रेजेंटली रिप्रेजेंटिंग इज नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ. ये 43 एफपीओस की हमारी पंजाब और हरियाणा की एफपीओस की फेडरेशन है. इसमें हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो पिछले सेशन में दीपक जी ने मेंशन किया था. नियर टू फार्म प्रोसेसिंग को लेकर जाएं, पैक हाउस. हम
हमने पहले बड़े बड़े मेगा फूड पार्क्स बनते देखे हैं, और फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र से और खासकर पूना नासिक, जिसको हम इंडिया का सबसे हॉर्टिकल्चर का सबसे प्रोडक्टिव हाईवे कहते हैं, वहाँ रहकर वहाँ FPOs बनाकर उनसे हमने सीखा कि जो ग्रेप स्टोरी है उसको हम बाकी जगह पे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारी नॉर्थ इंडिया की कम्युनिटीज़ के लिए। अब नॉर्थ इंडिया में देखिए क्या है कि हम धान के बाद सब्जियां लगाते हैं, पंजाब हरियाणा में बासमती के बाद हम आलू लगाते हैं, तो हमारे पास जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स आती हैं सब्जियों वाली, उसमें अभी हमारी जो वेस्टेज है वो हैंडलिंग की वजह से ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन जो प्रोसेसिंग के लिए टमाटो है, जो अब हमारे पास जितने भी पेस्ट प्लांट हैं टमाटर के, खासकर अगर कहें यहाँ पे, या स्ट्रॉबेरी, अब इस बार आपने देखा कि गर्मी पिछले सीज़न से अगर इजी समझें तो जो हमारे एयर कंडीशंस मई जून में जाकर चले थे वो इस बार फरवरी एंड ऑफ मार्च में चल रहे थे, तो उसका वीट पे भी असर हुआ है और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उस पर भी बहुत इस हीट का असर हुआ है। अब इसका सोल्यूशन, जैसे सत्यनारायण जी कहा, हम सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, वो ये था कि बड़े बड़े मेगा फूड पार्क उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको डायग्नोस किया, उसमें कमियां क्या थी। उसमें कमी ये थी कि आपने एक 800-900 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके एक उसका जिसको डिज़ाइन तो किया गया हब एंड स्पोक मॉडल पे कि एक मदर प्लांट बड़ा लगा दिया, फैसिलिटी लगा दी, लेकिन उसके कलेक्शन सेंटर तो बनाए नहीं। लुधियाना में या जलंधर में एक फैसिलिटी लगा दी, लेकिन जो उसका कैचमेंट एरिया है जहाँ से प्रोड्यूस आनी है वो लेट्स से कि 100 किलोमीटर है, जहाँ पे कोई इवन छोटा कोल्ड रूम नहीं है। तो हम रीपर्पस उसको करके देखें कि जो पैसा हम एक जगह पे बड़े यूनिट्स पे लगा रहे हैं उसकी जगह पे छोटी छोटे यूनिट्स बनाएं। अब छोटे से मतलब इतना छोटा भी नहीं है कि वो कुछ वाइबल ही ना हो पाए। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, हमारे साथ ENY से जो टीम है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर जो काम कर रहे हैं, क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक स्कीम बनाई जिसमें उन्होंने FPOs को, मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी स्कीम नहीं होगी जहाँ पे 90% उन्होंने कैपिटल ग्रांट दी है फैसिलिटी FPO के लेवल पे क्रिएट करने के लिए। दूसरी उसमें अच्छी चीज़ ये है कि कोई टेंडर नहीं निकाला, FPO खुद डायग्नोस करे कि मेरी फोकस क्रॉप क्या है FPO में। अगर मुझे टमाटर हैंडल करना है तो मुझे उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसको बाउंड किया 10-15 किलोमीटर के अंदर अंदर। क्लस्टर की जो मैपिंग की है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है कि हम कोई ऐसी फैसिलिटी क्रिएट ना करें जिसका लोकल क्रॉप को फायदा ना हो। नंबर 2, हम कोई ऐसी चीज क्रिएट ना करें जहां वो प्रोड्यूस ही नहीं है। तीसरा, जैसे हम इस सेशन में बात करने वाले थे अदरवाइज इंडस्ट्री रिलेशन के लिए, ये पूरी वैल्यू चेन को कुछ हिस्सों में बांट कर करना पड़ेगा। पूरी वैल्यू चेन को अगर हम समझे, उसमें कुछ हिस्सा प्राइमरी प्रोसेसिंग का है, कुछ लॉजिस्टिक्स का है, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। जितना ज़्यादा काम हम ग्रेडिंग का, सॉर्टिंग का, वॉशिंग का, उसके स्टोरेज का अपने क्लस्टर में करेंगे, हम उसकी वेस्टेज को वहीं पे कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आलू के एग्जांपल से, पोटैटो से आई थिंक समझाऊंगा तो बड़ा इजी समझ आएगा कि जब हम मंडियों से, देखिए अब आजादपुर में होरेका से या कोई हॉकर है या कोई रेस्टोरेंट वाला है, जब वो आजादपुर से कोई भी पोटैटो की एक बोरी भी अगर वो लेके आता है तो उसको 7-8 किलो तो मिट्टी मिलती है उसमें, क्योंकि उसकी हैंडलिंग इस तरीके से हुई है। अब FPO बनाने का देखिए सीधा फायदा तो ये ना, आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करोगे इसमें, वरना आप सिर्फ FPO पेपर में है अगर आप वो काम नहीं कर रहे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या हम उसको इंटीग्रेटेड पैक हाउस कहते हैं, वो क्लस्टर में लगाया जहाँ पे आलू सीधा ट्रॉली से हमारे पैक हाउस पे आए, और हम वो बोरियों का कंसेप्ट खत्म कर रहे हैं कि फार्मर सीधा ट्रॉली लेके आए, बड़े ऊपर उसको डाले और एक मशीन उसको इजीली उसको ग्रेडिंग भी कर दे। उसकी इसमें आलू में वॉशिंग तो नहीं होती, लेकिन उसमें हम बैलेट पे चला के जितनी भी उसकी डस्ट है मिट्टी निकाल देते हैं, और आलू जो फाइनल ग्रेडिंग के बाद निकलता है वो बिल्कुल क्लीन होता है। देन यू कैन उसको स्टॉक में, जो भी आपका पैकिंग साइज है, छोटा बड़ा, या कंज्यूमर जो सीधा 5 किलो का बैग उठा सके या 10 किलो या छोटी पैकिंग जिसको चाहिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमने जो उसमें रॉटन था वो वहीं पे कंट्रोल कर दिया, हम उसके ऊपर 8-10 किलो के ऊपर अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली तक का बियर नहीं कर रहे। नंबर 2, जो खरीद कर उसको साफ करेगा, यहाँ तो 500 में लेबर मिलेगी दिहाड़ी पे, वो काम हम क्लस्टर पे इकोनॉमिकली कर पाएंगे। सो पॉइंट
आपके क्वेश्चन का आंसर सीधा सा है कि आपके पास जैसे जंग लड़ने के लिए हथियार चाहिए, वेस्ट कंट्रोल करने के लिए आपको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कोल्ड रूम, ये सारी चीज़ें हों, और उसको वाइबल करने के लिए क्रिटिकल आपके पास उतनी प्रोड्यूस भी हो। ये एक तरीका है। और बाकी हर प्रोड्यूस की नेचर अलग है, उसकी टेक्नोलॉजीज अलग हैं। फ्रेश की बात करें तो आजकल अगर हमने वैक्यूम फ्राइड, आजकल भिंडी जो वेस्ट हो रही है, दिल्ली में काफ़ी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो अभी वैक्यूम फ्राइड सब्जियों के स्नैक्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं वो। जो हमारी मान लो कि भिंडी जिसकी शेप अच्छी नहीं है, उसको हम ना फर्स्ट में डाल सकते हैं ना सेकंड में जाएगा, वो जाएगी कहाँ, वो कट होके। अब क्वेश्चन आता है उसका बनाओगे आप क्या, ठीक है ना। वो भिंडी तो भिंडी है, आप उसको रेडी पे अदरवाइज बिकना है, लेकिन अगर सुटेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रोसेसिंग की अवेलेबल है तो हम उसको काट के वैक्यूम ड्राई करके उसको पैक करके स्नैक्स में बेच सकते हैं। और कई एक्सपोर्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ इसमें, कई जगह ऐसी हैं कि आप फ्रेश प्रोड्यूस को बिकॉज ऑफ सर्टन टैरिफ और नॉन टैरिफ रीजन आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करके सब्जी को स्नैक्स बना दोगे वैक्यूम फ्राइड, या मशरूम को आप प्रोसेस कर दोगे, या इंग्लिश कैरेट को हम प्रोसेस कर देंगे, तो एक्सपोर्ट उसकी मार्केट ऑलरेडी बड़ी अच्छी है। Thank you very much. Thank you. And I think one point what he mentioned, and that is a important point, कि medicinal plant का जानता हूँ तो 60% कॉस्ट आती है लेबर की, और किस चीज के लिए आती है? निराई, गुड़ाई, खरपतवार निकालने के लिए, और हार्वेस्ट करके उसको फसल को सुखाने के लिए। तो ये जो एक अभियान लिया है, भोपाल वालों से भी कहा है कि देखो औषधि पौधों की खेती बहुत बढ़ सकती है, आप इसका तो सलूशन निकालो। और आपको जान के बड़ा दुख होगा कि जब फसल तैयार रहती है उस समय लेबर नहीं मिलती है उस प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करने के लिए, और वो चीज़ खराब हो जाती है। खेती में जैसे होता है ना कि भाई अगर आपने समय से नहीं निकाला तो उसके कंटेंट खराब हो जाएंगे, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्मॉल फार्मर को ध्यान में रखते हुए, हम उसको एकाएक बड़ा नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके अपने लिमिटेशन हैं, लेकिन उसको टेक्नोलॉजिकली इक्विप कर सकते हैं कि जो सिंपल से साधन उनको वो अडॉप्ट करके वैल्यू क्रिएशन करे, जिससे उसको भी 4 पैसे एक्स्ट्रा मिले। और आज़ादपुर में अगर सोचें कि एक बोरी में अगर 3 किलो रेत आ रही है, और आज़ादपुर में मेरे ख्याल से आलू की बोरियां करीब 10,000 रोज आती हैं। 10,000 में आप सोचिए 3 किलो के हिसाब से हम भाड़ा किस चीज़ का दे रहे हैं? मट्टी का दे रहे हैं। ये सोचने की बात है कि वैल्यू क्रिएशन होगा कैसे इसमें। जी, आप कोई एक सवाल पूछे? नहीं सर, सवाल नहीं पूछ रही थी मैं, पुनीत जी को सेकंड कर रही थी। उसमें कुछ चीज़ें और हैं। सबसे पहले जो हरियाणा ने किया, सारा क्लस्टराइजेशन किया, उसके बाद टेक्नोलॉजीज भी बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज। अब स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे तो पहले स्ट्रॉबेरी में फंगस बहुत जल्दी आ जाता था। टोमेटो का आप देखेंगे तो वहाँ पे नया टोमेटो का प्लांट आ रहा है, डायरेक्ट है FPO जहाँ पे है वहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट आ रहा है। और पोटैटो में सीड प्रोडक्शन थोड़ा होता था, इनकी कंपनी फर्स्ट थी उसको प्रोड्यूस करने में। आज नेक्स्ट ईयर तक 4,000 एकर्स में सीड प्रोडक्शन होने वाला है। इस साल 250 एकड़ हुआ था, अगले साल मैकिंग सिद्धिविनायक के साथ 4,000 एकड़ में पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है सीड की। तो इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, और सारे फार्मर्स ने मिलकर ये कहा। Of course, as EY, we are supporting Haryana government, but farmers. लेकिन जो किसान को प्रति एकड़ या प्रति 100 किलो में फायदा कितना हो रहा है, और क्या वो जो लागत लग रही है और उनकी अपनी मेहनत, उसका मूल्य उनको मिल पा रहा है? सर, हमने जो एनालिसिस की थी उसमें तो
कितना था वो तो नहीं याद, लेकिन मिल रहा था। इसकी जानकारी की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं होती है किसानों को तो चीज़ ओवर प्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे ही ओवर प्रोड्यूस होती है उसमें सबको फिर नुकसान होता है, क्योंकि प्राइस एकदम से जो है वो डिप हो जाता है। कल्टीवेशन कॉस्ट एंड 70 रुपीज़ आ गया था हमारा, मतलब तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारा ABC तीनों ग्रेड हो गए थे और आ गया था 30 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। So I need to submit here. हॉर्टिकल्चर में अभी तक कई बार हमारा इंप्रेशन होता है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। मुझे लगता है कि इशू पोर्टेबिलिटी का है। अगर हम अपनी प्रोड्यूस को 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सारे इस क्लस्टर में समेटने की, बेचने की कोशिश करेंगे, छोटियाँ मंडी होती हैं, बाहर से एक गाड़ी आ गई, कुछ आप ले गए, वो बैठ जाती है मंडी। पोर्टेबिलिटी के साथ क्या होता है कि अगर आपके पास कोल्ड चेन जैसी फैसिलिटी है, जैसे पंजाब से किलो बांग्लादेश तक जाता है, गलत आता है छोटी मंडियों में, अगर हम किसी तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट या उसकी सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज कर लें, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसी प्रोड्यूस होगी जो लोगों ने खाना बंद की हो, लेकिन हम उसको बेच और पहुंचा नहीं सकते वहाँ तक। स्ट्रॉबेरी हिसार में, सिहाड़वा में जितनी चाहे ज़्यादा हो जाए, गलत आ जाए, वो चंडीगढ़ नहीं पहुँच रही। सो जो काम हिमाचल की प्रोड्यूस में हिमाचल ट्रांसपोर्टेशन उनकी बसेस के जरिए सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल दैट वी कैन फॉलो, जहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिस्टिक्स के इशू हैं। आपका जो पॉइंट है, if you allow, please. I'm संजीव शर्मा from Exports, okay sir. Fortunately, बिल्डेड जैसे कहा गया, हरियाणा गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है, बहुत इनोवेटिव। उसमें हम लोगों ने बीइंग अवर मैंडेट विद द सेम सेक्शन फार्मा, हम लोग भी कंट्रीब्यूटेड रहे हैं। तो ये जो कुछ फार्मर्स थे हमारे, 10 फार्मर को हम खुद अपने आप उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र लेकर गए थे उनके फार्मर्स के पास। तो वहाँ से सीडलिंग और जो भी टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम किया था। तो उसमें मैं पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ऑन द RO साइड विच यू वांट टू नो द यील्ड एंड ऑल, आई थिंक यील्ड तो उनकी लगभग आ रही है। व्हाट मैटर इज द ब्रिक्स लेवल। वो ब्रिक्स लेवल उसका 8.5% से ऊपर आ ही नहीं रहा है। सो माई पॉइंट इज, जो अभी इससे पहले सेशन में मिस्टर दीपक ने एक पॉइंट उठाया था, we need to know where we are suitable. You require some deeper work into that. And the similar उसी एरिया में हमने सेम उसी फार्मर वहाँ से लेके गए थे, और इस एरिया में किन्नू का प्रोजेक्ट भी हमने सपोर्ट किया था। We exported to दुबई also, और दुनिया मतलब हिंदुस्तान के 16 शहरों में हमने वो किन्नू इस बार पिछली बार ब्रांड करके एक्सपोर्ट किया था। Now the FPO is doing their own self, so we have trained them, capacity build. So coming back to the strawberry point, स्ट्रॉबेरी अच्छी है, यील्ड अच्छी है, फार्मर कैपेसिटी बिल्ड कर चुके हैं क्योंकि वो तीसरे सीजन में इसमें कर रहे हैं। अब द ओनली पॉइंट इज मार्केटिंग, वी ट्राई टू हेल्प देम आउट, वी डिड द टेस्टिंग, उसका रिस्पॉन्स यह है, देखने में अच्छी है, बड़ी है, लेकिन मीठी नहीं है। सो इवन एट सर्टेन पॉइंट द टोमेटो फ्रॉम दैट एरिया इज हैविंग बेटर ब्रिक्स लेवल देन द स्ट्रॉबेरी। सो आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज हियर, वी नीड टू डू समथिंग एट दैट लेवल, एट माइक्रो अल्पाइड लेवल। Now, I would like to stop at this stage. The thing which is going to be very, very important is a GI tag of the produce. So we have an expert with us, Professor Moni, who has been advocating and recommending to the government how this GI tag issue can be implemented in agriculture, particularly for the food production item. Because you will have a competition with Pakistan, they will also do the same thing what you will do, because they are also, with Bangladesh also it will be. So the differentiation of Indian produce, and it is going to be monitored from the satellite. Is it really done in your produce, or you have imported, repacked and exported? So Dr. Moni, I would like to ask your views, how our farmers can prepare themselves for निर्यात तुल्य उत्पाद बनाने के लिए GI टैग को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? Thank you, Chairman Saab. That is a very big issue. Even though
I have been working in the field of digital technology in agriculture sector for the last 30-35 years. But with the globalization now, and also that GA tag enabled agriculture commodities can bring a lot of values, money to the farmers. It is very important, and after listening to a lot of questions which the participants have put in, it's very nice that when you started a session, let us hear from them and then discuss and then go back to them. Let me give that why Dr. Saxena has called me to talk on this issue. I was associated with the Dublin Farmers Income Committee report as a group leader for 2 volumes, volume 11, that is on, farmer and ICT and agriculture extension. The second one is that volume 12, which is on science and technology for Dublin Farmers Income, but I exclusively dealt with the digital technology in agriculture. So the chairman of the Dublin Farmers Income Committee report has put it as a volume 12B. And this GA tag is very important, that what I would like to request the farming community and all the associated stakeholders, that 7 mission mode programs which we have suggested is to 4 chapters in volume 12B, and I do not know why, even though the report has been submitted in the month of September 2018, but till now the government has not come out with any strategic plan on these 7 mission mode programs. But now the government has announced a digital commission on agriculture. So what I thought that during the COVID situation, that how to propagate the recommendations of the Dublin Farmers Income. Being a farmer, Director General NIC, working grassroots level programs since 1987, 512 districts computerization, then 95 bringing in IT blueprint for agricultural sector, then now converted those programs into agricultural informatics after retirement in the university, so with university as agricultural informatics as a discipline. Today you cannot bring in technology for our world farmers. We have to train the rural youths. The rural youths are the future. We have to, technologically we have to bring in digital transformation. So that, with this one, what I thought was that during the COVID situation, we had 2 webinar series every week. One is on, in order to promote the Dublin Farmers Income recommendations, I took the responsibility to have national webinar series on Dublin Farmers Income by 2022. And every Thursday at 11 o'clock, bringing in experts, talk to them for 2 hours, make that video available, and also necessary to have a policy papers. In this one talk was on GI tag. It's very important. And so many commodities taken from turmeric, taken from various spices commodities, agricultural commodities, and so on and so forth. We have 450 agricultural commodities, and Indian agricultural commodities have to have GI tag because it comes from 127 agroclimatic zone. And next one is that our community has got its own taste to produce items. And we grow commodities based on the climatic conditions, 127, 365 days on sunshine. And this is very important. And this is one aspect that let us produce the commodity which can be consumed by not only also in India but also outside. Dr. Saxena said that don't say that we are exporting items to abroad because for them the meaning is different. But the thing is that today I was conducting the webinar programs. Our Indian
people living in other countries and trying to have Indian imports to their country. They said many of the countries our dairy products are banned. So in a way, Dr. Just to GI tagging will help Puneet if he goes for, and it will enhance the value in the export market or even in our. No, not only that. With the GI tag, he can with the digital technology, today you know that where it is being grown, it is in what soil condition it is being grown, and then even in the the soil conditions, water quality, and also that all the diseases. Today we don't even look into the disease management. The thing is that 75% of the diseases which we get come from animals. करना क्या है export के लिए वो बताइए. And so the thing is that with all the parameters that you are able to have a farm wise, if you convert farmer and farm as a digital token, if that is attached with the what product which goes from his farm, and if that is, it goes along with the digital token from the agricultural commodities, and we can fix the price, not the other people. The farmer can fix the price which he produces it. That is my conviction. Yes. Sir, I have a question कि GI टैग हमें ना लगता है कि एक डबल एज सॉर्ड भी है. ये दो तारी तलवार है जो किसी तरफ भी चल सकती है. मैं आपको बासमती के एग्जांपल से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ओवर फुटहिल्स में बासमती, वी ग्रो बासमती ओनली इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय. कुछ एरिया पाकिस्तान में, कुछ अभी हरियाणा, पंजाब एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये लिमिटेड वेल नोन फैक्ट है कि यहाँ हम बासमती ग्रो करते हैं. एंड वर्ल्ड ओवर व्हेन अमेरिका में किसी ने टैक्समती के नाम से इसको अप्लाई किया, तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कलेक्टिवली वी हैव अपोज्ड. अब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश ने जीआई टैग अप्लाई कर दिया विद इन इंडिया. नाउ पाकिस्तान इज डिमांडिंग एंड एक्सपेक्टिंग फार्मर फ्रॉम पंजाब टू अपोज अगेंस्ट मध्य प्रदेश. होगा क्या कि जितना आप एरिया कर दो, तमिलनाडु भी ग्रो करना शुरू कर देगा. और अफ्रीका में मैंने आई हैव सीन इन अफ्रीका, इन इथियोपिया, सूडान, वहाँ पे भी हमारे लाहौर वाले और पंजाब वाले पहुंचे हुए हैं, बासमती वहाँ भी ग्रो कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि हम रोकेंगे किस को, और कहीं ये ना हो भी हर चीज़ ही, क्योंकि पॉलिटिक्स भी अपना रोल प्ले करती है. वाई नोबडी इज टॉकिंग अगेंस्ट कि यार एमपी में बासमती कहाँ से आ गई. I think it is good that our IPR agency authority has decided on that. That what I read, that Basmati is supposed to come from the Himalayan region. But now people call the such type of variety is grown in Madhya Pradesh. They are getting GI tagging. They are tagging, but the thing is that that loss to us. It's a loss. It's a loss. But the thing is that we have to take a conscious decision with respect to its own quality parameters. And if that is not done, if you have one wrap for everything, it has a problem with it. It will have an impact, within the country, within the region, and so on and so forth. So that exactly is my question. I mean, GI tag करके it's a hallmark. When I am talking to a Dubai or Middle East buyer, and मेरा कंपटीटर एमपी से आके कहता है यार हमारी भी जीआई टैग है, और मैं कहूँगा मेरी भी जीआई टैग है. ठीक है ना. I mean, वही तो क्वालिटी का पैरामीटर है. When गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि अब तक बासमती होती नहीं थी, अब 5, 6, 10 साल से चलो बासमती होनी शुरू हो गई है, दोनों को जीआई टैग दे देते हैं, तो जीआई का मतलब कहाँ रह गया सर? It's a very good question. Sir, the experts working in this area have to redefine. Like for example, turmeric. Now the turmeric, the GI tax, and also along with its procurement factor, it brings more money. So like that, in the same manner, you grow commodities in any region, in any place. Good morning. I think Puneet has raised a very valid question, and we are experiencing this, that having GI tag is not sufficient. I can give you an example, many examples. One example is Jeera 4 rice, which is cultivated in Chhattisgarh. It has got GI. The GI advantage is that some community is getting GI. So how that community is getting benefit? Or it's from some area. Now that Jeera 4, I know that we are a part of that GI,
and I know the community also. But the Jeera food is now available in whole of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, even part of UP. But that community even doesn't know. The community who has really got the GI, they are not even aware that it is happening like that. So the getting GI is not a problem, but subsequent portfolio management of the GI is really a challenge. And it's not, what he said is difficult. It's difficult. It's not that easy. To whom you will stop? See, for example, I come from a district called Kanyakumari. We grow 25 varieties of banana. 25 varieties. And we try to export some of the banana, it doesn't even reach Delhi, but we would like to send it to America. But these 25 varieties, that even if you would like to grow in other parts of the country, it doesn't grow. And we have to have, when we define GA, once upon previously they would have done a normal definition, but now we have to get into the drill down that how we to differentiate one product from one particular region, how to differentiate. The soil quality is very important. And if they, along with the soil quality, and with that's what I said in the digital token, for a particular commodity from a particular area, this is what is growing. Because in some of the commodities that, we can even find out that for the last 20 years back, what was the quality, what is the, characteristic and what is the characteristic now. Now the same thing that you take a drumstick, the drumstick Buringa, that the drumstick which comes from southern part of Kerala, southern part of Tamil Nadu, is totally different from the drumstick which we get it from the Bihar and other parts. The thing, so it varies depending upon our taste, depending upon how it is being utilized. If those parameters are also associated with the tokens along with the GI tag, I think that that nobody in a position to have any different problems and will be in a position to achieve. I think probably this is again very contentious issue. We all have seen what has happened to apple. You have an apple grown in Garhwal, Himachal, then in premium, then उसको बोलते थे कश्मीर का सेब है, कश्मीर का सेब है, ये हिमाचल का है. But ultimately to a consumer, it is the availability, price and the flavor which he takes. So, but from the futuristic point of view, I think this will become an important issue for the geography identification and variety identification for value creation. You see, there is a project going on producing saffron. Okay, सभी लोग जानते हैं कि भाई saffron जो है कश्मीर में होगी, वो भी जो है श्रीनगर और सोनमर्ग के पास के और इंडिया में 52 kg केवल इसका प्रोडक्शन होता है. उसका बल्ब जो है इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग. देन there were people who said कि यार नहीं हम तो कश्मीर वाला टेम्परेचर करेंगे, कश्मीर उन्होंने उगा लिया अपने यहाँ, लेकिन उसके अंदर स्टेमन आएगा या नहीं. And then it is a lot of cost they have invested in maintaining the poly greenhouse in which they are trying to propagate this saffron. Okay. Now then, so much of saffron comes from Iran, from Afghanistan, where it grows like a weed, and they collect and supply it in the international market. अगर हमने कर भी लिया कि हरियाणा में saffron भी पैदा कर, we are not going to succeed to export that. Even our own people will not accept it. हर आदमी पूछता है केसर कश्मीर वाली है ना, वो हाँ बोल देगा, चाहे वो बेबी सेफ्रॉन हो, चाहे जितने भी ब्रांड हैं, they all are from Iran, Switzerland and Afghanistan. कश्मीर की केसर हिंदुस्तानियों को ही नहीं मिलती है, बाकी वर्ल्ड में सब जगह. My contention is that. So, Moni sahab, I think. No, just 1 minute. That the thing is that unless we have the complete parameters of where our commodity grows, if we are able to in a position to have the digital token, I think Indian commodities can get a good price in the global market.
And that's how the GI has to be redefined. Thank you very much. Sir, change happens. So humans will be like forced to put a GI tag on every food, because then we will have a very limited space to grow those crops over there. So what you are saying, I would just say in one sentence, there are a lot of non-tariff barriers which are imposed by the countries in order to discourage the entry of the product in their country. Now these non-tariff barriers are basically means you cannot have a differentiation of price, so you are trying to put, oh, I require this documentation. Say for example, you must be knowing कि अभी herbs के export के लिए herbs का passport होता है. How many of you have heard of herbs passport? How many of you have heard? Okay. Now the question is what that passport name has been given. So the person's passport has essentially place of birth, name of the mother and father, your permanent address, your age and all that document. Same thing in the passport, herbs passport. We have to maintain if it is cultivated, where it has been cultivated, by whom it is cultivated, where it has been tested, what is the variety, what is the authenticity. So that is coming as an additional requirement to discourage the countries who have got, like you have heard of anti-dumping duty. Anti-dumping duty क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि भाई ठीक है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने लाके हमारे यहाँ कर दिया, हमारे सारे किसान जो है वो परेशान हो जाएंगे. तो those are non-tariff barrier also are there. But again, coming back to the same thing, how our deliberations are going to help increase the export of our agricultural commodities. sir, I have 2 points regarding this, what you just said. Can I add? Sir, if I may continue. आपके क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एक सीधा सा आंसर ये है कि जो चीज़ हम प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं ना, जीआई बनाने लेने से काम नहीं चलेगा. हर चीज़ को ना पहले बेचना पड़ता है. सो अगर अथॉरिटी ने उसकी वैल्यू ही मार्केट में जीआई टैग की इतनी ज़्यादा कस्टमर की नज़र में क्रिएट कर दी, तो कस्टमर तो उस जीआई टैग की वैल्यू को देखकर डिफरेंशिएट करेगा. जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉबेरी कहीं हाइड्रोपोनिक या इंडोर कहीं पैदा कर ली और एक के ऊपर जीआई टैग लगा है. अगर वर्ल्ड मार्केट में जीआई टैग की वैल्यू इतनी स्ट्रांग होगी कि हम उसका स्टैंप देखकर खरीदेंगे, तो जीआई देने वालों को या क्रिएट करने वालों को उसको बाजार में बेचना भी पड़ेगा. जैसे हम कहते हैं कि कोई पॉलिसी जब सरकार लेके आती है ना, उसको बनाने से काम थोड़ी चलता है, उसको बेचना पड़ता है कि उसकी या तो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी या उसकी रिएक्टिव. सर एक बात बताइए, आप हिंदुस्तान के रातों रात 100 प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दो, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है ना, आपके पास एक बार आपका सामान बिक जाएगा, दूसरी बार ऑर्डर नहीं आएगा. वही मैं कह रहा हूँ. तो आपको क्वालिटी पे फोकस रखना है सर. टैग से क्या फर्क पड़ता है, आपको क्वालिटी पे फर्क. मेरा जो मेन जो मुझे लगता है हम जो लैक कर रहे हैं इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की वजह से मात खा रही है. क्योंकि आप कोई भी अच्छी कंट्री आपसे क्यों खाना खरीदेगी जब उसकी क्वालिटी अच्छी है आपसे, और गरीब क्वालिटी आप हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे खर्चे नहीं हैं. तो मतलब ये सारी बातें सर सबको पता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ होता क्यों नहीं है. अब मैं आपसे 2 चीजें मैम, इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू से, हर कोई यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट को स्कीम्स आनी चाहिए और मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स आनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से हमारे देश में गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडाइज एग्रीकल्चर कर रखा है ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है मेरे हिसाब से. फार्मर को बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं प्राइवेट कंपनीज, रिसर्च, मशीनरी, प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी चाहिए आपको. फार्मर को एजुकेट करना है कि आप अपनी क्वालिटी कैसे बढ़ाओ. इसके लिए इंडो इजराइल मिशन भी हुआ था अभी. तो इन सब का मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है मेरे हिसाब से, लेकिन हमारी क्वालिटी नहीं बढ़ती. तो मुझको ये समझ में नहीं आता, रिसर्च में दिक्कत है
या फिर जो आप हम जो मतलब हमें बेसिकली साइंटिस्टों को एम्पावर करना है फार्मर्स को। अब हम वो कितने क्वालिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। सर इसके लिए क्या जो मैंने अभी बैठ के आप लोगों से जो प्रॉब्लम समझी उसके बाद मैंने कुछ एक छोटी सी चीज लिखी, बस वो बोलना चाहता हूँ आखिरी चीज। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कलेक्शन सेंटर्स, यही डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कलेक्शन सेंटर्स जहाँ पे सॉर्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के मतलब जब भी आएगा आपके पास प्रोड्यूस, आप क्वालिटी और सॉर्टिंग कर सकते हो, और इनके साथ एक टेक्निकल टीम हो जो आसपास फार्म पे विजिट करे और फार्म्स की मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप लिखते हैं आर्टिकल वगैरह? नहीं सर, नहीं लिखने की आदत डालिए। और सर बहुत कुछ लिखते, बहुत कुछ भेजा हुआ है ना, क्योंकि आपके सुझाव हैं, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, और ये भी एक भ्रांति है कि लिखना पढ़ना साइंटिस्टों का काम है, जबकि सबसे बड़ा साइंटिस्ट किसान है। और ये तो लोग बैठे हैं इसलिए हैं कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कबीरदास जी ने एक बहुत बड़े विद्वान से उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, और ये पूछा सिर्फ पढ़ के सीखे हो या सीख के पढ़े हो, बस इतना पूछा था। और उन्होंने कहा गुरु आज से आप हमारे गुरु हो। जिसने करके सीखा है वो सही में साइंटिस्ट है, और वो हमारा किसान है। हमें जो कुछ भी पता है हमने किसान से सीखा है। हमें क्या पता था? हम तो भाई दवा बनाने वाले फार्मासिस्ट, फिर आगे वेटनरी, फिर आगे एग्रीकल्चर, फिर आगे एनवायरनमेंट, फिर इकोनॉमिक। तो किससे सीखा? किसान से ही सीखा है। और किसान के घर पे जाके दरी में बैठ के सीखा है, कुर्सी में बैठ के नहीं सीखा है। इसलिए उनकी इज्जत, मैं हमेशा जो है कभी भी गांव में गया हूँ, बहुत गांव में गया, जहाँ वो बैठते हैं वो लाके कुर्सी भी रखेंगे, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठने का नहीं, सीखने हम आए हैं, आपने हमें सिखाना है, तब हम कुछ सोच के आपका समस्या का समाधान बता पाए। तो हम लोगों का समय भी शायद अभी तो ममता जी भी चौधरी युद्धवीर से मेरा क्वेश्चन है। युद्धवीर जी से एक क्वेश्चन है मेरा, आप उनको सुन ले तब फिर क्वेश्चन हाँ, सुन लेते हैं फिर क्वेश्चन भी करेंगे। जी जी, आप लोग जरूर युद्धवीर जी बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित डेस्क, उपस्थित साथियों, अच्छा विषय एग्री एक्सपोर्ट की बात करें, और स्वाभाविक है किसी भी व्यवसाय में जितना व्यापार की इन्वॉल्वमेंट होती है और जितना उन्नत व्यापार होता है उतना लाभ भी सुनिश्चित होता। लेकिन विडंबना ये, आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में कृषि नीति नहीं है। नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे, एक बुकलेट बनाई थी उन्होंने भारत की कृषि नीति, 100 पेज से कम की किताब है। जैसे लिख के कोई अपना बोझ उतार दिया हो, फेंक दिया हो मार्केट में किसी दस्तावेज को, कुछ नहीं उसमें। जिस देश का 62% जनसंख्या किसी व्यवसाय के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाती और गुजर बसर करती है, और उसकी कोई नीति नहीं, तो ये अपने आप में उस गंभीरता को दर्शाता है कि कितनी गंभीर हमारी सरकारें रही हैं कृषि क्षेत्र और किसान की उन्नति के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण रहा है। और उसी का नतीजा
वो जो कहावत थी उन्नत खेती मध्यम व्यापार नीचा नीक निदान, अभी आज जो ऊपर था उन्नत खेती थी वो नीचे सबसे नीचे खड़ा। तो हम तो मतलब ये आप बुद्धिजीवी लोग हैं और ये इस तरह की सेमिनार्स में चिंतन होता और चिंतन से जिस विषय पे चिंतन होता कुछ निकलता और वो बढ़ता। जब हम बीज डालते हैं खेत में तो एक डालते हैं, किस उम्मीद से किसी एक बीज से 200 दाने बनेंगे। तो इसी तरह सेमिनारों में जो विचार बनते हैं वो एक बीज के रूप में काम करते हैं और वो निश्चित तौर पे पढ़ते भी हैं। और आज भी मैं चाहूँगा कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसका नतीजा निकले कि क्या। मैं अभी उसमें कह रहा था कि किसी भी नीति को बनाने से पहले वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ के लोगों का टेम्परामेंट, वहाँ के रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, तमाम चीज़ों को अगर नहीं देखेंगे और नीतियाँ बनाएंगे, यही निकलेगा जो निकल रहा है। हमको फोबिया हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रति जो आकर्षण हमारा वो खत्म नहीं हो रहा। हमारे नीति निर्माता आंख मीच के अमेरिका क्या कर रहा है, अरे अमेरिका में खेती कौन कर रहा है ये तो देख लो भाई। अमेरिका क्या कर रहा है ये देख रहे हो, नीति भारत की बननी और मॉडल अमेरिका का उठा रहे हैं, यूरोप का उठा रहे हैं और उसका नतीजा जिसको भारत का किसान भुगत रहा, जिसकी वजह से दुर्दशा हो रही है, जिसकी वजह से आप हम यहाँ खड़े। बड़ा अच्छा लिखा, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट ऑफ 50 बिलियन एक्सपोर्ट। अच्छा लगता पढ़ने में सुनने में, लेकिन इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेड है वो 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने पिछले 22 साल में आत्महत्या की है। यहाँ खेती खड़ी है, आत्महत्याएं थी और है समाज में, लेकिन कर्जे की वजह से किसान आत्महत्याएं करे और फिर हम विकास की बात करें कि खेती में विकास हो रहा है, खेती बढ़ रही है, किसान की आर्थिक हालत सुधर रही है, तो मजाक में उड़ाना हो सकता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्यों नहीं, मतलब अभी आपने कहा मोरिजिन का कि 137 किलोमीटर जोन 450 फसलें हम उगाते हैं। अमेरिका में 100 फसल नहीं उगाई जाती, तो क्लाइमेटिक जोन ही नहीं है। नेचर ने हमको जो दिया है वो कम मुल्कों को मिला, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार ने कोई नीति बनाई नहीं और कोई गंभीरता सरकार की कृषि के प्रति नहीं। इसी साल का उदाहरण अभी का बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्याज 1.5 रुपए से 5 रुपए किलो अब बिक रहा है। इस सीजन में आज मार्केट में 1.5 रुपए दलील ज्यादा उत्पादन हो गए, इसलिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इसलिए उसका भाव नहीं मिल रहा। और उत्पादन कम होने की वजह से और यूक्रेन रशिया की वार की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का भाव बढ़ा, तो सरकार को चिंता हुई और सरकार ने एक्सपोर्ट पर तय लगा दिया। क्यों?
सरकार को नहीं पता था कि गर्मी जल्दी आई, उत्पादन कम होगा। सरकार का दायित्व तो नहीं बनता था कि सरकार समय से पहले इस तरह के प्रबंध करती किसान को 2 पैसे ज्यादा मिल जाए। डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी थी किसान को 2 पैसे मिलने की, वो उसको उसके गले को दबा दिया गया। ये भारत और ये भारत की कृषि नीति और ये भारत का की कार्यशैली। हम बात करते हैं होना चाहिए, लेकिन उसमें किसान की इन्वॉल्वमेंट और किसान का शेयर, किसान मतलब हमको मार्केट में एक्सपोर्ट क्या होगा, व्यापार में क्या स्थिति कृषि की है, किसान को कोई लेना देना नहीं। हम अपनी मंडी पे जाके निमट जाते हैं और मंडी पे जाके निमटने की भी बहुत सीमित सीमा है। हरियाणा पंजाब का किसान, क्योंकि मंडी का काम 100 साल पहले शुरू हो गया था, वहाँ की मंडी टू मंडी का डिस्टेंस जो है 13 से 9 किलोमीटर के बीच में, इसलिए मंडी देख पाता। अन्य राज्यों का किसान मंडी नहीं देख पाता क्योंकि मंडी का फासला उसके घर से 100 किलोमीटर है। व्यापारी टम्पू में कांटा रख के निकलता और उसके घर के सामने ही झपट लेता है उसे पता ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में मंडी कहाँ है। किस व्यापार की, किस प्रॉफिट की, किस मुनाफे की बात कर रहे हैं? अभी तो बेसिक शुरू होना व्यापार। आपका क्या जो हमारे किसान हैं या युवा उद्योगी जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है, कैसे वो समस्या? मैं उसी बात पे हूँ, बड़ी बात धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रोफेसर मतलब देखिए, आप क्या है कि हमको एग्री जोन बनाने पड़ेंगे, हमको उसी हिसाब से उस क्षेत्र में वो फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग यूनिट को वहीं ले जाना पड़ेगा, उनके बीच में सुनिश्चित करना पड़ेगा। टर्मरिक तमिलनाडु कर्नाटक का किसान उगा रहा तो उस पर वहां फोकस करना पड़ेगा। बासमती जहाँ उगा रहे हैं पंजाब हरियाणा के लोग, तो उस पर फोकस वहां करना पड़ेगा। वीट हम कहाँ पैदा करेंगे, यहाँ का उत्पादन कहाँ पैदा करेंगे और कौन सी वैरायटी दे सकते हैं, वहां उसका फोकस करना पड़ेगा। पल्सेज में कहाँ है हम, ऑयल सीड में कहाँ है हम, राजस्थान और मध्य प्रदेश पे फोकस करें, उसके लिए वो जोन बनाए, वहाँ खड़ा करें, वो यूनिट्स वहाँ पे लगाएं। लेकिन जब भी कभी मौका आता, अभी मेरे से पहले आप कह रहे थे, तो एडिबल ऑयल में एक जमाना था कि 97% हम दे रहे थे, लेकिन पाम जब शुरू हुआ, पाम के बाद हम 60% अपना है और 40% बाहर से ला रहे हैं। किसने पाम को आने दिया, क्यों पाम आया? पाम पे ड्यूटी लगाई गई, उसकी 2 कैटेगरी बनी, एक पे 60%, एक पे 20%। जो साबुन बनाने के लिए था उस पे 20% थी और जो खाने के लिए था उस पे 60% थी। लगातार निरंतर 20 साल वो 20% ड्यूटी वाला, वो साबुन बनाने वाला पाम हिंदुस्तान के बाजारों में बिकता रहा, जितने होटल्स हैं उस पर उसका नाम होता रहा। और उससे बड़ा कौन? देश का जो खाद्यान्न तेल जो उत्पादन करता, मस्टर्ड वाला, मूंगफली वाला, नारियल वाला, सूरजमुखी वाला, सबको मार दिया। 2 साल पहले वो ड्यूटी एक्सपायर की है। 2016 की ही बात है, आपको याद होगा किसान ने इतना तिलहन की फसलें बनाई कि उस समय उसको एक्सपोर्ट करना पड़ा। अच्छा, दूसरी अभी मैं प्रधानमंत्री मोजाम्बिक गए और पल्सेस के बारे में मोजाम्बिक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पल्सेस पैदा करो, एमएसपी देंगे आपको। मोजाम्बिक
में गारंटी दे के आए प्रधानमंत्री, और हिंदुस्तान के किसान ने सोचा कि प्रधानमंत्री मोजाम्बिक में जब ये गारंटी दे रहे हैं तो अपने तो बल्ले बल्ले है, और हमने ताकत लगा दी। मोजाम्बिक में तो पता नहीं पैदा हुई ना हुई, हमारे यहाँ इतना सरप्लस हो गया उसे खरीदा ही नहीं गया, 50% रेट पे बिकी। 7,000 की MSP थी और 3500 में बेची हुई। तो बात ये है कि पॉलिसी बननी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन उससे बेनिफिटेड है, लेकिन कम से कम किसान उससे अछूता है, किसान के आसपास से भी वो प्रॉफिट निकल नहीं रहा और किसान निरंतर घाटे में जा रहा। मेरा तो यही है अपने साथियों से, अब आंख मीच के चलते हैं मतलब हम सपने देखते हैं दिन में। कोई आया किसी अफसर को मैनेज कर लिया तो जैतून की खेती राजस्थान में होने लगी, अरबों रुपए हमने उस पर बात की। किसी ने आके किसी को मैनेज कर लिया, बोला जोट्रोफर से तेल बनता, किसान को प्रवोक किया गया, एजेंट लग गए। मेरे ख्याल 1 किलो भी तेल जोट्रोफर से शायद बना हो, किसान को 10 साल उस पर लगा दिया गया। सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है कि कोई मैनिपुलेट करके और चीट कर रहा है हमारे इनोसेंट किसान को, हम उसे चेक करें। हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज कहाँ है? क्यों नहीं बताया जाता कि क्या क्या इस जोन में कौन सी फसल वायबल है, कौन सी हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। वो एक्सटेंशन सर्विसेज हमारे बचपन में वीडियो थे गाँव में, अब तो नदार है, कोई बताने वाला किसान को नहीं। काम हो रहा, ऑर्गेनिक पे फंड अलॉट होता, फंड अलॉट होता ऑर्गेनिक पे, और बोला 750 करोड़ रुपया रख दिया। वो 750 करोड़ रुपया कहाँ गया किसान को तो पता नहीं। वो दिल्ली में प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, किसान बेचारा एप्लीकेशन ही नहीं, वो किसी से लिखवा के एप्लीकेशन लेके जाता, अगर छोटा सा काम पड़ जाए तो उसको एक 500 पेज का प्रोजेक्ट बनाना होता। किसान तो बना नहीं सकता, उसको फिर कलाकार बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं, और फिर वो कलाकार सुविधा स्वरूप के साथ उस फंड को ले जाके साल पूरा होने के बाद उसके वो पेपर पूरे करके उसको रफा दफा करते हैं। वो 750 करोड़ जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। ये चल रहा है कटु सत्य वाली नहीं। मैं तो किसान हूँ, किसान की स्थिति क्या देश में, जैसी मेरी और कमल सिंह की है, ममता जी ने हमको जैसे कोने में लगा दिया यहाँ पे, ऐसे ही किसान को देश कोने में लगा रखा। तो ये हमारी स्थिति है, आपको कहीं पूछने जाने और देखने की जरूरत नहीं, इस डेस्क पे देखिए, जैसे यहाँ कोने पे लगा रखा ऐसे देश में किसान को कोने पे लगा रखा। देश को अगर वास्तविकता में गंभीरता से चिंतन करना है तो इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, किसान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से किसान को इन्वॉल्व किया जाए सारे प्रोसेस में, किसान सब कुछ कर सकता है। अब ये एक और अंग्रेजी का नाम है FPO। अब बताओ किसान से, अगर कोई किसान इसका मतलब बता दे, मैं चैलेंज करता हूं, चलो मेरे साथ, कोई मतलब बता दे। मैं साल में 365 दिन में 300 दिन घूमता हूं लोगों के बीच में, आज तक एक किसान मेरे पास नहीं आया कि मैं किसी FPO का मेंबर हूं। कहाँ है FPO, मुझे पता ही नहीं चलता। वास्तविकता बता रहा हूँ, सर्वे कर लो, मेरे साथ चल पड़ना। 250 FPO एक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही, 250। मेरा ये है कि देखने में अच्छा लगता, ख्वाब अच्छे हैं, धरातल पे उतारने पड़ेंगे, नीचे ले जाना पड़ेगा। इतनी फॉर्मेलिटी है, इतनी फॉर्मेलिटी है, इतनी कॉम्प्लिकेसी है उन बाबुओं से जो है निपटना किसान के बूते की बात नहीं है। वो प्रोफेशनल लोग उनसे निपट सकते हैं, वो अपने तरीके से निपटते हैं और वो उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं
किसान के लिए कोई योजना नहीं। अब देखो, इजराइल के लोग आगे, इजराइल के लोगों ने आके हमको समझा दिया और हमने सैंक्शन कर दिया। ग्रीन हाउसेस, जब 137 क्लाइमेटिक जोन है, हर मौसम उपलब्ध है, जरूरी है राजस्थान में सब्जी उगानी? आप हिमाचल में फोकस कर लो, उत्तराखंड पे कर लो, हमारे पास तो दूसरे लोग हैं ना, हमको उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, नेचर ने दे रखा हमको, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लेन देन का खेल तो वहीं से चलेगा। तो ये तो किसान के साथ होता ही है, ये वादा करते हैं तेरा कभी मौका मिलेगा तो फिर कर देंगे, अपना तो काम ही है। एक चीज बताना चाहता हूँ, परिवर्तन कहीं ना कहीं से शुरू नहीं, मैंने शुरुआत की। आपके बागवत में हमने जो 12 FPO बनाए हैं और सारी 12 कंपनियां जो चल रही हैं उनकी अच्छी बात है। मैं तो ये कहा कि इस बहस से भी निकलेगा कुछ कोई विचार निकलेगा, काम आएगा, अच्छी बात, चर्चा हो। लेकिन मैं तो जानबूझ के सुनाने के लिए कहता हूँ कि ये जो आपने शुरू में कहा था कि हमने पढ़ के नहीं सीखा, तो आपका धन्यवाद। जय किसान। स्लोगन को मैं तो समझ ही नहीं पाया। पहली बात तो फार्मर को इनकम है ही कि नहीं ये साबित करो। इनके रिकॉर्ड तो कर रहे हैं 27 रुपए रोज के किसान को मिल रहे हैं, तो वो 54 रुपए करेंगे क्या? दैट इज वन क्वेश्चन। दूसरा, भाई आप ग्रॉस इनकम की बात कर रहे हो कि नेट इनकम की बात कर रहे हो? किसान को तो समझ ही नहीं आ रहा ये बेवकूफ बनाने का चक्कर कैसे पूरा होगा। डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसका मतलब ही नहीं मुझे समझ आया आज तक। भाई ग्रॉस इनकम की बात कर रहे हो, नेट इनकम की बात कर रहे हो। आप अपने कागजों में लिख रहे हो कि 27 रुपए एक फार्मर को आते हैं डेली, तो इसका क्या मतलब हुआ? 54 रुपए लेके वो गुजारा कर लेगा। इसमें एक और पॉइंट, एक चीज याद रखिए, और ये सभी के लिए है, जब हम ये करते हैं, एक उंगली हमने आपको दिखाई, लेकिन 3 उंगली हम खुद को देख रहे हैं। हमें खुद के गिरेबान में झांक के देखना होगा कि हमने क्या किया है। हम अगर सब चीज उम्मीद करते हैं 2 लोगों से, हे भगवान तूने क्या किया, हे भगवान तूने ये बड़ा बुरा किया, हे भगवान, जब अच्छा करते हैं तब तो कहते हैं मैंने किया, और कोई भी चीज खराब होती है तो भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, हे भगवान तूने क्या किया। और दूसरा जो है वो फिर आता है सरकार कुछ करती नहीं है। भाई नहीं करती है, नहीं करती है, हम तो करें ना, हम लोग करें, सरकार करे ना करे। जब तक ये सोच हम नहीं बदलेंगे, सरकार भी हम ही लोग बनाते हैं भाई। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास समय की बड़ी सीमा है, इसलिए अभी आपको भी सुनना है। सर एक और चीज, फार्म शेयरिंग मॉडल, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, सर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर कोई विचार? ऐसे है कि मेरा तो एक ही सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक का, उसमें आपके लॉ ही गलत है, ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो नकली दिख रहा है, उसके बारे में कुछ सुन ही नहीं रहा। प्रूफ है, इसीलिए पीटा के अगर जो आपकी एक्रेडिटेशन कैंसिल हो रही है और नेशन को शेम कर दिया इन लोगों ने, हु इज टॉकिंग अबाउट इट? फूड लॉ अब तक बना, आज तक हमारा फूड लॉ ही नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। बेसिक चीजें, यील्डिंग इज डिस्क्राइब की, किसको कहते हो यील्ड, बेसिक चीजें नहीं कर रहे। किस पता नहीं कौन सी साइंस है इन लोगों के पास, मेरे को इनकी साइंस ही नहीं समझ आ रही, और सफर हम कर रहे हैं। होगा, आप ये सोचिए ना, ये विश्वास रखिए कि होगा। मैं 76 हो जी, अभी भगवान करे आप 99 तक रहे, आप सेंचुरी बनाए और होगा जी। पूर्व में मेरे बहुत ही नजदीक साथी रहे जो युद्धवीर जी, आप किसान नेता है, हम किसान हैं, और पूर्व में काफी दिन तक हम साथ रहे हैं। सम्मानित मंच और मेरे साथी हो, वैज्ञानिक हो,
मैं भाई साहब की बात से सहमत, किसान नीति बननी चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, खेती लाभदायक नहीं है, ये भी ठीक भाई साहब ने कहा है, इन दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। परंतु कुछ जो नया हो रहा है उसमें थोड़ा सा मैं विचार करूँगा। भाई साहब ने एफपीओ के बारे में कुछ बोला, जो 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। एफपीओ बनना, दो बातें इसमें, एक तो आप एक्चुअल में एफपीओ बना रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, किसान की सामूहिक होगी, ऐसे जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। ये मॉडल अभी मुझे लगता है बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा। क्या साबित हो रहा है? मान ले कोई इंडस्ट्री किसी क्षेत्र में लगती है, मान लिया भले ही प्राइवेट लगाओ या एफपीओ भी लगाओ या कोऑपरेटिव भी लगाओ, तो क्या होता है उस इंडस्ट्री में उस सामान को परचेज करने की वो बढ़ जाता है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसको किसान को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे किसान की आमदनी बढ़ती है। इसका एक उदाहरण है, हमने एक कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट लगाया 23 करोड़ का प्राइवेट तौर पर, एक पार्टनरशिप में। हमारे यहाँ के लोग बेबी और स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर पैदा करते हैं। हमारे पास नॉर्वे से 72 कंटेनर का ऑर्डर है कि 72 कंटेनर स्वीट कॉर्न चाहिए। हम किसान से लेते थे 7 रुपये किलो स्वीट कॉर्न, हमने किसान से खरीदा 15 रुपये किलो स्वीट कॉर्न ऑर्डर पूरा करने के लिए, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। प्रोसेस इंडस्ट्री जो देश में लगी हुई है, मतलब क्षेत्र में लगी हुई है, तो ये भले ही वो एफपीओ की हो या प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव की हो, उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, ये जरूरी है। दूसरा, एफपीओ की जो योजना आई है, हरियाणा में सीसीडीपी जो योजना शुरू करी है, बहुत अच्छी योजना इसलिए है कि एफपीओ को 70 से 90% अनुदान दिया जा रहा है। अब एफपीओ में किसी एक आदमी ने पैसा लगाया है या सारे किसानों ने लगाया है या किसानों ने मिलकर लगाया, नीति जो कानून तो ये है कि सारे किसानों ने मिलकर लगाया है। और सारे किसानों का भी मेरे पास कुछ अनुभव है, जो सरकार ने एफपीओ बनाए, एक जिले में 700, 800, 1500 किसान ले लिए, वो सरकार ने उनको ग्रांट भी दी और बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे भी उदाहरण है कि पुलिस जी ने कोई एफपीओ बनाया, किसी ने कोई एफपीओ बनाया, उसमें 2-4-10 किसान जोड़ लिए, 10 किसानों ने पैसे इकट्ठे करे, जमीन खरीद ली, जमीन खरीद के उसको एफपीओ बना दिया, एफपीओ बना के उसको प्रोसेसिंग करके शुरू कर दी और उसने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। ये भी अनुभव है। तो किसान की आमदनी तो इससे बढ़ेगी। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी इसमें बता दूं। मैं छोटा सा किसान था और उसमें 1980 में मैंने मशरूम इसके बासमती धान की खेती शुरू करी। 1985 के चलते बीमारियां आना शुरू हो गई और मैंने जो कृषि में निर्यात की कोशिश करी, कृषि में जो अपने अनुभव रहे, 1996 में एक हेलर लगाया, भाई मैं बासमती धान का निर्यात करूँगा, उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद मैं मतलब कोशिश करता रहा कि कृषि उद्योग में कैसे जाऊँ। तो इसी बीच में बेबीगोन की खेती शुरू करी, फिर ना बेच पाया तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी दिया। फिर उसके बाद 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई, जो 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई तो उससे शुरू कर दिया कि किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस देना शुरू कर दिया 4 फसलों का, जिसमें टमाटर था, बेबीगोन था, स्वीट कॉर्न था और मशरूम था। इसके बाद दूसरी इंडस्ट्री 2012 में लगाई, तीसरी 2016 में, 2019 में चौथी इंडस्ट्री। अब एफपीओ के माध्यम से 2 इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, जिसमें पैक हाउस है। इसमें सीसीडीपी योजना जो हरियाणा सरकार की योजना उसके तहत लग रही है और उसमें एक तो हम बेबीगोन का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर रोज हमारे यहाँ से 1.5-2 टन बेबीगोन जा रहा है कि बेबीगोन के किसान को इतनी आमदनी हुई कि 200 रुपये किलो तक बेबीगोन किसान बेच रहे हैं और एक एकड़ में 1.5 से 2.5 लाख तक बेबीगोन हो रहा है। तो ऐसी तरह मशरूम के किसान सोनीपत में है। हालांकि आज मशरूम का सिनारियो ये है कि जब अब तक 5 साल पहले हम मशरूम में 50% बचत करते थे, जितना मशरूम में मान 10 लाख रुपये लगाया तो 20 लाख बना लेते थे। और आज ये पोजिशन ये कि मशरूम की लागत 100 रुपये है और बेचने का रेट 80 रुपये है। तो किसान थोड़ा सा घाटे की तरफ जा रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समय में जो कंपनियां बन रही है देश में, ऐसा ना हो जाए कि किसान अपने छोटे छोटे जोत है और उस जोत में इतने साधन नहीं है और किसान अपनी जमीन न बेचा है, दोबारा जैसे राजाओं की जमीन होती थी ऐसे दोबारा किसानों की ये जमीन सारी खिसक ना जाए। उस समय देश के सामने बड़ी समस्या पैदा होगी कि जितने बेरोजगार लोग आएंगे, जितने खेती में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा। तो इसके लिए जो जरूरी है कि क्या सरकार को करना चाहिए और सरकार खुद कोशिश भी कर रही है। जैसे कि इसका रीजन क्या है, किसान क्यों लाभ में नहीं है? किसान सारा बाजार के ऊपर निर्भर हो गया है, सारा रासायनिक खाद, सब दवाइयों के एजेंट इतने जाते हैं किसानों दुकानदारों के पास है। किसान को चाहिए थोड़ी दवाई, उसका 10 गुना किसान खेत में डाल रहा है, जो हिसाब लगाता है। टमाटर पैदा किया, हिसाब लगाया तो पता है देखा तो 1 रुपये में बचा दी,
घाटे में इसीलिए सुसाइड होते हैं, इसलिए सारा। तो सरकार को जो हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र है, सबने हमने रासायनिक खादों पर, रासायनिक दवाइयों पर ही आज तक आविष्कार किए हैं। जो हमारी परंपरागत खेती की, पुरानी खेती की जो हजारों सालों में चली है, अब 50 साल में सब कुछ खो दिया हमने। पिछले हजारों साल में हमने कुछ नहीं खोया, पानी भी हमारा सुरक्षित था, पानी भी पीते थे हम अपने खेत से, आलू टमाटर खेत से तोड़कर खा जाते थे, सब कुछ नहीं होता था हमें। एक दिन डीडी जी साहब मेरे साथ में, दत्ता साहब, और एक स्ट्रॉबेरी फार्म में चले गया। मैंने उसको तोड़कर उनका, जैसे हम अपने खेत से सब्जी खाते हैं ऐसे वो खा लिया। रात को मुझे तो होश ही नहीं रहा, मतलब इतना उसका असर हुआ। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, और इस तरफ जाने के लिए एक सुधार की आवश्यकता हुई है। और उसका करना क्या, हमें जितने हमारे रिसर्च सेंटर कृषि विश्वविद्यालय है उसमें हमें प्राकृतिक खेती कह लो, चाहे उसको जैविक खेती कह लो, या वातावरण अनुकूलित खेती कह लो, उसका नाम आप कुछ भी रखे, और जैविक खेती हमें करना होगा। किसान को भी फायदे में होगा, तो किसान अपने बीज, अपने खाद सब कुछ बनाएगा। और दूसरा जो बीज हमारे पहले थे, देसी बीज की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ गन्ना होता था, मिर्च होती थी, देसी मिर्च 100 मन एक एकड़ में होती थी। आज कितनी हाइब्रिड लिया, कितने खाद डालो, वो नहीं होती, ना जो रासायनिक खाद थे। ऐसे बीज हमारे देश में थे जिस जो बिना रासायनिक खाद के होते थे, बिना कीटनाशक होते थे। कीटनाशक का प्रयोग इसलिए बढ़ाया कि हमने अपने सारे मित्र खत्म कर दिया। तो इस तरफ जाना होगा, तभी किसान फायदेमंद होगा। और रही एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट भारत जो है एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर था। पहले सबसे ज्यादा कृषि निर्यात भारत करता था, भारत कृषि निर्यात में सबसे पीछे चले गया। भारत फूड इंडस्ट्री बन सकता है दुनिया की, जिसमें एक तो आप वातावरण को खेती करनी होगी, दूसरा इस पे जो प्रोसेस है, छोटे मोटे प्रोसेस करके और दोबारा निर्यात की स्थिति में आ जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम रसायन हमें छोड़ने बनाएंगे। धन्यवाद। और सुने, क्योंकि उन लोगों का भी बहुत बड़ा अनुभव है। डॉक्टर जी मिश्रा साहब हैं, आप भी इस विषय में कुछ सुझाव देना जरूर चाहेंगे। और डॉक्टर सुधीर कोचर साहब हैं, और डॉक्टर रामकृष्ण साहब ने तो थोड़ा सा अपना बता दिया है, लेकिन चूंकि 2 सेशन एक में मिला दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी समय की सीमा हो गई है। तो डॉक्टर कोचर, सबसे पहले आप ही इस विषय में कुछ प्रकाश डालें, और सपना जी थोड़ा समय आप और एक्सटेंड कर दें। आपके अटेंशन के लिए ICFA को एक मैंने रिटन प्रेजेंटेशन दी है। उम्मीद करता हूँ कि उसकी कॉपी वो आपको सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे जुलूरी जी ने कहा कि ये मंचन का समय है, मंथन का नहीं। तो सोच को आगे बढ़ाना है, तो सोच में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नए आएंगे, वो देखना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम मिलके समझ सकेंगे तो शायद एज ए कंट्री, एज ए नेशन हमें पता लगेगा कि ये कितना ज़रूरी था कि इस तरह के एक सेशन इस समय हो, और ICFA को उसके लिए बधाई भी है। लुई पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन का प्रिंसिपल और स्टेप्स बनाए, जिससे आपका जो दूध फट जाता था, जो डेयरी है उसको कितनी मतलब जो दिक्कतें थी पहले, वो एक बार में सुलझ गया। उनका कहना है कि इन द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड। अगर हम तैयार हैं किसी चीज के लिए, तभी हमारा मस्तिष्क उस बात को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम नहीं उस बात को समझ पा रहे उस समय, तो जरूरी नहीं है कि हम बहस में लग जाएं। ये एक बात समझने वाली है। तो हमारे पिछले सेशन में एक बात निकल के आई कि फार्मर्स को और इंडस्ट्री को एक होना चाहिए, और वो कैसे हो सकते हैं। ये एक विषय अपने आप में बहुत जो है गहन है। ये जरूरी नहीं है कि ओवरनाइट इसका सॉल्यूशन निकल आए, और जो पॉलिसी है बीच में
वो इसलिए बनाई गई कि वो एक आपको वर्टिकल दिया गया कि डंडा गाड़ना है तो ये डंडा हमारा है, ये डंडा हमारा है, आप इसके ऊपर जितना मर्जी बढ़ जाइए, मिल लीजिए आपस में। अगर ये हो पाता है तो हम वो सारे स्टेप्स सीख जाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है समझने के लिए कि किसी से कम नहीं है हम एक्सपोर्ट्स में। अगर एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट टू टोटल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो वो जो फीसद है 11.5 के करीब आती है, वो एग्रीकल्चर के इंपोर्ट्स टू टोटल इंपोर्ट की फीसद जो कि सिर्फ 4.4% है, उससे कहीं ज्यादा है। तो हम जो है कहीं ना कहीं अगर प्रेसिडेंस रखते हैं तो उसमें आगे जा भी सकते हैं। जो बॉटम लाइन है कि परफॉर्मिंग सक्सेसफुली टुगेदर इन ए कम्युनिटी और ए ग्रुप इज एन आर्ट एंड ए माइंडसेट, और डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जो कि हमें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, इज आल्सो ए माइंडसेट। जो कल की न्यूज है, जो 2 दिन पहले घटित हो चुका है कि आपके 56,000 टन जो आपकी तरफ से सबसे अच्छा गेहूं था, उसके ऊपर खंबा लगा दिया जा रहा है। किस नाम से? क्यों? हमें एक्सपोर्ट नाम तो पता है, वर्ड तो पता है, मगर उसकी इंट्रिकेसीज नहीं समझ है। वो किसी के नाम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी दूसरे के नाम से जो है वो आगे पास ऑन किया जा रहा है, किसी तीसरे को उन्होंने हमारा ओन एक्सपोर्ट पार्टनर बनाना है, भले ही वो टेररिज्म करवा रहा है हमारे ऊपर। तो दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तो अभी जो चेयर ने कहा कि ये जो है अगर विश्व स्तर की बातें हैं तो इसमें ट्रांस बाउंड्री इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वो हम एक बार में नहीं समझ पाएंगे। जो हम छोटी छोटी या छोटे लेवल की बात कर रहे हैं उस लेवल की बात नहीं रह जाएगी, वो उससे कहीं ऊपर है। तो जिन्होंने इतना मनन किया है, ये भी जो अभ्यास है, ये भी जो इनकी साधना है, जो हमारा बिजनेस रियलिज्म है, जो हमारा ट्रेड रियलिज्म है, वो जहां तक पहुंचे हैं। और फार्मर्स को आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट के जो प्रयत्न हैं, जो बिल्कुल नए तरीके के हैं। ये 27 रुपए की अगर आप बात कर रहे थे तो 2000 रुपए वाली जो बात सोची कि कम से कम इतना तो शुरुआत कर लो ताकि उसके बाद उसकी लिखा पढ़ी समझ सको। जब तक लिखा पढ़ी समझनी नहीं शुरू करोगे तो आप उसको बिजनेस मोड में कैसे ले जाओगे? कल को क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, आपकी सबसे ज्यादा क्रॉप्स हैं, आपके सबसे ज्यादा जो है डाइवर्स एनवायरमेंट्स हैं, उसमें जो पैदावार होती है, उसमें जो चीजें हैं, उनकी एग्रीगेशन, उनकी कलेक्शन और उनका एक्सपोर्ट, उसमें प्रीमियम वैल्यू आपकी बनती है। बासमती जीआई मिले या ना मिले, मगर उसमें हमारी ऑलरेडी इतनी होल्ड है इंटरनेशनली कि हमारी प्रीमियम वैल्यू सभी की बासमतियों की प्रीमियम वैल्यू से ज्यादा है और वो रहेगी। मगर जो हमारी इथनिक मटेरियल्स हैं, क्योंकि वो भी जो है बांस की ही बात कर रहे हैं, उनके भी सुगंधित हैं चावल और छोटे एरिया में होते हैं, उनको डिफरेंट टैग दे के भी हम आगे ले जा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे समझ में आ सकते हैं। तो मंचन के लिए अगर कहा हूं तो मैं बहुत लंबी बातें अभी ले जाऊंगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें, इतना ही काफी है क्योंकि 5 मिनट लगभग हो गए होंगे। एक प्रश्न होगा तो वो उसका जवाब दे दूंगा, मगर आप वो 17 पन्ने जो मैंने दिए हैं उसको पढ़िएगा जरूर प्लीज, क्योंकि फार्मर को पार्टिसिपेटरी वोट में कैसे लाना है, वो तीनों पक्ष जो हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओस, उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही भागीदारी है। जो फार्मर्स को ये जो नए तरह के राइट्स दिए गए हैं, इनको पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटेड टू गेट दोज रियलाइज्ड फॉर द पर्सन टू whom these positive rights have been given। हमारे पास जो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम तो आ गया, मगर फार्मर्स राइट जो अथॉरिटी है
वो सुई जनरिस एक्ट के लिए है। इन राइट्स के रियलाइजेशन के लिए अभी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जो भी नेगोशिएशंस आपकी चल रही हैं, जो भी आपकी अगली बातें बन रही हैं, वो पॉलिसी डायमेंशंस हैं, वो आगे देखते जाइएगा कि सरकार उसमें आपकी मदद कैसे करती है उसको निपटने के लिए, क्योंकि मदद आपने एक दूसरे की करनी है। सरकार तो एक मोर्चा है आपका, देश की बात करें तो सरकार को चलने दीजिए, आगे चलिए। धन्यवाद। है तो शुरुआत उसी हिसाब से करनी चाहिए। प्रॉब्लम जो रघुवीर जी ने कहा वो अक्षरशः सत्य है, और उसका रीज़न भी है कि हम 3 तरह की इशूज से सफ़र करते हैं। एक तो हम नॉर्मली साइंटिफिक कम्युनिटी हो या पॉलिसी मेकर्स हो, नॉर्मली वो अपनी गलती नहीं मानते। सो हम हरदम जो है इस पोजीशन में रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, बाकी सामने वाला। दूसरा, नॉर्मली डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं साहब ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब बढ़िया हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, इंडिया इज शाइनिंग लाइक दैट। एंड थर्ड इज वी आल्सो सफर फ्रॉम मेनी प्रीडिस्पोजिशंस कि ये जो चल रहा है यही ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। So what is the context today? We are importing and exporting. We are exporting huge amount. You know, in the livestock sector, you are importing 78 times more in terms of quantity, but earning almost 13 times less than a small country like Netherlands. So what is that? That is the context. You are exporting bulk. So bulk, you are producing, you are exporting bulk, not adding quality. कई लोगों ने कहा कि quality is concern. Quality is definitely a concern. अगर आपका consignment शिप से जाके पोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू ट्राइक्लोजन एंड अदर केमिकल्स, who is responsible for that? Responsibility सिस्टम को ओन करनी पड़ेगी। You cannot say कि साहब वो किसान, there are millions of farmers, traceability का इशू आया। हमारे एक बहुत ही लर्नेड विद्वान इस तरह की बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक में ट्रेसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। That is a problem because you are outsourcing the produce from millions of farmers. और जब फार्म लेवल पर ट्रेसेबिलिटी के ट्रेस करने के लिए चाहे वो हेवी मेटल्स हो या इवन हार्मफुल हैजार्डस केमिकल्स हो, उसका अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो ऑल दोज इशूज आर नोन टू एवरीवन। हमारी पोजीशन क्या है आज एंड हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दैट? वो पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज ऑलरेडी देयर 2018 में आई, इसमें तमाम प्रोविजंस हैं how to integrate with the farmers, how to integrate farmers and industry, what kind of interface we can create, what is our target, what is our quality standards. But are they really on the ground? जो दिव्य जी कह रहे थे, FPOs, it's a very buzzword in agriculture nowadays. Farmer Producers Organization. Capacity कहाँ है? There is no capacity. I am sorry to say. What is there? Only select Sahyadri को सारे लोग याद करते हैं, but how many people know Albertan? क्यों? क्योंकि हमने उस लेवल पे उनको empower ही नहीं किया. Whether it is financially empowerment or whether it is technically empowerment, even in many of the FPOs, you cannot find a suitable CEO who can formulate a project, self-encapsulated project, which can be banked. So these are the challenges. So मेरा कहने का मतलब यह है कि unless you accept the problems, you will not find the solutions. So पहले तो accept करिए कि yes, we have problem
और एक्सपोर्ट प्रमोशन में तो देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम, राइट फ्रॉम प्रोड्यूस साइज टू GI to quality to GMP to GAP and what not. So there are many such kind of jargons used that आपके पास SPSS स्टैंडर्ड से नहीं है। NTB की बात हुई, नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो तो एक वेपन है, एवरी कंट्री यूजेस, इंडिया विल आल्सो यूज, हम भी यूज करते हैं, यूरोपियन यूनियन इज यूजिंग, ऑल डेवलप्ड कंट्री यूजेस। मार्केट एक्सेस नहीं देना है तो वो जो है 100 टाइम्स रिड्यूस कर देंगे। आपके बासमती राइस में क्या हुआ, ओवरनाइट दे रिड्यूस इट फ्रॉम बाय 100 टाइम्स, 0.01 से 0.001 कर दिया ppm और दैट MRL लेवल। तो ये हर कंट्री जब आपको मार्केट एक्सेस नहीं देना होता तो करती है, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंस्टीट्यूशन आर वी प्रिपेयर्ड? हमने उस तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए हुए हैं क्या? नहीं। We don't have any market intelligence, we don't have even intelligence what the other country, destination states, destination markets are thinking about. अभी आप जो कंज्यूमर प्रेफरेंस इज चेंजिंग, मैंगो के मार्केट में नाउ स्मॉलर कंट्रीज आर नाउ competing with us because they have a mango variety जिसमें sweetness कम है, it has a thick cover so that it can retain for a longer period and they are competing. We don't have Alfonso quality में it's so thin layer कि वो एक दिन से ज़्यादा आप उसको retain ही नहीं कर सकते। It is इसमें sugar भी content ज़्यादा है। So these kind of grapes में क्या है, seedless grape, colored grape is a huge demand in the international market. Chile का जो produce है is competing with India, they are superseding us. So इस तरह के मार्केट इंटेलिजेंस के लिए हमें वी नीड टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो रियल टाइम पे एनालिसिस करे। ये नहीं कि आज हम इंडियन चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर इन्वाइट किए, हमने कोई भाषण दे दिया, उसके बाद चले गए, सो गए, भूल गए। रियल टाइम एनालिसिस होगी, मार्केट इंटेलिजेंस होगा, देन ओनली वी विल एबल टू कोप अप विद द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट। उसके अलावा नहीं कर सकते आप। ऑर्गेनिक की बड़ी बातें हो रही है बिकॉज दैट इज वन ऑफ द पेट सब्जेक्ट। चौहान साहब भी थे उस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में। टिल डेट अगर इतनी प्रिपेयर्डनेस है देन वी शुड हैव वन सेपरेट HS कोड फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। नहीं है। So all the produce are organic unless they are tested and tried for some hazardous chemicals. As a plant, वो तो न तो inorganic को differentiate करता है, न organic को। Product base पे तो कोई certification नहीं है। You are only identifying a produce as organic based on the process certification. So unless you develop some sort of mechanism कि वो आपका जहाँ से source हो रहा है वहीं से ऑर्गेनिक लेवल हो जाए, टैग हो जाए और उसका HS कोड बना दीजिए, यू हैव सेपरेट एंटिटी। वो नहीं है। सो थिंक ऑफ दोज स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये साइक्लिकल चेंजेस से ज़्यादा मजा नहीं आएगा अनलेस यू चेंज स्ट्रक्चरली। इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज NPOP स्टैंडर्ड वी हैव, बट इन यूरोपियन यूनियन, इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस that standard doesn't conform to that, वहाँ पे कई बार रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ का किसान NPOP स्टैंडर्ड पर प्रोड्यूस करता है, बट ग्लोबल मार्केट में बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। सम ऑफ द केसेस, नॉट ऑल प्रोड्यूस बट इन सम सर्टेन केसेस। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो रिसर्च के साइड में जो हमारा अपना डोमेन है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर आर ह्यूज चैलेंजेस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ डाटा एंड आल्सो ऑन द पॉलिसीज। कई बार पॉलिसी एक दूसरे के आपस में तालमेल नहीं कर रहे तो वो बड़ा इशू है, बट आई थिंक वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए था बिकॉज ऑफ टाइम वी डोंट हैव।
ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस और इंटेलिजेंस के लिए perhaps if this group wishes, then that could be one of the recommendation कि एक एक्सपर्ट टीम, डेडिकेटेड टीम या मैकेनिज्म गवर्नमेंट को या चाहे वो पब्लिक प्राइवेट के थ्रू हो या एनजीओ के थ्रू हो या इंडस्ट्री के थ्रू हो, बट देयर मस्ट बी ए सेटल्ड मैकेनिज्म सो दैट हमको इधर उधर भागना न पड़े, वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रियल टाइम टू मेक सम डिसीजंस। फाइनली सब कुछ होने के बाद भी अगर जब तक आप जहां से प्रोड्यूस सोर्स हो रहा है उसको एम्पावर नहीं करेंगे तो यू विल नॉट सक्सीड। सो किसान को, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, जब तक खाली वो किताब में लिख देने से कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये है, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये है, उससे नहीं होगा। जो सक्सेना साहब ने कहा कि जब तक आप जाके उसके साथ बैठेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, पहली बात तो 2-3 मीटिंग में तो कुछ बताता ही नहीं, वो भी ऐसे ही अपने रंग में रहता है, नेचुरली ही इज अ लैंडलॉर्ड। तो आप जब उसके साथ 4 मीटिंग में बैठेंगे, बिकॉज आई हैव वर्कड विद फार्मर्स, और उसके साथ मेल पे बैठ के बात करोगे तो आपको घर की भी बात बताएगा, सारी चीज बात मानेगा। सो परहैप्स somewhere we need to have more interface, more interaction, और वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने की जरूरत है। This is what I wanted to say today. Thank you very much. एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, क्या हम पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं जो जीआई टैग हमको मिल चुका है? सम ऑफ देम आर लाइक, जैसे मैं एमपी की बात करती हूँ, सर ने बोला कि एमपी को क्यों मिले। एमपी में 1 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट्स जो है 2019-2020 में हुआ है राइस का। तो एमपी ने इसीलिए चैलेंज किया हुआ है कि हमको बासमती राइस का जीआई टैग मिले। सेम विद बालाघाट जिला है, वहाँ पे चिन्नौर राइस होता है जिसको जीआई टैगिंग मिला हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो वहाँ के जो सिंगरौली वाले यूपी से पास वाले जो एरिया हैं, वहाँ पे कोदो कुटकी, समा, ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायबिटीज और इस सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो व्हाई डोंट वी टॉक ऑन दीज थिंग्स, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव रेंज हैं, लेट्स टेक दोज प्रोडक्ट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। सेकेंड, एफपीओज की बात हो रही थी, हम में से सब बात करते हैं एफपीओज बना लें, एफपीओज बना दिए जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। क्या हमने वो इकोसिस्टम डेवलप किया है? क्या हमने फार्मर्स को वो ट्रेनिंग दी है कि हमारे एफपीओ में इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट्स को लेंगे? तो जब ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेज, हमेशा हम फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक ऑन बैकवर्ड लिंकेजेस ऑल्सो, कि किस तरीके से हम फार्मर्स को बोल रहे हैं या ट्रेनिंग्स दें और उनसे ये कहें कि आप अगर हमारे एफपीओ में आते हैं या प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं तो हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट को या उस एफपीओ का क्यों नहीं हम ब्रांड क्रिएट करते हैं? लेट्स टॉक ऑन एनी ऑफ द एफपीओ। जैसे मैं जानती हूँ, जैसे एरिया भोपाल के आसपास जो है हरी मूंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर एफपीओ बनाया हुआ है, उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है कि हमारे मूंग की जो है ये ब्रांड है और इसकी कॉस्टिंग इतनी होगी, जिससे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। हमेशा ये बोला जाता है कि फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होता, दैट्स वेरी ट्रू। फार्मर्स को बेनिफिट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, उनको बताया नहीं जाता है, उनको एक सप्लाई चेन मॉडल जो होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि हम प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे एड्रेस करते हैं, अगर हम सब लोग मिलकर, अभी मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 50 मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर एक एफपीओ को भी गाइड करेंगे तो हम 50 एफपीओज के ब्रांड्स क्रिएट कर देंगे और उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक प्लेस मिलेगी जो हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि जो इकोसिस्टम है वो, जैसे हम लोग सोयाबीन और व्हीट की बात करें तो देयर वाज अ टाइम जबकि मध्य प्रदेश से सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता था, मध्य प्रदेश को सोया का स्टेट कहा जाता था, बट 2016 के बाद से यूएस ने उसको ले लिया है। यूएस इज नाउ कि वो सोया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और हमारे यहाँ की सोयाबीन को कोई पूछता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ इस चीज़ पे बात ना करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं,
लेट्स वर्क ऑन दी सॉल्यूशंस और उसके साथ में हम आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। मैं को पहले से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि FPO एक मॉडल है, सरकार की FPO की पॉलिसी एक अलग चीज़ है। सरकार की FPO की पॉलिसी में 100 कमियां होंगी, हमें भी पता है, और शायद हम क्योंकि FPO में काम करते हैं आपसे ज़्यादा ही हमें पता होगी क्या क्या कमी है। लेकिन जब हम बात करें तो मॉडल को बदनाम ना करें और उन लोगों के ऊपर तहमत ना लगाएं, ऐसी वर्डिंग देना कि एक भी बंदा उसको नहीं जानता या एक भी सक्सेस स्टोरी सिहादरी के बाद नहीं है। सर 100 की लिस्ट तो मैं ही आपको दे देता हूँ। 300 करोड़ की टर्नओवर की कंपनियां यहाँ हमारे पटियाला में ही है, दिल्ली के पास है, हरियाणा में बहुत हैं। हो सकता है आपको उनकी पता ना हो कौन क्या कर रहा है, तो जब हम मॉडल को ही बदनाम कर देते हैं तो हम सारे रास्ते बंद कर देते हैं। पॉलिसी डिबेट सरकार के साथ तो हमारी भी लड़ाई है कि ये CBA बना दिए, फर्जी FPO बन रहे हैं, कागजों में बन रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअली डिस्पाइट गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, यहाँ बैठकर हमें ऐसी बातें सुनना ना फिर बुरा लगता है कि हम सरकार से अलग होकर अगर एज ए स्टार्टअप कुछ काम कर रहे हैं तो सुनने को, वी शुड टॉक टू ईच अदर देन टॉकिंग एट ईच अदर। That's right. I think your point is well taken. And before Sapna gives me, okay, because Sapna is looking. Facilitate the agricultural exports. We are working with various agencies. Traceability, quality, and so on and so forth. Very important. And I would like to, we'll be very happy if the FPOs, cooperative society, and agricultural startups and so on and so forth. We would like to get associated with you. Thank you very much. Because she is getting the value from that. कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि अगर हम सब लोग छोटे छोटे कदम भी अगर उठाएंगे तो परिवर्तन दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि एक ही बार में हम बहुत बड़ी छलांग लगा लें, शायद वो संभव नहीं होगा। लेकिन जो ये IFCA ने एक मुहिम चलाई है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर खान साहब आ गए हैं, मैं वैसे भी कहता हूँ कि भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमने अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय की है तो उसको रिवाइव भी हम ही करेंगे, और केवल एक ही चीज है वो रिवाइव करने की, सॉइल, सॉइल एंड सॉइल। हमने डिस्ट्रॉय क्या किया है? सॉइल, सॉइल एंड सॉइल। ऑर्गेनिक कार्बन कितना हो गया है? खेती हो रही है पूरे भारत में और ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 पे है, और हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, हम अच्छी वैरायटी के बीज डेवलप करने में लगे। कहने का तात्पर्य है कि आज किसान भी जागरूक है, वैज्ञानिक भी जागरूक है, नीति निर्धारक भी जागरूक है, और सबकी मिला के एक सोच है, और वो सोच ये है कि भारत अपने कृषि उत्पादों का निर्यात कैसे करे, भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बंद कैसे करे, भारत पल्सेस और लेंटिल्स का इंपोर्ट कम कैसे करे, सेम वे एनर्जी क्रॉप्स का। आज जब अल्कोहल बनने लगा है और 20% अगर हम मिलाते हैं तो किसान को कितना फायदा होगा उससे, और चीनी बनाने से गन्ना के किसान को फायदा नहीं होगा क्योंकि MSP के उस पर वो निर्भर होगा। और आप मान के चलिए वर्ल्ड का पैटर्न ऑफ शुगर कंजम्पशन इज गोइंग डाउन। तो कहने का तात्पर्य है कि ये विषय ऐसे हैं जिन पे गोष्ठी होती रहनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जब खान साहब बहुत मेहनत, इनका स्टाफ, ममता जी, सारे लोग करते हैं, और चूंकि मैं बहुत पास से जानता हूँ तो मैं यही कहूँगा
कि इनके प्रयासों के लिए आप सब इनके लिए ताली बजा के ज़्यादा किसान से ज़्यादा इस चीज को कोई नहीं समझता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि आप जो भी कदम बढ़ाएंगे किसान आपके साथ रहेगा और वो ही जो है देश का नाम आगे बढ़ाएगा कि भारत की हर चीज जिसमें आयुर्वेदा, अगर योगा विश्व ने जाना है, अदरवाइज योगा को विश्व में कौन जानता था। 5 साल में आप सोचिए कितने जॉब क्रिएट हुए योगा इंस्ट्रक्टर के, कितने प्रोफेसर्स की डिमांड है फ्रॉम दोज कंट्री, हमें ट्रेंड योगा एक्सपर्ट चाहिए। सेम वे जड़ी बूटियों के लिए हमें भारत से ये जड़ी बूटियाँ चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा, मैं आपका नाम नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, दीपक जी, हाँ, कि मैप मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट is a very big opportunity for the country. फ्रांस जितनी परफ्यूम बनाता है उसके रॉ मटेरियल कहाँ से जाते हैं, कभी आप सोचिए। फ्रांस जो है, और एक परफ्यूम की बॉटल $80 $100 से कम की नहीं होती है, 80 ml 60 ml, और उसके इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ से एसेंशियल ऑयल्स जाते हैं। आज समय ये है कि इफ दे कैन डू इट, मेरा यही हर युवा से यही होता है, इफ समवन एल्स कैन डू इट आई कैन डू इट बेटर, एंड व्हाई कांट वी डू इट बेटर। अगर वो कर सकते हैं तो हम उनसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। भारत में किसान बहुत मेहनत करता है, वहाँ पे उनको क्या मेहनत करनी होती भाई। विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन एंड हैंड ओवर टू ममता जी। जिन लोगों को मैं समय नहीं दे पाया बोलने के लिए, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो लोग अपने I'd like to invite Dr. Indri Khan to kindly give the closing remarks and close the vote. And we have long relationship. And thank you all the panelists. Closing session हमेशा कम लोग रह जाते हैं, हाल में एक मुश्किल का एक चैलेंज फेस करना रहता है। स्पेशली लंच के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं, और शाम की चाय इस बार तो लास्ट में कर दिया, नहीं तो बीच में होनी थी, तो उसके बाद और कम हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मॉर्निंग सेशन स्टार्टेड ऑफ वेल। फर्स्ट हाफ वाज डेडिकेटेड टू एक्सपोर्ट्स डिस्कशंस, एंड as in the morning we all called upon the country to double the efforts to double the exports, and at a time when the mood is very positive, there is a sense of buoyancy that India can do it, because it has shown last 2 years and gone very well. 17% growth in exports and 20% growth in exports, something unprecedented achieved. The second session was more of the focused on policies overall for transformation of agriculture, and especially how the ground stories, success models and ground stories that can be replicated, understood and replicated. So I am happy that important farmers leaders are here. Research and technology is always an important part of when we discuss agriculture. So I am happy that from ICR system, Dr. J.P. Mishra is here. NABARD has been our partner in most of the initiatives, and so again thanks that NABARD General Manager is here. And thank you Monisa, who was always part of it, and in fact Kochar Saab is also from ICR system, and two representatives from the industry, so thank you very much. So I think this completes the spectrum of technology and innovations, policies, delivery system is the industry, and the users are the farmers. So this dice completes the spectrum of agriculture. Though smaller in numbers and audience, but let me thank you all for your patience to be here since morning. And as Saxena Sahab has also asked all of us to continue to the next issue on the topic that we have discussed since morning. So whatever deliberations have come, I think agriculture today team will reach out to
those who have not been able to be part of this deliberation this morning, and those who have been part of it, all of us should contribute to bring out a very comprehensive document on this. A week later, we have a very important conference here today, that is India Animal Health Summit. A very power-packed conference I am looking forward to, similar which was held here kind of 2 months back, which was Bio-Asia. So first such conference in the history of animal health system at New Delhi, we have Animal Health Summit. So all of you are invited. I think there is some system of a lot of people will qualify for the complimentary registration, because to have the senior person part of it, generally we have a exempted list also, which starts from general manager and above, and HOD system and above, and something like that, long list. So thank you very much. Look forward to more. He has been really working hard and putting together this whole event. So let's have a round of applause for her. And we begin by presenting to Dr. M.J. Saxena, our very distinguished chair and moderator for this session. Thank you very much indeed, sir, for doing that wonderful job. We present to Dr. J.P. Mishra, ADG Policy ICAR. Thank you, sir. We present to Mr. Puneet Singh. To Dr. Ankita Pandey. Shri Yudhvir Singh ji. Mr. Kamal Singh Chauhan. Dr. Sunil Kochir. Professor M. Moni. Dr. Anup Kalra. And to Mr. R.V. Ramakrishnan. Ladies and gentlemen, once again thanking each one of you for your contribution and